Delhi. Last year it was organized at Kevadia, Gujarat, and this year in IMPHAL, Manipur, a state with a long sporting tradition and huge talent pool. This is indeed a moment of delight and immense pleasure for all of us to be part of this 2 days CHINTAN SHIVIR. Ladies and gentlemen, it is time to welcome our guests. Namaskar. Pum namakbu, noluk na kurumjari, that is in the Manipuri language. I humbly bow down to you in respect. A very warm good morning to the distinguished dignitaries gracing the dais of CHINTAN SHIVIR inaugural function. May I now request Shri Govindas Konthaujam, Honorable Minister, Youth Affairs and Sports, Manipur, to kindly felicitate the dignitaries with the presentation of traditional Manipuri handcrafted lengyan called Leirum. Leirum is a beautiful symbol of the love and unity between the hills and valley of Manipur, the jewel of India. The Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh Ji, to be presented with the traditional Manipuri Leirum Lengyan. Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur Ji. Honorable Governor of Punjab and Administrator of Union Territory of Chandigarh, Shri Banwari Lal Purohit Ji. The People's Chief Minister, Honorable Chief Minister Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh. Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Shri Nishit Pramanik Ji. Secretary, Sports Government of India, Shrimati Sujata Chaturvedi Ji. Secretary, Youth Affairs Government of India, Shrimati Meeta Rajiv Lochan Ji. Thank you so much, Honorable Minister, Youth Affairs and Sports, Manipur. The Chief Secretary, Government of Manipur, Dr. Rajesh Kumar, to be felicitated with the traditional Manipuri Lengyan. Ladies and gentlemen, welcome to Manipur, the sports powerhouse of India. It is the land of legendary Olympians, the cradle of polo. Manipur gave polo the king of games and the game of kings to the world. May I now request Honorable Chief Minister Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh Ji, to present a Manipuri painting to the Honorable Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting Minister, Shri Anurag Singh Thakur Ji. This is the globally acclaimed Ras Leela of Manipur, one of the classical dances of India. This painting will now be presented to the Honorable Chief Minister of Manipur, who will in turn hand it over to Shri Anurag Singh Thakur Ji. Honorable Governor of Punjab and Administrator of the Union Territory of Chandigarh, Shri Banwari Lal Purohit Ji, will be presented with Khamba and Thoibi, the legendary hero and heroine of Manipur, the folk hero and heroine of Manipur, a replica to be presented. Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Government of India, Shri Nishit Pramanik Ji, will be presented with a world-renowned spectacular drum dance of Manipur entitled Pung Cholom. Secretary, Sports Government of India, Shrimati Sujata Chaturvedi Ji, will be presented with the Meitei Piruk, a painting of the ladies of Manipur carrying piruk, that is
the traditional basket on their heads for a ceremonial function. The Honorable Chief Minister, presenting to the Secretary, Sports, Government of India. Secretary, Youth Affairs, Government of India, Shrimati Meeta Rajiv Lochanji, to be presented with a painting of Khamba and Thoibi, the legendary folk hero and heroine of Manipur. Thank you so much to the Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh Ji, for honoring our distinguished dignitaries gracing the dais. Thank you, sir. Now we would like to invite Srimati Sujata Chaturvedi, Secretary Sports, Government of India, for the welcome address. Namaskar, a very good morning. Honorable Chief Minister of Manipur, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, Honorable Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh, Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Honorable Ministers in charge of Sports and Youth Development of States, and my colleagues from the Youth Affairs and Sports domain, and the states and all the dignitaries present here. It is my great pleasure and privilege to welcome you all to the CHINTAN SHIVIR of the State Ministers of Youth Affairs and Sports. I thank you all for taking your time and effort to be present here to deliberate and formulate an action plan for the development of two key domains that hold great importance and potential to contribute to India's growth story: the development of youth and the nation's eminence in sports. While the nation aspires to be a global leader in various domains of excellence, with the eye on the larger picture, the approach towards succeeding in sports and youth engagement requires micro steps which we all are here to deliberate upon and take. The recent performance of Indian athletes on the international stage proves that it is time for us to excel and show that we can be world leaders in sport. It is the right time to focus on building a sporting culture starting from the lowest unit, which is what we tend to do on a day-to-day basis. Any country that is successful in sports, either a single sport or multiple sports, has ensured that the culture cascades down to the masses. By ensuring this, the countries have been able to increase the talent pool at the lowest levels of the pyramid, giving them a non-stop supply of potential athletes at each level of the sports development. My humble submission to all of us here is that we have to keep this goal in mind and be true to our creed and come good on our promise to help the people of this country to excel in whatever they wish, including in sports. By thanking you all here to have come all the way, I would like to also say that the two-day conference is packed with lots of interesting sessions, important ideas that we are sharing from the states. We have eminent speakers lined up, and I would also like to place on record my heartfelt thanks to the Honorable CM and all his people in Manipur, IMPHAL, who have been excellent hosts and who have made us stay very, very comfortable. I look forward to your participation in this wonderful gathering. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, I am extremely overwhelmed to inform this August gathering that Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, is going to address this gathering through the video address. It is a great honor for all of us. I request the technical team to kindly connect us to the video address of the Honorable Prime Minister. नमस्कार। कार्यक्रम में भाग ले रहे कैबिनेट में मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर, सभी राज्यों के यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि इस साल देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की ये कॉन्फ्रेंस, ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में
पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां के सगोल कांगजई, थांगता, यूबी लाकपी, मुकना और हियांग तानवा जैसे स्वदेशी खेल अपने आप में बहुत आकर्षक है। जैसे जब हम मणिपुर के ऊल लावबी को देखते हैं तो हमें उसमें कबड्डी की झलक दिखती है। यहां का हियांग तानबा केरला की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यानी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। मुझे उम्मीद है देश भर से आए स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मणिपुर से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और मुझे विश्वास है मणिपुर के लोगों का स्नेह, उनका आतिथ्य भाव आपके प्रवास को और आनंदमयी बना देगा। मैं चिंतन शिविर में भाग ले रहे सभी खेल मंत्रियों का, अन्य महानुभावों का स्वागत करता हूं, इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोई भी चिंतन शिविर चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन पर पूरा होता है। यानी फर्स्ट कम्स रिफ्लेक्शन, देन रियलाइजेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। इसलिए इस चिंतन शिविर में आपको भविष्य के लक्ष्यों पर विमर्श तो करना ही है, साथ ही पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करनी है। आप सभी को याद होगा इसके पहले जब हम 2022 में केवड़िया में मिले थे तब कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हमने भविष्य को ध्यान में रखकर रोड मैप बनाने और खेलों की बेहतरी के लिए इकोसिस्टम तैयार करने पर सहमति जताई थी। हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही थी। अब इम्फाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये समीक्षा पॉलिसी और प्रोग्राम्स के लेवल पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी होनी चाहिए और बीते एक वर्ष की खेल उपलब्धियों पर भी होनी चाहिए। साथियों, ये बात सही है कि पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में स्क्वॉश वर्ल्ड कप, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ऐसे आयोजनों में आपके मंत्रालय और आपके विभागों की तैयारियों की परीक्षा होनी है। ठीक है, खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को लेकर हमारे मंत्रालयों को भी अलग अप्रोच से काम करना होगा। जैसे फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में मैन टू मैन मार्किंग होती है, वैसे ही आप सभी को मैच टू मैच
मार्किंग करनी होगी। हर टूर्नामेंट के लिए अलग रणनीति बनानी होती है। आपको हर टूर्नामेंट के हिसाब से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स भी तय करने होंगे। साथियों, खेलों की एक विशेषता और होती है। अकेले कोई खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करके फिटनेस तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उसका लगातार खेलना भी जरूरी है। इसलिए स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है। इससे खिलाड़ियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खेल मंत्री के तौर पर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी खेल प्रतिभा की अनदेखी न हो। साथियों, अपने देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। खेलो इंडिया स्कीम ने जिला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बेहतर किया है, लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी महत्वपूर्ण है। एक विषय नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी है। इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। राज्यों में जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ और औपचारिकता ना बने, इसको हमने बहुत बारीकी से देखना चाहिए। जब चौतरफा इस तरह के प्रयास होंगे तभी भारत एक लीडिंग स्पोर्ट्स कंट्री के तौर पर स्थापित हो जाएगा। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर आज नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहा है वो भी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं आज पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है। इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने वाले समय में देश भर के युवाओं को नए अवसर देगी। खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। नॉर्थ ईस्ट के हर जिले से कम 2 खेलो इंडिया सेंटर और हर राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ये प्रयास खेल जगत में एक नए भारत की बुनियाद बनेंगे, देश को एक नई पहचान देंगे। आपको अपने अपने राज्यों में भी इस तरह के कार्यों को और गति देनी है। मुझे विश्वास है कि ये चिंतन शिविर इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। All of us are fortunate to have received the Honorable Prime Minister's address at the significant Chintan Shivir. We are deeply grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for the magnificent and encouraging address. May we now request Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Government of India, Shri Nishit
Pramanik ji to give the opening remarks. आज की इस चिंतन शिविर में उपस्थित मणिपुर के आदरणीय मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी, उपस्थित है पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर बनवारी लाल जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय एवं भारत सरकार की सूचना और संप्रसारण मंत्रालय की आदरणीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सुजाता जी, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मीता जी, डीजी साई संदीप प्रधान जी, डीजी NYKS नितेश मिश्रा जी, भारत की हर एक प्रदेश से आए हुए आदरणीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्य से आए हुए प्रतिनिधि और इस चिंतन शिविर में उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स को मैं मणिपुर की इस पावन धरती पर आप लोगों को अभिनंदन करता हूं। चिंतन शिविर के आज की पहले दिन की छत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो आज की ये चिंतन शिविर हो रहे हैं, ये एक, मैं कहूंगा कि इसके माध्यम से एक राज्य को दूसरे राज्य को जैसे सीखने मिलेंगे, वैसे ही एक राज्य को दूसरे राज्य से प्रेरणा भी मिलेंगे और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ एक साथ काम करके देश को और भी प्रगति के रास्ते में, उन्नति के रास्ते में, और मुझे लगता है कि और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये भावना, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये मार्गदर्शन से जो चिंतन शिविर हो रहे हैं, मैं कहूंगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आज इस मंच से आप लोगों से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि इस अवसर को, इस मंच को एक ज्ञान साझा करने वाले मंच के रूप में हम लोग उपयोग करें और देश की स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को और डेवलप करने के लिए और उसके साथ साथ हमारा देश की जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से हम लोग डेवलप करें और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच और कैसे हम लोग दिखा सके। इसलिए मैं ये आग्रह करूंगा कि हर एक राज्य अपना जो सर्वोत्तम जो प्रथा है उसका उल्लेख भी यहां पर करे और उसके साथ साथ खेल क्षेत्र में प्रगति करने के लिए किस विषय का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कुछ कुछ ऐसे सामान्य मुद्दा भी है जो यहां पर चर्चा के माध्यम से भी वो हम लोग उसका सुझाव निकाल सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को एक स्पोर्ट्स हब में रूपांतरित कर रहा है, हम लोग अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 देखें, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक हो
या फिर पैरालंपिक हो या फिर डेफ ओलंपिक हो, जिस तरह से भारतीय एथलीट ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया और उसके साथ साथ जिस तरह से मेडल भी जीतने का काम किया, मुझे यह लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सुदूर प्रसारी जो भावना है, उनका जो विजन है, उससे ही संभव हो पा रही है। हम लोगों ने देखा कि जब कोई भी एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जाते हैं तो जाने से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री सीधा उन लोगों के साथ बात भी करते हैं और उसके साथ साथ जब मेडल जीतकर देश वापस आते हैं तो उन लोगों को संवर्धित भी करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के समय में किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में सभी गांव-गांव तक जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने चीयर फॉर इंडिया की नारा भी लगाया और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी उसको और प्रचार प्रसार किया और खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए भी गया। तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉजिटिव अप्रोच से ही देश का जो खेल की जो माहौल वो और अच्छा बन सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका प्रयास, इसमें बहुत सारा राज्य की जो प्रयास है उसको भी प्रशंसा करना पड़ेगा। कई राज्यों में ऑलरेडी जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो बिल्डअप हो चुका है, चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा हो। उड़ीसा में भी बढ़ चढ़ कर खेलों के प्रति बहुत ही कार्य हो रहा है। बहुत सारा स्टेट्स है, सबका नाम मैं यहां पर नहीं ले सकता हूं, लेकिन उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारा स्टेट्स ऐसा भी है जो विपरीत परिस्थितियों से उठकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब कम समय में डेवलप किया। माननीय खेल मंत्री जी भी इसका जिक्र हमेशा करते रहते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था और वहां का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम समय में जिस तरह से डेवलप हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे ही एक राज्यों को दूसरे राज्य की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो जैसे लेना चाहिए, उसके साथ साथ क्या क्या चुनौती आता है और उसके सुझाव क्या है, ये भी मुझे लगता है एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। और उसके लिए ये सबसे बड़ा अवसर है और ये सबसे बड़ा मंच हो सकता है। माननीय खेल मंत्री जी खुद एक खिलाड़ी है और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और सद्भावना भी है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है, जो टारगेट है कि किस तरह से हमारे देश विश्व में खेल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो जगह है वो बनाए, इसके लिए माननीय खेल मंत्री जी निरंतर प्रयास कर रही है। और मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जिक्र किया है कि खेलो इंडिया स्कीम्स के माध्यम से या फिर जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये सभी स्कीम उनका मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है और उनका मार्गदर्शन से ही हर साल जो है भारत की प्रांतीय क्षेत्र से खिलाड़ियों का चुनने का काम और प्रतिभाधर खिलाड़ियों को पोडियम तक पहुंचाने का काम उनकी इस मार्गदर्शन के माध्यम से ही संभव हो रहा है। देश भर में हर साल हजारों खिलाड़ियों को हर एक क्षेत्रों से चुना जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। और खेलो इंडिया
जो सेंटर्स है उसके माध्यम से भी बहुत सारा खिलाड़ियों को एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिलते हैं और उनको अपना मैदान अर्थात कोई भी खिलाड़ी जहां से जिस मैदान से अपना पहली परफॉर्मेंस शुरू करते हैं वहां से लेकर पोडियम तक पहुंचाने वाला स्कीम्स जो है वो भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाते हैं। 1000 से भी खिलाड़ियों को खेलो इंडिया स्कीम्स के माध्यम से हम लोग जैसे उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं वैसे ही किट भी देते हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के साथ साथ आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस भी हम लोग देते हैं। और इसमें से कई प्रतिभाधर खिलाड़ी जो है उनको विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से आगे ले जाते हैं और जो देश की एलिट एथलीट है उनके उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए और उसके साथ साथ उनका आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस के लिए भी टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसा स्कीम्स का प्रावधान है। भारत की शिक्षा व्यवस्था का जो नई शिक्षा नीति हो रही है, आप लोगों को पता है कि उसका माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है खेल को प्रायोरिटी में रखते हुए किस तरह से खेल क्षेत्र में और विकास हो इसका प्रावधान भी किए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देश भर की हर एक राज्य से आए हुए प्रतिनिधियों और आदरणीय मंत्रीगण को कि आप लोगों का क्या सुझाव है, वो सुझाव भी भारत को एक स्पोर्टिंग हब बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए जैसे बहुत ही जरूरी है आपके सुझाव, वैसे ही आपके प्रयास भी, सब लोगों का प्रयास ही भारत को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में आगे ले जा सकते हैं। और आज इस चिंतन शिविर के प्रारंभ में मैं ये कहूंगा कि सभी लोगों का यहां पर विस्तारित चर्चा और मंथन के माध्यम से ही आज का चिंतन शिविर के द्वारा बहुत सारा सुझाव भी सामने आएगा, मैं ये आशा करता हूं। और ये सभी सुझाव देश की खेल क्षेत्र की जो मार्ग है इसको प्रशस्त करने के लिए आगे जाकर बहुत ही कार्यकारी होगा, ये मैं आशा रखता हूं। इसी शब्द के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी प्रदेशों से आए हुए सभी आदरणीय मंत्रीगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इतना भव्य रूप से इस कार्यक्रम को और यहां पर स्वागत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस राज्य की खेल मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। We are immensely grateful to the Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Government of India, for the valuable address. Thank you so much, sir. Manipur has won the Most Improved Small State for the third consecutive time after surpassing other northeastern states with its commendable performance in 8 out of 12 categories under the exceptional leadership of Shri Nongthombam Biren Singh, Honorable Chief Minister, Manipur, as revealed by a study of India Today. May we now take the proud privilege of requesting the People's Chief Minister, the heartbeat of the state of Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh Ji, Honorable Chief Minister, Manipur, to address the gathering. May I request the esteemed gathering to give a big round of applause. सबको नमस्कार and welcome you all here, the soil of India, Manipur. आज का चिंतन शिविर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो जैसे मणिपुर जैसे स्मॉल स्टेट में बैठने का
मौका दिया है इसके लिए हम पहले I would like to appreciate the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the Honorable Minister Youth Affairs and Sports Shri Anurag ji. दाइज में जो श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, श्री बनवारीलाल पुरोहित जी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, श्री नीतीश प्रामाणिक जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, श्री के गोविंदास Honorable Minister, Youth Affairs and Sports, Government of Manipur, Honorable Ministers and Chairmen of other state and union territories of Youth Affairs and Sports, Srimati Sujata and Anita, Secretary, Government of India, Dr. Rajesh Kumar, Chief Secretary, Manipur, other officials of Government of India and from other state, senior officials from various states in the union territories, distinguished guests and invitees, friends from media, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. At the outset, I extend my very warm welcome to all the participants of the National Conference of Ministers of Youth Affairs and Sports of State in the Union Territories, CHINTAN SHIVIR. It is indeed an honor for the state of Manipur to host such an event. I also believe that holding such a conference in IMPHAL also recognizes and highlights the significant contribution made by our Manipuri sportspersons and youth towards nation buildings. Honorable Prime Minister Modi ji also just recently recognized our ancient indigenous games like polo, sagol kangzai, hiang tanaba, yobilakpi, and many things. Manipur has a proud and a vibrant sporting history and culture. Manipur takes pride as a powerhouse of sports in India, calculating the per capita. Despite a small population, sportspersons from Manipur have brought laurels to India in various disciplines of sports and produced numerous medalists, including 19 Olympians. Sportspersons from Manipur have won 21 Arjuna Awards, 3 Rajiv Gandhi Khel Ratna Awards, 1 Dronacharya Awards, and 1 Dhyan Chand Awards, 6 Padma Shri Awards, 1 Padma Bhushan, and 1 Padma Vishubhan. Northeast is not only blessed with rich natural resource, but has a young and a dynamic population. It connects India to one of the most economically dynamic and politically significant geographies of the world. Our region has the potential to be the growth engine for the country in the 21st century. To translate this into reality, the youth of 2023 need to collectively form a vision and lead a cohesive, coordinated response towards India at 2047. Towards this objective, I am confident that the deliberation in these 2 days of the National Conference will have set a framework for state governments and the stakeholders towards charting a trajectory for the country towards growth and the development of youth and the sports. Under the guidance of and the leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, sports infrastructure in the country continued to be strengthened under the pioneering initiative like Khelo India. Governments continues to create the ideal environment of sports to thrive in India.
As we mark 5 years of Khelo India, the scheme has proved to be a catalyst in turning India into a sporting nation, giving a platform to grassroots athletes and building sports infrastructure across the country. For Manipur also, I am glad that the Ministry of Youth Affairs and the Sports Government of India approved the opening of 32 Khelo India centers across 16 districts of the state. Khelo India State Centers of Excellence in 3 sports disciplines of archery, hockey, and weightlifting will also start very soon. Completion of National Sports University, which just Honorable Prime Minister mentioned, the only sports university of this vast nation was given to Manipur, and now the construction of the building is going on. The university will play an important role in shaping the future of sports in India. I am hopeful that the university will look at the sports as a science and promote knowledge of human speed, strength, power, endurance, and flexibility to excel in sports. In Manipur, my government is extending every possible support to promote sports culture and sports persons in the state. As an initiative to encourage the commemorate the sports persons of Manipur, the state government dedicated a Manipur Olympian Park to our sports persons, sportsmen and women. We also signed an MOU with Samsung for the installation of Digital Experience Center at the Olympian Park and the Kumalampak Sports Complex. This will help enhance performance of sports people in the state. Upgradation of Kumalampak Sports Complex through PPP model and the external aided project are also underway. Integration of sports science, use of artificial intelligence and video analysis in the training of young budding intellects in collaboration with private partners will help in developing sports in the state. The state government launched Chief Minister's Akhanaba Sanaroi Singhi Tangbang, special help to the sports persons to promote and encourage the sports person of the state. At a grassroots level, the government is providing financial assistance to more than 250 local clubs. Developments of local village-level playgrounds will help develop sports at a grassroots. To preserve and promote the indigenous games and the sports, Chief Minister's indigenous martial art, that, as the Honorable Prime Minister just mentioned, Thangta and the Saibi meet, Chief Minister's Sagol Kangse Championship were also started. Over the years, players from Manipur have contributed significantly to football in India. Manipur recently hosted the Tri-Nation International Football Tournament. Manipur also had the privilege to host the Durand Cup last year. The government of Manipur also recently signed an MOU with the All India Football Federation for establishing a Manipur State Football Academy. You will be happy to know that at the Indian State League football tournament, in the various teams, there are around 45 international players from Manipur in the level. 45. And in the women's category, under 17, the Indian teams were taking, from Manipur. There are 7 women from Manipur in the team. To harness the dynamism and creativity of our youths, scheme like Manipur Startup, Manipur Credit Guarantee Schemes and the Startup, venture fund have been taken up to promote entrepreneurship and create employment opportunities. Before I conclude, I once again welcome all the participants of the conference to Manipur. You all know, after the Honorable Prime Minister became Prime Minister of India since 2014, the drastic change in the entire Northeast has taken place.
Manipur, once known as the troubled state, and even after the 5 p.m., the shops, houses, everything were closed. Now you can see till the midnight, everywhere and every place will be opened and they're enjoying their life. And you know that recently we also host the Miss Femina India for the first time in the entire Northeast. And I am confident that under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our country will harness our vast sporting talent effectively, and very soon India will emerge as a great sporting nation. Here I want to add a little suggestion to all of you. When the discussions comes, you can interact between yourselves. India can't qualify the World Cup in football also. And that is the reason why we have decided to open one Manipur Football State Academy, along with the associated with the Argentina Football Association. We have already contacted, and if the sports ministry gives some more support, definitely India can join in the World Cup in the next 10 to 15 years. It is my confidence, I believe, what I believe. I am certain that the deliberation during the 2 days will help understand our sports sector better and have set policies and a scientific program for India's emergence as a sports powerhouse in every discipline in the world, and not just only cricket. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Now we would like to invite Shri Banwari Lal Purohit ji, Honorable Governor of Punjab and Administrator of Union Territory of Chandigarh, to address this August gathering. मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे केंद्रीय स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र के श्री निशिक प्रमाणिक जी, और यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, और श्रीमती मीना राजीव लोचन जी, यूथ अफेयर्स की सेक्रेटरी, उपस्थित सभी गणमान्य विभिन्न राज्यों से आए हुए माननीय मंत्रीगण, सभी प्रमुख अधिकारीगण, डेलीगेट्स, निमंत्रित सज्जनों और देवियों, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने बहुत जिम्मेदारी ली है। इतनी बड़ी एक महत्वपूर्ण चिंतन शिविर को राज्य में बहुत ही यशस्वी करने की जिम्मेदारी आपने ली है, और ये बहुत रूप से यशस्वी होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे राष्ट्र में इसका मैसेज जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, इनके बारे में क्या कहूं, ये हमारे पड़ोसी हैं। मैं पंजाब से हूं, ये हिमाचल से हैं, और इनका जो मैं एक्टिविटीज देखता हूं तो ये निश्चय ही है कि इन्होंने मुझे तो घायल कर दिया एक तरह से। ट्रमेंडस एक्टिविटीज, ट्रमेंडस डायनामिक पर्सनैलिटी, इस एज में, यंग एज में जिस तरह से ये कार्यशैली और मैच्योरिटी के साथ में काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। एज ए सीनियर I have every right to tell you, don't take it as a flattery. What is the truth, I am telling you. मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी का
मार्गदर्शन के बाद में हमें एक दिशा तो मिल गई है, और दिशा मिलके ये चिंतन शिविर में जो भी लोग हैं, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण आज महकमा है। देश का ज्वलंत यदि प्रश्न है, ज्वलंत समस्या है, तो ये यूथ से लेके है, और स्पोर्ट्स एक रेमेडी है समस्या को दूर करने के लिए। देश की परिस्थिति पर जब चर्चा करेंगे, हम सबके बराबर हमको नहीं कर सकते। आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 140 करोड़। कंपैरिजन में यदि देखो एरिया, यदि हमारे पास जितनी जमीन उपलब्ध है वो है पूरे पृथ्वी पर जितनी जमीन है उसका 2.4% है, और जनसंख्या करीब करीब 16.5%। अमेरिका हमारे से 1/4 जनसंख्या है, 4 टाइम्स हमारे से एरिया है अमेरिका। तो हमारे यहां उस तरह से यूथ की संख्या ज्यादा है। 15 से 32 साल की एज का हमारे पास में 37 करोड़ युवक हैं। ये हमारे सामने है। ये पूरे चिंतन शिविर में उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनका भविष्य कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे सामने आज है। देश के अंदर 1100 यूनिवर्सिटीज हैं, 55,000 करीब करीब कॉलेजेस हैं। युवक आगे निकल रहा है, पढ़कर आगे बढ़ रहा है, शिक्षा ज्यादा हो रही है, शिक्षा भी बढ़ रही है, साक्षरता काफी बड़ी। हमारे को याद है देश स्वतंत्र हुआ था, हम कहते थे कि शिक्षा खाली 34-35% है, उसमें काफी प्रगति हुई। अभी करीब करीब हम 90% के पास में पहुंचे हैं, 10% रहे हैं। परंतु ये शिक्षा युवक है, प्रैक्टिकल यदि हम देखें, उसका एक सपना अलग है, छोटा मोटा काम करने के मूड में नहीं है। 15-20 हजार 10,000 की नौकरी और मेहनत करके कपड़े काले करे, हाथ काले करे, ये उसकी तमन्ना नहीं है, ये एक कमजोरी है। उसका भी सपना है, वो भी देखता है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े सेक्रेटरीज को, वो भी देखता है मेरा भी शहर में एक शानदार, बहुत शानदार 3-4 रूम्स का फ्लैट हो, मेरे पास भी एक शानदार गाड़ी हो, और क्लब के अंदर गोल्डन कार्ड हो। यह सपना युवक देखता है, इसको तोड़ना है। जॉब्स हमारे पास लिमिटेड है, सर्विस लिमिटेड है, सॉरी, सर्विस हमारे पास लिमिटेड है, पर जॉब्स की कमी नहीं है। करना चाहे जॉब्स बहुत है, उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना है। एंटरप्रेन्योर्स, ये मेन चीज हमारा है। यूथ अफेयर्स को यदि आगे लाना है तो एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करिए। स्वयं रोजगार उपलब्धि, उसके लिए तैयार करिए। देखो सक्सेसफुल जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हुए हैं, कोई माँ के गर्भ से तो पैदा होते ही तो एकदम से नहीं हो गए। हमने देखा है छोटे छोटे, एक नहीं तो 50 उदाहरण मैं दूं, जो कि एक छोटे से कढ़ाई से चालू हुए। हल्दीराम क्या है, मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व्ड हल्दीराम फ्रॉम माय चाइल्डहुड। हल्दीराम कलकत्ते में भुजिया बनाते थे, हैं, और मैं इसलिए जानता हूं कि नागपुर से वो तेल खरीदते थे भुजिया बनाने के लिए, बाद में बढ़ते गया, वैगन खरीदने लग गए, और आज हल्दीराम अमेरिका के कौन से भी टाउन में चले जाओ, हल्दीराम की मिलेगा। सबसे वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स हल्दीराम है। ऐसे कई उदाहरण हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स को आकर्षित कैसे किया जाए, इस पर गंभीरता से आप विचार करिए कि वो अपने काले कपड़े भी हो जाए, परवाह नहीं करे, हाथ काले हो, मेहनत करे, आगे बढ़े, उसकी तरफ मोटिवेट
युवक को करना हमारी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी के साथ इस पर चर्चा करिए। बैंकों का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। बैंक शुड बी लिबरल, पॉलिसी बनी है, पर ग्रास रूट पर मेरा अनुभव है कि हम तो कहते हैं पॉलिसी बन गई, केंद्र से आपने बना दी पॉलिसी, और पॉलिसी पहुंचती है बैंकों के पास, पर बैंक आज भी कंजर्वेटिव अप्रोच लेके हैं। जरा सा थोड़ा देखिए तो 10-10, 20-20 हजार करोड़ के यूनिट हैं, वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उनके रुपए डूब जाते हैं, हैवी लॉस होते हैं, बैंक फिर भी चल रहे हैं, फिर भी बैंक प्रॉफिट में है। क्या हमारे एक छोटा एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है? थोड़ा कहीं डूब गया थोड़ा बहुत पैसा तो रिस्क लेना चाहिए बैंकों को। आप मोटिवेट करिए, उनको कंपल्सर करिए, थोड़ा लिबरल, यदि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ाना है, लिबरल लोन सिस्टम करना पड़ेगा, इंसेंटिव देनी पड़ेगी, बिना इंटरेस्ट फॉर 10 years, 5 years, विदाउट इंटरेस्ट, ओके गो अहेड। क्या फर्क पड़ता है? 3%, 4% इंटरेस्ट लेके डिपॉजिट कितना होता है? 6-7% मिलता है बैंकों को। अमेरिका में 3-4% फॉरेन पैसा बहुत लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलता है। इस पर आप गंभीरता से ध्यान करें और इसको आप मॉनिटर करें। दूसरा, ये यूथ अफेयर्स का, स्पोर्ट्स कम महत्वपूर्ण नहीं है, और मैं सबसे ज्यादा वरीड हूं। मैं पंजाब में हूं, पंजाब के मेरे 6 जिले बॉर्डर से लगे हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर से, और मैं आपको कहने में मैं हिचकिचाता नहीं, 6 जिले पे बॉर्डर पे मैं कम से कम भी 5 बार गया हूं 1 साल के अंदर। 5 बार मैंने स्टडी किया है पूरा पंजाब, रातों रहा हूं, सरपंचों से बात किया हूं, वहां के लोगों से बात किया हूं, पूरा स्टडी किया हूं मैंने वहां का। और सिस्टम है पंजाब, ये पाकिस्तान डायरेक्ट हमारे से युद्ध कर नहीं सकता, परंतु दुश्मनी हमारे से निकालना है उसको। और सीधा सीधा उनकी स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की कि हमारे यहां ड्रग्स खूब भेजना है, स्मगलिंग करके ड्रग्स भेजना है, स्मगलिंग करना है। जो पैसा है, इतना जबरदस्त पैसा है, उसका टेररिज्म में हमारे यहाँ लगाना, ये लड़ाई परोक्ष रूप से हमारे यहाँ वार एक तरह से छेड़ा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, उसको रोकना है, हमारे यूथ को प्रभावित करना है। पंजाब में मैं काफी घूमता हूं, हरियाणा की भी मुझे रिपोर्ट है पूरी। परिस्थिति यह है, प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल आके बोलने लग गए हैं कि मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि मेरे युवक है वो ड्रग्स लेने लगे। पेरेंट्स आके बोलने लग गए कि आदत पड़ रही है हमारे छोटे छोटे 12-12, 15-15 साल के बच्चों को ड्रग्स की चोरी करने लग गए हैं अपने घर में। तो उनको यदि प्रवर्तित करना है तो सीधा स्पोर्ट्स, आपका स्पोर्ट्स को अट्रैक्ट करिए, स्पोर्ट्स के माध्यम से युवा को अट्रैक्ट होना चाहिए। अभी एक नोबल हमने एक्सपेरिमेंट किया है रिसेंटली पंजाब के अंदर में, चंडीगढ़ में किया है हमने। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन से हमने मिलकर, एनजीओ से मिलकर हमने गली क्रिकेट, 10 दिन तक कंटिन्यू गलियों में पूरे युवा जो हैं स्लम्स में, इधर से उधर से सारे युवाओं को वो गली क्रिकेट करके हमने 8-10 हजार युवकों को एट ए टाइम, हर गली में क्रिकेट टीम चल रही है, हर गली में धूम चल रही है, क्रिकेट खेला है लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट दिया, और ये उनको भी मालूम, पेरेंट्स ने आके कहा, मुझसे भी बातचीत किया कि साहब ये तो बहुत शानदार काम होगा, इसमें हमारे बच्चे को ध्यान यदि पलटना है ड्रग्स से तो ये स्पोर्ट्स को इसको करिए। तो मासेज सारे लोग किस तरह से स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए देने का, और केंद्रीय मंत्री यहाँ है, सेक्रेटरी भी यहाँ है, सभी दोनों विभाग के लिबरल रहिए, मंत्री दीजिए। और आपकी गैर हाजिरी में मैंने एक बात कही है, बैंकों को जरा कान मरोड़िए, बैंक जो है अभी भी लिबरल नहीं है, बहुत कंजर्वेटिव चल रहे हैं, तो बैंकों को एंटरप्रेन्योरशिप आगे बहुत बढ़ाना है, इस पर आप गंभीरता से विचार करो। और मैं कह रहा हूँ, यू आर द पॉलिसी मेकर्स, ये कोई मामूली चिंतन शिविर नहीं है,
चिंतन शिविर कोई XYZ का नहीं है, पूरे स्टेट के मंत्री, पूरे स्टेट के सेक्रेटरी, केंद्र के सेक्रेटरी, केंद्र के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सारे यहाँ पर मौजूद है ना। निर्णय हो और निर्णय लेके ऐसा पेपर तैयार करो है, पूरे देश में क्रांति आ जाए, और आएगी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आई हैव फुल फेथ इन एवरीथिंग कि आप करोगे। और मंथन होता है ना, सागर मंथन, अमृत बांटो, वैसा ही विचार करके एक ऐसा पेपर तैयार हो, एवर लास्टिंग पेपर यहाँ से निकले चिंतन शिविर के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के आदेशों से, प्रधानमंत्री जी, और इस तरह का हो, प्रधानमंत्री जी कंपेल हो जाए हैं, आपकी पीठ थपथपाए, शाबाश, आप लोगों ने ये चिंतन शिविर का पूरा पूरा उपयोग किया है और सही माने में अच्छा काम किया है। मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा प्रेमल व्यवहार आपका रहा, जब से मैं आया हूँ कल से, शानदार प्रेमल स्वागत, अभिभूत होकर मैं जाऊंगा यहाँ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी शुभकामनाएं। Thank you, sir. Now I would request Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakurji, for the keynote address. Honorable Chief Minister Manipur, respected Shri Biren Singh Ji, Honorable Governor of Punjab and Union Territory of Chandigarh, Shri Banwari Lal Purohit Ji, Minister of State for Home Affairs, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Nisit Pramanik Ji, our host for this event, Honorable Minister of Sports, Manipur, Shri Govindas Ji, Secretary Sports, Secretary Youth Affairs, all the Honorable Ministers who have come all the way from their respective states for this Chintan Shiva, respected senior officials. Let me first thank and welcome all the ministers who have come from various parts of the country to attend this Chintan Shiva. A warm welcome to you all. Let me also thank the Honorable Chief Minister of Manipur for making the beautiful arrangements and making our stay more comfortable here. Thank you very much, sir. So this is the third time we are hosting the Chintan Shiva, or sports ministers of all the states in the country. And good to see that Honorable Governor has taken out his precious time to be here. When I spoke to him over the phone, he was concerned and he was very keen also to give his valuable suggestions. What steps could be taken as far as the youth of this country, whether it is in the field of sports or otherwise, and he has expressed his views what we all can do to address the challenge of drug abuse in the country, because youth is the largest stakeholder and they have to play a very, very important role in the nation building process. And I totally agree with him that more and more such programs could be done at the grassroots level by various states and the stakeholders for their active participation. Sir, I have fond memories of the last conference that was arranged in Kevadia, Ektanagar last year in the month of June. As we all know, sports is a state subject and states has to play a very, very important role in the promotion of the sports. But the central government and states have to come together for the promotion of sports and have an open discussion for the advancement of sports and our athletes. And when Prime Minister talks about the cooperative federalism, I think this is the example of that. We will also see the participations and the presentations from the various stakeholders
we'd like to see the respective models of your states, what you're doing in the field of sports and youth affairs, your policies, strategies, which can be shared and replicated in other states. It is of the utmost significance that this CHINTAN SHIVIR has been organized in this beautiful state of Manipur, where we're also coming up with the first national sports university. And I'm grateful to the Honorable Prime Minister who has sanctioned this university for the state of Manipur. The work is in progress. Approximately 900 crore rupees will be spent to create this beautiful university in this part of the country. If you see, the Prime Minister has set the tone of the conference. His address was short but precise but to the point. And I'm sure that we're going to get a lot of suggestions from your side, from reflection to realization to implementation to action, what Prime Minister has spoken. But first I'd like to talk about the state of Manipur. Honorable Governor has talked about the 1.4 billion population. What is the population of Manipur? 36 lakhs. And look at the contribution in the field of sports. If you look at per capita contribution, they are far ahead than much bigger and the large states. So they might be doing something better, whether it is the society, government, or the overall environment for the sports. We have also looked at the traditional sports. Thang Ta is one of the sports being played in this part of the region. Now in our Khelo India scheme, Khelo India events, we have adopted schemes, games like Thang Ta, Clarepattu, Gatka, Yogasana and Gatka. Now these are the traditional games which have been given space in the Khelo India program. We must push these at the international level also. Because if you look at various examples of mixed martial arts to wushu, judo, karate, taekwondo, these are played in the East and the mixed martial arts in the West world. So we need to promote and push our indigenous games at the national and at the international level also, where the federations and the state governments have to play a very important role. Recently, Manipur martial arts guru K. Santathoiba Sharma got prestigious award of Padma Shri for his decades-long effort. So, even they are getting recognition at the national level. Not only this, Prime Minister touched upon the game of polo, which is said to have its roots in Sagol Kangzai, which is the traditional sports of Manipur. And if you look at the logo here, it is the polo logo which we have picked. It is not an Olympic sport, but being the conference is being held in the state of Manipur, so we try to reflect that here as well. मणिपुर में कितने खिलाड़ियों ने अच्छा किया होगा? मीराबाई चानू ओलंपिक से 6 महीने पहले इंजर्ड हो गई. भारत सरकार ने वीज़ा भी लगवाया, 24 घंटे के अंदर एथलीट कोच सबके साथ अमेरिका भेजा, पूरा ट्रेनिंग का खर्चा टॉप्स में से उठाया और ओलंपिक में जाकर अगर भारत को पहला मेडल किसी ने जिताया तो मणिपुर और भारत की बेटी मीराबाई चानू ने दिलाया. और ये वही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके फिर रिपीट हुआ, पहला गोल्ड मेडल फिर मीराबाई चानू ने ही दिलाया, तो मणिपुर की बेटी. और यही नहीं, एमसी मैरी कॉम आज तक के सबसे ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे जो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीतने वाले, वो किसी और ने नहीं, एमसी मैरी कॉम ने जिताने का काम किया, यहीं किया. लेकिन यहीं पर नहीं रुकते. कुंजराना देवी की मैं बात करूं तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स हमारे एशियन गेम्स में 1990 और 1994 में वेट लिफ्टिंग में जीता है. तो मणिपुर की ही डेंको सिंह ने
बॉक्सिंग में सरिता देवी ने बॉक्सिंग में, कल्पना देवी, सुशीला देवी ने जूडो में, तो वहीं पर बैम्बम देवी ने और बाला देवी ने फुटबॉल में, बम्बाल्या देवी ने आर्चरी में। ऐसे बहुत सारे आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे जो केवल और केवल इसी राज्य से यहाँ की बेटियों ने, यहाँ के एथलीट्स ने करने का काम किया है। और ये कोई एक दो खेलों में नहीं, अनेक खेलों में ये शानदार प्रयास और ये अचीवमेंट्स मणिपुर की हैं। मणिपुर से आगे बढ़कर अगर मैं देश की बात करूं तो उड़ीसा ने शानदार आयोजन हॉकी वर्ल्ड कप का किया, चेस ओलंपियाड का शानदार आयोजन तमिलनाडु ने किया, बहुत सारे अन्य राज्यों ने जैसे इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के लिए मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड कप का आयोजन बहुत शानदार तरीके से किया। एक के बाद दूसरा राज्य बहुत शानदार आयोजन कर रहा है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया का आयोजन अभूतपूर्व था, हरियाणा ने किया, बहुत शानदार था, और अब उत्तर प्रदेश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन खुशी की बात सबसे बड़ी यह है कि जब हरियाणा में हुआ तब 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया। मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, 21 बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। सो इफ यू लुक एट द गर्ल्स अचीवमेंट, आई थिंक दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। एक समय था मोदी जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना पड़ता था, आज खेलों में बेटियां ही आगे बढ़ चढ़कर आ रही। खेलों के क्षेत्र में जहां एक और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, खेलो इंडिया स्कीम 3200 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान के लिए अगले 5 साल के लिए मंजूर किया है। जहां एक और हमारा बजट 964 करोड़ रुपए का 2014 में था, वो इस साल बढ़ाकर 3397 करोड़ रुपया कर दिया है। बहुत सारे खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर हम देश भर में बना रहे हैं, लगभग 3000 करोड़ रुपया इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन मेरा एक अनुरोध आप सबसे रहेगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी आपके राज्यों में 5-5 साल से पेंडिंग है। कोई 4 करोड़ रुपए का, कोई 5 करोड़ रुपए का, कोई 7 करोड़ रुपए का बनना, उसमें भी 5-5 साल लग रहे हैं। हमें इसमें सुधार लाना है, इसको समय पर पूरा करना है। टॉप जैसी योजनाएं, बाकी सबकी जानकारी आपको है, भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। खेलो इंडिया सेंटर्स हमने कहा था हम 1000 खोलेंगे, और पिछली बार हम जहां केवल 450 पे खड़े थे, आज मैं कह सकता हूं हमने 950 खेलो इंडिया सेंटर्स मंजूर कर दिए हैं, और 15 अगस्त से पहले 1000 सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। इसमें खोलने के लिए भी 5 लाख रुपया दिया जाता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है, और 5 लाख रुपया कोच के लिए दिया जाता है ताकि उसको सेंटर को रन करना पड़े। एक सुझाव पिछली बार आया था, क्या राज्य भी अपने ब्लॉक लेवल पर, ये जिला स्तर पे हमने खोले हैं, राज्य भी अगर अपने ब्लॉक स्तर पर कोचेस की नियुक्ति करे अलग अलग गेम्स के लिए, तो हमारा ब्लॉक स्तर पर भी खेलों को बढ़ावा मिल सकता है। अगर यहां पर एक कोच को लगभग 40 से 45 हजार रुपया महीना मिल रहा है, आप 25,000 रुपया महीना ब्लॉक पर दे सकते हो, 3 लाख रुपया केवल खर्चा आएगा। और 3 लाख रुपया अगर आप एक कोच पर खर्च करते हो, 100 रखते हो, तो आपका कितना खर्चा आता है? 3 करोड़ रुपया। कौन सा ऐसा राज्य जो 3 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकता और 100 कोचेस नहीं रख सकता है? और अगर 5 लाख रुपया उनको ब्लॉक लेवल पर अपना कोई कबड्डी का मैट या बाकी सुविधाएं देने के लिए, किसी गेम के लिए देना है, तो कोई भी आप दे सकते हैं। अगर मैं 100 वैसे गिनूं तो वो भी 5 करोड़ रुपया बनता है। मात्र 18 करोड़ रुपए में आपके 100 सेंटर चलने शुरू हो जाएंगे। लो कॉस्ट बट मोर इफेक्टिव। फिर हमने कहा था कि हम क्या, हर राज्य अपनी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स चुन सकता है कि हम इस स्पोर्ट को यहां पर ज्यादा बल देंगे, बाकियों को तो देंगे, लेकिन मेडल जीतने का हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उस पर आप सबने क्या क्या किया, अगर उसकी जानकारी यहां पर मिलेगी तो हमें उसका लाभ हो पाएगा। फिर पिछली बार ये कहा था कि टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे उपयोग कर सकें। मैं जब खेल मंत्री बना तो हमने अपने डिपार्टमेंट में शुरुआत की कि किसी भी खिलाड़ी को किसी फेडरेशन के पास या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ना आना पड़े। आपको अपनी पेंशन के लिए, अपनी स्कॉलरशिप के लिए, अपने किसी अवार्ड के लिए, रिवॉर्ड के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन करना पड़े।
हमने वो पोर्टल बनाकर दे दिया। अब किसी खिलाड़ी को हमारे पास नहीं आना पड़ता है, उसको केवल अपने फोन से या कंप्यूटर से एप्लीकेशन दायर करनी है और उसके खाते में हम डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देते हैं। ये ईज ऑफ लिविंग हमने करने का काम किया है और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। फास्टर डिस्पोजल हुआ है एप्लीकेशंस का, कम इंटरफेरेंस हुई है स्टेक होल्डर्स की, फेडरेशंस की, एसोसिएशंस की, डिपार्टमेंट की, और प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हुई है और डुप्लिसिटी को हमने अवॉइड करने का काम किया है। इसी तरह से ही हमने राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 का दम का आयोजन किया। महिलाओं के लिए 10 गेम्स देश भर में करने का किया। खो खो, स्विमिंग, एथलेटिक्स, वुशु, कबड्डी, ऐसी अन्य गेमें, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सब का आयोजन किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 15,000 से ज्यादा महिलाओं ने 50 शहरों में इसमें भाग लिया है। एक अलग तरीका था महिलाओं की भागीदारी करने का, खेलों को बढ़ावा देने का। इसी तरह से हमने खेलो इंडिया लीग्स वुमेन्स के लिए अलग अलग सिटीज में शुरू की है। पिछले 18 महीनों में अलग अलग डिसिप्लिन में इसको शुरू किया गया। हॉकी, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, खो खो, जूडो और वुशु, इसमें बहुत शानदार हमें इसका समर्थन मिला है, बहुत बढ़ावा इसमें मिला है। अब पैरा एथलीट्स अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ पाते हैं कि राज्यों से वो सहयोग नहीं मिल पाता। हमारा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी छोटे से बदलाव होंगे, लेकिन वो भी हमारे पैरा एथलीट्स के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। पैरा एथलीट, डेफ एथलीट्स, स्पेशल ओलंपिक्स, इन सब के लिए आपका उसका उपयोग किया जा सकता है। माइनर चेंजेस करनी है। क्या हम अपने यहां पर पैरा एथलीट्स के लिए कोई कंपटीशन करते हैं? अगर आप ओलंपिक्स में देखेंगे तो 7 मेडल जीते, पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते। तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत कई गुना ज्यादा अच्छा कर सकता है और कलेक्टिव अप्रोच के साथ हमारे नंबर्स पेरिस ओलंपिक्स में ही कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम अगले 1 साल में भी और थोड़ा ध्यान देंगे, चिंता करेंगे, आप देखिए 3 महीने में आपको इसका बदलाव देखने को मिलेगा। तो क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स होती है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होती है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होती है, तो क्या खेलो इंडिया पैरा एथलीट्स करना चाहिए, पैरा गेम्स करनी चाहिए? तो उसका भी लाभ हमें मिलेगा। उस दिशा में भी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। डोपिंग, कोई अच्छा खिलाड़ी हो अगर उसको जानकारी ना हो और कोच उसको मिसगाइड कर दे या कोई और उसके मन में ऐसी भावना है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा लूं जिसके कारण मेरी परफॉर्मेंस बढ़े, तो क्या है, वो डोपिंग में फंसता है, करियर बर्बाद होता है, मेडल तो नहीं आता, भविष्य पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। नाडा ने बहुत सारी वर्कशॉप्स करनी शुरू की है और हमने नया कानून इस पे बनाने का काम किया है। हम एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव नाडा हमारा दिखता है। हमने देश भर में एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम जो दुनिया भर के लोगों को बुलाकर यहां पर किया। आज भारत की पहचान एक अलग दिशा में दिख रही है। भारत केवल अपने लिए नहीं टेस्टिंग कर रहा, आज दुनिया भर के देशों के करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी लैब्स को हम और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। सेमिनार्स हाफ डे हम कर रहे हैं। नो योर मेडिसिन ऐप हमने लॉन्च कर दी है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये जानकारी मिली होगी। हम एप्लीकेशन तो बहुत लॉन्च करते हैं, फिटनेस की भी, नो योर मेडिसिन की भी। मेरी सचिव महोदय से अनुरोध रहेगा कि ये राज्य के हर जिले तक, हर खिलाड़ी तक इसकी जानकारी कैसे पहुंचे, कितने लोग इससे जुड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल लॉन्च ही नहीं, जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, सभी स्टेक होल्डर्स की है। तो अवेयरनेस कैंपेन और एजुकेशन इस पर हो, मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा। यूथ अफेयर्स को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत उचित बात कही है। बहुत शानदार आयोजन पिछले नेशनल यूथ फेस्टिवल का हुआ, देश भर की भागीदारी हुई, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ हमें अपने यूथ फेस्टिवल जो 12 जनवरी हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम करते हैं, उसमें क्या क्या और हो
जिसके कारण आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कर सकें। ड्रग अब्यूज, इससे मुक्ति पानी है तो क्या उसका हिस्सेदारी हो सकती है? कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम युवाओं के लिए देश भर में चल रहे हैं, उसकी जानकारी उनको मिले, उनकी भागीदारी हो। Y20 हम देश भर में करें G20 की तर्ज पर। इसके 14 बड़े प्रोग्राम देश भर में हुए, सैकड़ों कार्यक्रम हमने देश भर के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में किए। अब युवाओं के बीच में युवा संवाद से लेकर युवोत्सव जैसे कार्यक्रम हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के दिए पंच प्रण 5 रिजॉल्व जो उन्होंने जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा, और ये पंच प्रण अपने आप में बहुत क्लैरिटी देते हैं कि क्या करना है। क्या हम इसको हर युवा कार्यक्रम का एक हिस्सा बना सकते हैं प्रतिज्ञा लेने के लिए? मुझे लगता है ड्रग्स के ऊपर अभियान तो हमें देश भर में चलाना चाहिए। होम मंत्रालय तो चला ही रहा है, ड्रग्स बेचने वालों को और सेवन करने वालों के खिलाफ भी। लेकिन जागरूकता जितनी ज्यादा होगी, अवेयरनेस जितना ज्यादा होगा, युवा उतने उससे दूर रहेंगे। खेलों की जितनी प्रमोशन होगी, जितना इसके हमारे कंपटीशन चैंपियनशिप्स होंगी, उतना इसका लाभ मिल पाएगा। मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में जो मैं अपने यहां पर खेल महाकुंभ का कार्यक्रम कराता हूं, सांसद खेल महाकुंभ, उसकी जानकारी बाकियों को दो। और मैंने भी ये प्रधानमंत्री जी का जो मॉडल गुजरात का था खेल महाकुंभ का, वहीं से देखकर अपने यहां पर सांसद के रूप में शुरू किया था। आज सैकड़ों सांसद देश भर में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसका आयोजन कर रहे हैं, लाखों खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो क्या हम अपने अपने राज्यों में विधायकों को, जिला परिषद के सदस्यों को, पंचायतों के प्रधान को, वो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग खेलों के अगर चैंपियनशिप्स और इवेंट्स करने शुरू करेंगे, तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नीचे तक बज क्रिएट हो, स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट शुरू हो, एनवायरमेंट ऐसा खड़ा हो कि कंपटीशंस और इवेंट हो रहे हैं, अपने आप में एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। पंजाब के हमारे मंत्री यहां पर गुरमीत जी, पंजाब में हमारे उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ अधिकारी यहां पर हैं, इनके यहां पर खेलों का सामान बहुत बनता है। तो इंडस्ट्री को भी इससे लाभ मिलेगा, इससे जॉब क्रिएशन भी होगी, खिलाड़ियों को अलग अलग पटल पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी मिल पाएगा। इससे पूरे देश भर का लाभ मिलने वाला है। और हम अगर आपस में देश कोलैबोरेट करता है, मान लीजिए आपके यहां के विधायकों ने बहुत शानदार कुछ अच्छा किया, तो आप चुनिए किस विधायक का सबसे बढ़िया कंपटीशन था, किस खिलाड़ी को वहां से सबसे अच्छा चुनेंगे। क्या हम देश भर के ऐसे खिलाड़ियों का कुछ ऐसा टूर्नामेंट उसके बाद कर सकते हैं जो राज्यों से विधायकों द्वारा किए गए चुना गया है? क्या सांसदों के द्वारा किए गए ऐसे सबसे बढ़िया टैलेंट को चुनकर टैलेंट स्काउटिंग का हम वहां से काम कर सकते हैं? क्या हमारे राज्य की सरकारें उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं, उनके साथ कोचेस मिलकर जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वहां स्काउट करें कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम में सबसे आगे बढ़कर आ रहा है। क्या इसका एक फॉर्मेट डिजिटल हो सकता है कि जब कि कोई इवेंट हुआ, मान लीजिए बॉक्सिंग का हुआ, उसी समय आ जाए कि ये बॉक्सर में प्रतिभा दिखती है राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की, तो हमारे पोर्टल पर जाकर उसको अपलोड कर दें। क्या देश भर के लिए ऐसा पोर्टल हो सकता है जहां पर आपके राज्यों से, जिला स्तर से और ब्लॉक स्तर से आप लोग फीड कर सके? और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राज्य के हमारे ऐसे जो खेल विभाग है उनसे अपनी जानकारी साझा करके देश भर के लिए, साल के लिए अलग अलग कैंप्स देश भर में आयोजन करने का कोई ऐसा प्रोग्राम खेल संघों और फेडरेशंस इनके साथ काम कर सकती है। So we have to bring all the stakeholders together, from the elected representatives to the NGOs to the corporates, from the state governments to the central government, from the state association to the national federations. If everyone comes along, I think we can do wonder. We can perform better, we can have more and rich talent pool available to us.
There will be specific target for states to work on specific sports, and we can also look at creating infrastructure for specific sports in specific states. I think till the time we don't have the scientific approach and the use of technology, we can't move forward, we can't have better performance, and we can't win more medals at the international level. For that, we need to have a collective approach. And for that, we need this cooperative federalism and the competitive federalism. Competition के माध्यम से competitive federalism को बल मिलेगा और एक collective approach के माध्यम से हमारे competitive हमारे federalism को भी बल मिलेगा. मैं ज़्यादा इस पे नहीं लूँगा because we are running 45 minutes late. I have a long speech to make. I won't get into that, but we'll try and pitch in whenever we have to. My humble request to all the sports ministers will be, please speak and share your experience. And let us speak to the point, be precise, and give quality suggestions. And showcase what you have done at the state level. And try and learn from others' experience. कई बार दूसरों को सुनना भी बहुत सुखद होता है, बहुत उपयोगी होता है, लाभदायक होगा और हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे. तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें चिंतन भी करना है, मनन भी करना है, क्रियान्वयन पर भी बहुत बल देना है. So from the reflection to realization to the implementation and to the action, let us work together as a team and create the right ecosystem and the atmosphere in the country to work towards making India the sports superpower. And if we can do that in the other fields in just a limited span, why can't we do it in the field of sports? All we need to see is to take a pledge, to believe in ourselves, to create the right infra, to create the right talent pool, and be true towards the sports person. भाई भतीजावाद सिलेक्शन में ना हो, ये इंश्योर करना है. हमारे खिलाड़ियों की सुविधाएं अच्छे मिले, ये सुनिश्चित करनी है. हमारे खिलाड़ियों को ईज ऑफ लिविंग में बल देना है, ईज ऑफ प्लेइंग में बल देना है, ये सुनिश्चित करना है. और हमारे खिलाड़ियों को सम्मान मिले, उस दिशा में भी हमें अपने कदम उठाने हैं. और क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बनाने की बात करते हैं, हम डुप्लीकेशन ना करें. क्या है कि एक जिले में 8-8 बन जाएंगे, दूसरे जिले में कुछ भी नहीं है. और आपने भी देखा होगा, कहीं खेल विभाग एनआईटी बना देगा, ट्रिपल आईटी बना देगा, आईआईटी बना देगा, मेडिकल कॉलेज बना देगा, स्कूल बना देगा. वहां के कॉलेज में भी होगा, दूसरे जिले में कुछ नहीं है, वो वैसे ही है. So in the last year, Chintan Shivir, I said, let us come together and give our details what sports infrastructure exists in which part of the state, which district of the state. Unfortunately, we didn't get that data from the states. एक साल लग गया. मेरा सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध रहेगा, ये आपको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, आपके अधिकारियों को करना है. भारत सरकार और राज्य की सरकारें इसीलिए पेमेंट करती हैं. बहुत सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए कि 20x40 का इंडोर स्टेडियम कहां पर है, क्या सुविधाएं हैं, 25x30 का कहां पे है, आपका एथलेटिक ट्रैक कहां बना है, आपकी हॉकी टर्फ कहां है, कहां फुटबॉल की टर्फ है. कुछ नहीं है जी, 8-10 चीजें भी नहीं है. टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें एक वर्ष इसको इकट्ठा करते लग जाए, और पिछले चिंतन शिविर से हम अगले चिंतन शिविर में आ जाए तब भी डेटा इकट्ठा ना हो. कैन वी फिक्स अ टाइमलाइन? कितना टाइम है जी, कितने जिलों में? बहुत समय नहीं लगना चाहिए. तभी राइट स्पेंडिंग हो पाएगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा. ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है. मेरा अनुरोध ये रहेगा, जब भी हमें बोलने का अवसर मिले, आप में से किसी को बोलना, आप उस समय अपना हाथ खड़ा करेंगे, हर किसी को अवसर मिलेगा. बट स्पेसिफिक टू द पॉइंट बोलेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलने वाला है. आप चाहोगे सेशन को बढ़ाना, थोड़ा और लंबे देर तक बैठना, हम तब भी बैठेंगे, लेकिन प्रण लेकर जाएंगे
कि मणिपुर की धरती, इस नॉर्थ ईस्ट से, जहां छोटे छोटे राज्यों ने देश को इतने मेडल जिताने का काम किया है, हम बड़े राज्य भी संकल्प लेकर जाएंगे कि भविष्य में जब मेडल आएंगे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ अन्य राज्यों की कंट्रीब्यूशन भी उसी तरह से ज्यादा होगी और भारत की मेडल की संख्या आने वाले समय में कई गुना ज्यादा बढ़ेगी और भारत को स्पोर्ट्स सुपर हाउस बनाएंगे, स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शानदार आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मणिपुर के मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी और सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your enlightening words and enlightening us all with your ideas and vision. Now I invite all the dignitaries present here for the group photo at the entrance of the convention center to commemorate this wonderful day. Post that, we shall all proceed for tea on the first floor. Thank you. We will all be assembling after 20 minutes at 11:55. Commissioners, officials from all the various states. Friends, it is a privilege to be here with you today. There are two issues that we will be discussing in the session of Department of Youth Affairs. Friends, the department has been working very hard under the leadership of Honorable Minister Anurag Singh Thakurji, and it is our belief that all activities can be improved upon. We also believe that in an increasingly digital economy, it is important to retool the organizations so that they can meet the needs of youth as in the present day. It is with this belief that we bring two subjects for discussion, and we hope that all of you will be very generous with your feedback and with your suggestions in the true spirit of a Chintan Shivir. The first subject is an upcoming web portal that is under development by the Department of Youth Affairs. This web portal is meant to offer an opportunity to youth through the country to find and engage with activities that interest them. आज के जो युवा हैं उनके अनेक प्रकार के इंटरेस्ट हैं और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि उनको इस पोर्टल पे उस प्रकार की एक्टिविटीज़ मिले जिनमें वो रुचि लेते हों. So we have a number of different activities. They can take part in community oriented activities, they can take part in sports, cultural activities. One other activity that they can all take part in is structured experiential learning. As we know, all youth, while they are, whether they are in school or in college, they all need experience of practical real life situations. Governor Banwari Lal Purohit ji also raised this issue कि भाई आज का जो युवा है वो उसकी आकांक्षाएं तो बहुत हैं पर स्वयं रोजगार की तरफ इतना आकर्षित नहीं होता और 20,000 की नौकरी के बारे में काम करने के बारे में उसके मन में कुछ डाउट्स हैं, संशय हैं. So in this portal we would be offering structured experiential learning of 30 to 60 days, 1 से 2 महीने की, which would then also count for credits in their respective colleges. These work experience situations could be either with small businesses or they could be in NYKS offices or in other government departments. And we hope that this would provide them with very valuable experience.
Other than this, the upcoming portal would also offer an opportunity to launch all and post all the various events that would be hosted by the department in the coming months. So we have over 600 Yuva Utsavs planned in the next 3 months, and the institution that is organizing the Utsav can post the event on the portal, invite students to register. They get to know what are the kind of activities available, whether it is a painting competition or a photography competition or just a minute. It could be anything. They get to see on a live basis what are the activities that are available. Also, they can all youth clubs, different community organizations can register and post their activity. So that is one of the issues. The other issue that we hope to discuss in today's forum is that of the restructuring of the youth festival. Friends, we believe that the youth festival could be made richer by adding more content, and traditionally we have had cultural themes like folk dance and folk song in group and individual events. In addition to that, we are proposing to identify and allocate specific themes to the various state governments. They would have then time for 4-5 months to organize district level competitions to identify who are the best entries in group or in the individual entry. So we have 5-6 different themes which we are bringing to you today. Youth as job creators, improving millets production, science for society, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसी 5-1 थीम्स हैं और इनका एलोकेशन ड्रॉ ऑफ लॉट से किया जाएगा. कौन सी थीम पे कौन सा राज्य क्या करना चाहता है, दैट इज कंप्लीटली ओपन टू देम टू डिफाइन हाउ टू सेलेक्ट द विनिंग एंट्रीज. एंड वी बिलीव कि अगर ये 3-4 महीने में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयन की प्रक्रिया के लिए कॉम्पिटिशन्स किए जाएं तो इट गिव्स द होल प्रोसेस अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन. It can attract youth, and it is a small youth festival in its own way. So all state governments are welcome to add to this in whatever way they like. So I'll stop here, and we can go forward and hear the discussions which will proceed. Thank you and Jai Hind. Thank you, ma'am. Now, starting with the first session on youth affairs, I now invite Digital India team led by Mr. Gaurav Sharma and Priyadarshi De from the Digital India Corporation for the first presentation. Thank you, ma'am. Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Anurag sir. Honorable Minister of State, sir, Minister of Youth of States from Manipur, a very warm, sorry, there's some low light, I believe. Okay, respected colleagues, esteemed guests, ladies and gentlemen, it is a very warm welcome to this gathering. I am delighted to have you all here today. It is my privilege and honor to present you this IT platform, IT-based youth leadership and social engagement platform. In the meantime, we are calling it the Yuva platform, and it will, possess capabilities to enable youth-centric governance. So before going into the details, I'll just give us a brief introduction about Digital India Corporation. We are an extended arm of Ministry of Electronics and IT, Government of India, which is set up as a not-for-profit organization, which was set up in 2001. Currently, DIC leads and guides the realization of vision and objectives of the Digital India program. I'm sure you must have come across with our divisions, which are mostly in limelight, like the NEGD, MyGov, MeetY Startup Hub, India Semiconductor Mission, Bhashni, which is the National Language Translation Mission. So in pursuit of,
our mandate, we have been ideating, developing, and managing several large-scale national scale platforms like DigiLocker, Kovin, Diksha, Umang, Meri Pehchan, and many more. So the concept of this platform was ideated within the Ministry of Youth Affairs to provide meaningful opportunities to youth with credible opportunities, credible options in the public and private sector. That the schemes of youth development and engagement, which can in turn foster youth-centric governance. To realize this vision, we have worked towards three-pronged approach, which is building a national youth registry, creating a database for relevant public and private organizations and repositories of their youth-related services and information. And lastly, to build a youth-centric mobile and web platform, which is intuitive, multilingual, one-stop interface, which facilitates real-time matchmaking of youth with their interests, like cultural events, experiential learning, etc. The digital platform aims to empower and engage youth to become leaders and active citizens in their communities. It provides tools, resources, and opportunities for youth to develop their leadership skills, engage in social impact projects, connect with peers, and contribute to governance processes. The Yuva platform will play a critical role in enabling the youth-centric governance by providing a space where youth can engage, collaborate, and hone their leadership skills. Yes, ma'am. So the youth platform will include features such as leadership development, experiential learning, mentorship opportunities, social engagements, partnerships, and collaborations. Each feature is designed to cater to the specific needs of youth and enhance their experience on the platform. The platform benefits includes providing practical learning opportunities, fostering community engagement, promoting civic responsibilities, building leadership skills, and developing critical thinking skills. It will enable youth to connect with their peers and mentors from diverse backgrounds, collaborate on projects, and make positive impact in their communities. By providing a space for youth to engage in social national building issues, the platform enables youth-centric governance. The youth leadership and social engagement platform will play a crucial role in empowering the youth and enabling youth-centric governance. By providing a platform for youth, we can, so without further delaying, we'll go ahead with the demo. So this is the first look of the Yuva platform. This beta platform is available at yuva.gov.in. These are some of the landing pages. This talks about the internships, finding opportunities. This talks about experiential learning, the activities that that can be made available, the events that are being posted. So I'll just go briefly into the small module, and then I'll request my colleague to give a demo of the platform. So while registering youth, we will be using, to create a verified registry, we'll be using an Aadhaar-based platform, which is powered by Meri Pehchan, which initially captures very basic information about the youth. Then, as and when the platform evolves, it keeps on taking information about youth, which can be utilized for further details. Priyadarshini? So this is a brief demo of the... Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Without further delay, we'll just start off with the demonstration of the platform. To all the dignitaries present here, the idea of the platform is to create a very simple, logistically easy,
sign-on process for the youth who are not only urban but also rural. Youth who are involved in every activity that currently is, important for nation building. So we go on to the platform demonstration where it takes a very basic Aadhaar detail, and obviously since Aadhaar is very widely used, it helps the youth to create their own registry, which is verified registry for the youth, which helps them to later on get better, government services. And once we have gone on to the once the registration process starts, the youth gets a longer registry where they give in their details, their preferences and interests of what they want to do. So once the youth starts registering, they will be able to choose their state, their district, their area of interest, and they may choose more than one area of interest. Their area of sub-interest. So if they have, say, interest in sports, so they may choose football, cricket, etc., etc. They may choose more than one sub-interest areas, and they will get opportunities and social engagements along that interest in their geolocated area, which means the youth will be able to locate themselves and around wherever they live or wherever they want to take the internship. That preference will be given to the youth. Obviously, for several youth, we have to also map the university, the college that they are associated with. So that also goes on to the as a part of the platform. Right now, obviously, the platform is in building stage, and we are just working with a very small amount of live data. So we are yet to build the platform that way. So please, I will also ask your forgiveness as this is a beta platform. As we see that the youth starts choosing their industry and area, and they can choose their area of interest and social engagement and experiential learning experiences. Now we get on to the next slide. Where we are talking about how the youth engages, and so who they engage with. So the youth engages with several government, non-government, and other organizations who are associated in the private sector, in the not-for-profit sector, who come into the platform to offer their services. And they obviously also register through the same process. They give in their offerings to the platform, and where the youth can, so it's basically, they will match the youth's preference with the organization's preference, and there'll be a matchmaking, and then the youth will be offered either a social engagement or an experiential learning or a mentoring service that the youth can very easily avail. This is the very quick demonstration of how the partner onboards onto the platform. As we are as the Department of Youth, we have seen that there are various departmental spaces that we can also include into the platform, like the youth clubs, who are youth-centric organizations who are created by the youth. So we have given them a space to come and talk about themselves and create their own, community spaces inside the platform. So this is how the partners register. Obviously, some of the departmental organizations who need to verify these partner organizations have also been given a space to register here. As and when the platform grows, we will invite all the other departments from all the other government ministries to please come and create their communities here. So we are trying to create a social community from the government sectors, from the non-government sectors, and from the private sectors also, who will come and support the youth in creating their nation-building experience. I'll go to the next slide. Next slide. Next. It's not happening. Sorry. Yeah. So when we're looking at the experiential learning experience, and we'd like to talk about this, the experiential learning portal here creates a very unique experience for the youth to come and join, and then obtain any sort of learning experience through professional working opportunities with organizations, both government, non-governmental, and public.
and where these opportunities are going to be about 2 months, I think, 2 months programs, where they'll obtain experiences of learning, experience of working, professional experiences from MSMEs, from government departments, from not-for-profits, and from other industrial departments also. As usual, all these applications are going to be cross-verified by the departments, also by the invited departments that we are going to onboard. Again, how the experiential learning, please play, the experiential, how partner organization onboards onto the portal is demonstrated here. Just to add to what Priyadharshini is saying, for businesses there will be a minimum cutoff of 40 lakh turnover. Yes. Annually, because that brings them in line with the Udyam portal of the Government of India. Yes. So that will So there will be some checks and balances for every organizations that are onboarded here, including the youth. So we will be verifying the youth with the Aadhaar and other businesses and organizations with the various portals that are added. So for example, if it's an NGO, we'll be asking, we have already connected with the Darpan. For businesses, it will be Udyam. For large industries, it will be the industry standards. So we will try to maintain a huge amount of hygiene in the portal so that the youth experience is absolutely clear, and there is no amount of malice. As it's a government portal, we cannot do that. So we need to make sure that the experience of the youth is absolutely clear and it reaches the youth in a positive way instead of it being in a negative way. I think, next slide, please. Yeah. So as the youth applies to the portal, the youth's application, as the youth registers to the portal, the youth can get a large repository of opportunities, social engagements, experiential learning engagements, and mentoring opportunities. They may select it around the geographical location, and once they select this opportunity, it will reach to the organization where they will accept the opportunity. Obviously, they'll apply to that opportunity. Once they apply to the opportunity, the organization will either select or reject the child. Obviously, sometimes what happens is that organizations also have limited capacity. But then the portal in itself auto-allocates the youth to another organization. So there is huge amount of opportunity. The idea is, what we have seen is, there is large amount of opportunity on the ground, which does not transforms in itself to the technology portal, and so the youth is not aware that the opportunity is happening. But what we are doing creates that since we are mapping end to end, and we are also reaching to the last mile organization, we are onboarding every organization and every youth. So every youth at least has more than 10 opportunities to apply to during this experiential learning program, and further on, of course. This is a small demonstration of how the youth creates their profile. I think by now it's very clear that it's a drop-down form, and children will come and they'll give in their data. As and when required, they can keep on building their profile. We have also requested the universities to come and onboard with us. So the universities will come in with their coordinators who will verify the youth's data from their sides. Also, because the experiential learning programs have some amount of credits that the universities provide to the youth. So this kind of credit matching will also happen through our portal. Next slide. Further on, very interesting, yes, and I would like ma'am to ask. So basically, what all you can see is that there is a backbone which has been created, which has all these modules. The content depends entirely on you. The content depends entirely on the state governments. Every district youth officer, every state government commissionerate, the national department, it will have a dashboard where all these activities are reflected. How many organizations on board is entirely dependent on the efforts made by the states. We have tried to build an API or a handle with the large databases for verification. But that being said, every college will need to onboard those who wish to post experiential learning. Small and medium businesses will have to onboard. So we are collaborating with a few business organizations, but every drop counts.
So I would request all of you to see it as an opportunity. Here in the Yuva Utsav, as I said, we have over 600 events lined up. And again, the content depends entirely on you. Some of you would have hosted these Yuva Utsavs in the past. In a Yuva Utsav, there are different kinds of events again which depend on the host college, on the nearby schools, on the government departments who wish to put up stalls. It is available to them and there's a live counter. So everybody can see, students can register both offline and online. So I think we'll stop here. Any feedback which anyone wishes to give, please do write to us. Also, there is an email, Gaurav, support@yuva.gov.in. Is it operational? So please display that. So there is an email ID. Please write to us and tell us what else you would like to have over here. It is still in beta stage. So which is why we have brought it to the Chintan Shivir. Please feel free to offer any suggestions. We hope that this could be a mechanism to engage youth pan-India. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have a presentation from the Madhya Pradesh Youth Department. I request Srimati Deepti Gaur Mukherjee, Principal Secretary, Youth Affairs and Sports, Madhya Pradesh Government, to make the presentation. Ma'am, 2 minute wait करना है क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे presentation में clarity नहीं होगी तो फायदा नहीं है. Because I could see she was telling you about the processes, how to log in, what is the advantage. But to be on the same page, if you have understood it well, why it is being made, what is the larger role of the youth in the coming years, and how they could utilize their services for volunteerism, internship, or the other activities they want to engage in the nation building process. That is why this has been created, to bridge the gap, provide a platform. If you have any specific suggestion to further improvise this, further some more elements should be added to this, that will be more than welcome. अगर वो चर्चा नहीं होगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे. ये तो इन्होंने बोला कि लिख के भेज दीजिएगा, तो हमने सोचा हम बाद में लिख के भेज देंगे. ठीक है. बट प्रेजेंटेशन की कॉपी है आपके पास? वो दे दें. नहीं अभी तो मिलनी चाहिए. प्रेजेंटेशन की कॉपी स्पेसिफिक क्या किस पे फोकस होने वाला है और उनमें सुझाव कुछ ऐड करने के लिए तो आप लोग वो जरूर दीजिए. समय कम रहेगा, अगर आप एक हफ्ते के अंदर दे देंगे, विल बी मोर देन हैप्पी टू ऐड इट. And we will also like to learn from various states if they are doing on the similar lines. उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मेरा आपने अगले सेशन में डाल दिया, जबकि वो इसी से रिलेटेड है. हम भी एक युवा साथी ऐप बना रहे हैं जिसको मैं दिखाना चाहता था. आप भी इसी में दिखा दीजिए. आपने एमपी के बाद उस नेक्स्ट सेशन में डाल दिया, वो तो उसको इसी में डाल दीजिए तो हम 10 मिनट दिखा देंगे. वो नेक्स्ट सेशन में नहीं है, वो रिस्ट्रक्चरिंग वाला है. ये तो बिल्कुल रिलेवेंट है, मैं आपको बताता हूँ. एमपी पहले कर ले फिर मैं बताता हूँ. किसी और के मन में कोई स्पेसिफिक सुझाव होगा तो आप अभी भी लिख के बाद में भी लिख के दे सकते हैं. Respected ministers on the dais, Secretary ma'am, may I request for the presentation to be uploaded? Yeah. So, sir, I think the scene has been set in terms of what Yuva Portal is about, and in MP we've already launched it. So just to give you an idea of what we are envisaging in this, I'll start without any delay. Next slide. So if we look at this, there's a vision of the state in terms of what actually we are concerned within youth development. As we all know that youth, of course, is a separate category, but it's also a very differentiated category. And it's interspersed, and it has what you say, kind of an intervention in different sectors. So when we started this entire process, we said we must look at youth as a specific sector. It may have different interests, but let's look at a different sector. And we wanted to have an approach which looks at just not the skills and the employment part of the youth, and their interests, but also their whole personality development, which includes what has been discussed right now in terms of volunteering and in terms of participating in policy making and in implementation. So the first aspect is that we have an integrated approach to youth development.
The second is, like it's been mentioned here, that we wanted them to have an exposure of all international and national opportunities in subjects and areas which they are interested in. Third, we want to encourage volunteering for nation building. And lastly, we want some kind of a community engagement for the youth. So there's a slight overlap between volunteering and community engagement, which I will explain as we go along. Next. So we started, sir, you may remember that last year in July, we had invited you for the inauguration of the Youth Mahapanchayat, and there was a weather thing, and so you gave your address on the online. So we started this last year where we had a Youth Mahapanchayat, and the objectives was basically to get a youth from different walks of life across the entire state to come sit down, discuss various issues across certain sectors, come up with certain ideas, and look at how we can engage with them more constructively for the development of the state. So we had a registration process. There are almost 53,000 youth registered in that. Then we had in each districts, we identified, we called for 7 to 8 people in 6 or 7 sectors. Then they came for the state level Youth Mahapanchayat, which was inaugurated by the Honorable CM and Honorable Union Minister. We had sectoral experts from India and abroad. We had a very, very interactive discussions across 1.5 day, 2 days. And we had 6 or 7 sectors where we had environment, we had sustainable future, we had tech startups, we had youth for democracy, youth for social cause. We also had sports. So we had 7 sectors. And then at the end of it, we had a youth resolution. I'll come to the next slide where we identify. So in the youth resolution, we had certain things, we had certain commitment from the part of the youth, what they would like to see from the government and what they would like to commit to achieve those goals in the government, through government. And then finally, we had some interventions in terms of institutional structures, institutional processes, which they wanted to get established. So we had to have they wanted a state youth policy, they wanted some state youth awards, they wanted an annual Mahapanchayat, they wanted a youth advisory committee at the district level, some youth cells in colleges. And then the rest, if you can see, are the sectors where we had lots of suggestions. And of course, we also had a commitment from the youth to engage in all these sectors. From this Youth Mahapanchayat, the demand came from the youth that can we have a one-stop solution? Can we have one platform where everything which concerns us can be there? Because basically their most immediate interest was of employment. And of course scholarships and things like that. But they said कि हमें अलग-अलग वेबसाइट्स पे अलग-अलग विभागों के स्कीम्स में जाके देखना पड़ता है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, फिर एमएसएमई का अलग है, फिर डीआईपीपी का अलग है, महिला बाल विकास का अलग है. क्या इन सब चीजों को आप एक जगह हमारे लेकर आ सकते हैं क्या? और क्या फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं? So this is what they asked us. Then we sat down with them. It has taken us almost 8 to 9 months to develop this portal, and it's become live. So I'll come to the features of the portal. Next. So like I said, that it came from them. So we have also then come up with a state youth policy, which we have just launched. I shared it with ma'am the other day. And which takes a lot from the national policy. But of course, we have our own elements in it, because we also looked at not just statement of intent, but also in terms of, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह अपने संबोधन में हमसे कहा गया था, तो जो implementation वाला part है, उसको बहुत ही focus दिया है. And in fact, we have 18 action points which have to be implemented in the next 1.5 months. So it's not an empty document. It's not a facetious document. Next. तो what are the features of the portal? The first is कि हमने करीब जितने भी हमारे विभाग हैं, प्रमुख विभाग हैं जो youth से engage करते हैं, उनकी सारी schemes को इस portal पे लेकर आया है. Then we have a whole section on the volunteering part where youth can come and volunteer for various activities. There's a whole module on mentorship. There is जैसे MyGov का, you have those 5 engagement platform है MyGov of Government of India, where you have those 5 things like tasks, discussion groups, blogs. So we've taken that model and adopted it here. We're using the MyGov right now, but ultimately we'll move to our own one. Then there's a portion on inspiration where we will be posting inspirational stories. Then there is one on youth achievement where youth will be actually putting forward their achievement stories. And then we have a cultural events thing. So I'll explain a little of each of these features. Next. तो एक यूथ रजिस्ट्रेशन का है हमारे पास एक मध्य प्रदेश में there is a thing we have a identity called समग्र ID. So that's a huge thing. हाँ मैम ऐसा 5 slides more. समग्र ID है, उससे we are doing a registration with the for the youth,
and where we ask them for the areas of interest. Next. These are our schemes. So we have 16 departments, 134 schemes at one portal. And we've also identified the sectors of those schemes so that the youth doesn't have to go around searching कि कौन सी scheme है क्या है. तो यदि आपको employment में interest है तो आप employment search कीजिए, फिर department में जाइए, आपको सारी schemes पता लग जाएंगी. Similarly, if interested in scholarship, you can get that. Skill development, admissions, hostel, awards, monthly pensions is basically it's related to a scholarship scheme. So this is how we've categorized all the schemes related to youth on one platform. Next. ये हमारा स्कीम इंटरफेस है, तो आप स्कीम की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको डिपार्टमेंट मालूम है तो डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन सर्च which department you have. So you see labor department, we have other departments. Most important, we haven't recreated the wheel. हमने दोबारा व्हील को इन्वेंट नहीं किया है. जिस विभाग का जो स्कीम है, whichever scheme belongs to whichever department, we've just given the link there. So that this whole updation business is not, what happens mostly with portals is you can never be updated. So we don't do anything. All they have to do is click that particular scheme and it'll go to the website of the particular department and that's naturally updated. There is no double burden on the department. Otherwise, the departments just don't take interest. So we're just like an aggregator. In today's days, we're just an aggregator of all the things to do with the youth. Next. This is what I was discussing, the MyGov thing. So we have work. I think all of you know the MyGov model. So we're basically following that. In fact, as of now, there are two important areas where we are taking people's youth opinion. I'll explain those two. One is the youth resource centers, which you want to develop at each district level. And the second thing is the Mukhyamantri apprenticeship yojana, where it has to be launched. So, uspe hum log pure suggestions youth se le rahe hain. So the very important thing that who you are actually planning for and implementing for, they are actually participating in the formulation of the policy itself. That itself is a very big thing. And we have beautiful suggestions coming up. Next. We have a whole section on mentorship. Here, we again have sector-wise mentors. And here, the responsibility is basically with the department. And they know who are the good mentors, so they'll be registering them. And then these mentors will get in touch with the people who show their interest and give them mentorship. Here also, we will not recreate. Like mental health, we already have an online portal of Government of India and our own. So we will just give the link. So jahan online resources available hai, we'll be just be linking it. So, you're not adding to your logistical issues. Next. Here's the inspiration part, where we are, as a department, we have small PMU. We will be identifying achievers across various sectors because everybody's interest is different, and we'll be posting those achievements here. Next. This is the interactive one. Here, youth themselves can come up. They will mention what their uplabdhiyan are, unki kya achievements hai. We will get that verified, and then we will put it on the portal so that, everybody knows what's happening. Next. Then we have a whole section of cultural programs and activities where we will be posting all the activities. We also have district level chapters in this. Next. What is the current progress so far? So we have 29,000 visitors. We have 6,000 youth who are registered. This I've already mentioned. Next. This is the gender-wise registration and the age-wise registration. Next. We have almost all districts have been covered. So every district mein se koi na register kiya hai. And look at the areas of interest which has come. So we've also identified that. So it's very important for us to see what the data is telling us. It's not just an empty, a cosmetic kind of a thing. So we are working on that part, and it's developing really fast right now. Next. These are the queries which come through Contact Us. So a lot of them was about information about new schemes, technical help, jobs and internships, career guidance. So this also gives us an idea. So now we act as a mediator between the queries of the youth and the concerned departments. And we help them out with it. So we are basically, like I said, we are a mediator. Next. What is the way forward? So we are now communicating with the children who have registered and then coming up with activities which are on their area of interest. We are initiating the district level chapters, and we're setting up this thing, so it's very unique. It's a youth resource center in each of the 52 districts. It's going to basically be a one-stop shop at the district, where we are going to have a youth advisory council, and they're going to work with them to develop schemes. And finally, we'll be organizing some activities. That's all. Thank you. I think very good presentation. And if you look at युवा महापंचायत से जो सुझाव युवाओं के आए हैं, उसके चलते इन्होंने युवा पोर्टल बनाया है. तो आज पीएम साहब भी सुबह कह रहे थे कि हम इस बैठक से भी कुछ निकाल कर ऐसा लेके जाएं इसके ऊपर आगे कदम उठा सके. तो मध्य प्रदेश ने वो ऑलरेडी किया है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी. 1 महीने से कम समय के अंदर आई थिंक मोर देन 29,058 हैज ऑलरेडी
visited your website, 6,000 plus has already registered, which looks good. I mean, that's a good sign. अब इस पे आपके कोई सुझाव हैं तो एक एक करके सबसे पहले किसी राज्य के कोई मंत्रीगण बोलना चाहते हैं दोनों प्रेजेंटेशन के ऊपर तो विल गो बाय द फर्स्ट मिनिस्टर्स देन वी कैन गो थ्रू द ऑफिसर्स Any minister wants to say anything or want to add anything or suggest to what we have seen? If no minister is speaking, then any officer want to say something? So I just wanted to and we would, sir, we'll have to look at, ma'am, how we can integrate what we have done and what has been done nationally, so that we don't replicate and duplicate and unnecessarily increase the effort. So we will have to look at some data management issues also, because MP specific to हमारे portal से हो जाएगा. But if we look at the vision of Ek Bharat Shresth Bharat, and we're looking at giving a much wider canvas to youth, then the integration between the portal which you are developing and which we are doing at the state level, that will have to be done. So sir, that will require both technical help from your IT people, and of course we will put in our best. Sure. But we don't want to sir, duplicate it in the sense that... No, I agree, because we have a similar portal which we are launching. Yeah. We have a similar portal called Yuva Sathi, because they have put it on the other. Can you show it here? I told those fellows to put it in the technical team, please. Because it's in the same context. दूसरे में चला जाएगा तो context ही बदल जाएगा. Please show the UP presentation, the presentation from the UP government. नहीं वो ये इसी से रिलेटेड है, वो दूसरे उसमें सेशन में चला जाएगा. इसी हमने युवा साथी ऐप बनाया, मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ. I want to inform all the delegates that we have placed I want to speak placards on the table. So whenever any delegate want to speak, may please raise the placard. You see, a kind of similar exercise. We in UP, we have 90,000 villages, and we have in each village, we call it Mahila Mangal Dal and Yuvak Mangal Dal, 20 youth, 20, 40. So we have almost a group of 18 lakh youth, which is connected. Now we are, uploading their data. We have reached up to 35,000 now. We are trying to reach up to 90,000. So for them, what we are presuming is that the youth knows everything. But we have proposed a app called Yuva Sathi, so where we, on a single platform, we are giving every information about 350 government schemes, including state government and central government as well, including the hyperlinks which she was talking about, and the registration of youth, the suggestions, the feedback, everything. Yeah, it has come now. Yeah, this is there are two similar kind of presentations. Yeah, carry on. So this is Yuva Sathi app that we've already put. And next, please. Basically, idea is to awareness. We are presuming that youth knows about everything, but no, he has to run to many platforms. So that is why there is a single platform for not only their education, skill, scholarship, jobs, their sports, all whatever a youth needs. Next, hello. This is a single platform, as I already told you, about all these schemes, including hyperlinks for all Government of India schemes as well. So he has to visit, all next, whatever subject he wants to. These are some of the subjects that has been covered: the skill development, self-employment schemes, the startups, health, competitive examination, higher education, job, vocational training, career counseling, sports. Next. This is a process where we also get his the information. As I was telling you, we have 90,000 groups of 20 youth in the villages, rural. Basically, we are concentrating on rural youth because they are the ones who are not aware of many of the government schemes, many of the future potential that they can explore. Yeah, next. This is hyperlink. I just wanted to show. Can you click the hyperlink? Go back. इसको हाँ, yeah, please. डबल क्लिक कर दो भैया, इसको खुल जाएगा अभी.
हाँ ये युवा साथी ऐप है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा. This is about 300 services on 165 youth schemes and 85 departments of both Government of India and state government. So they, you know, when you get started, you get OTP and all those stuff on this. Next. Take it, next. I won't take much time. Next presentation, yeah. The another thing that we have now tried is, see, we keep talking about startups. I was telling you your National Youth Festival should also include a session on startups. So what is happening is a large number of rural youth, they have ideas, but their ideas are not being fructified. So we are now starting a startup exchange every week, a day in a place where we have identified. We get our rural youth with ideas. We get we have tied up with the Angel Network, UP Angel Network. They are the investors, and we have tied up with our technical incubators, that is the UP Technical University as well as IIM Lucknow. So where we get youth representatives who have ideas, investors who are looking for ideas, and our technical incubators who provide technical support. So this is picking up very well, and we had almost 150 youth with ideas last week only, and we are kind of trying to give it a more speed. As I was telling you, the large rural youth, that base that we have, we can utilize, and we are trying to utilize, and now setting up a center of excellence for startups for rural youth. So this will be a big beginning for rural youth to bring their ideas, and we get investors and the technical support to fructify their ideas. Thank you. So thank you all. I have one basic response to the presentations made by UP and MP. They were wonderful presentations, and they have a very good point. Friends, there is a very basic difference between what the Madhya Pradesh government app and the UP government app has done and what we are doing, what is under development. Essentially, the Madhya Pradesh government app and the UP government app, at least what I could see of it, these are aggregator platforms, as Deepti rightly said, where they bring together links of different kinds of government schemes. As she said, a one-stop shop where people can find information about that. We have begun from the ground up, where youth spend a lot of time in doing a large number of activities which don't get recorded anywhere. Whether it is part of a Mission Life program, whether it is part of a blood donation camp, whether it is experiential learning or internship, at the end of the day, they are not able to get a single point certificate of what they have done. So what this Yuva portal will do is that at any time, any youth club can get, because we have put all that at the back end, they can get a single point certificate of all the man hours they have put in. And that is the USP, that whenever they go for any job application or anything else, then that is something for which they don't have to run around different government offices. Now the thing is that for that kind of single point certificate, the content we need to generate from the ground up. All the links of the different government programs would in any case be there, na? वो तो आप किसी भी पेज के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर डाल सकते हैं, तो हम भी डालेंगे. But the point is that are you able to get a college or a business to register and to offer what we are calling an experiential learning or a kind of internship? All those processes have been built into that. So a college, Ruia College says कि भाई, I am onboarding onto this portal, my students can apply for any experiential learning opportunities. A local business says that they are willing to offer these 3 job roles, whether it is accounts or marketing or whatever may be the case, and then they are able to apply for that.
So currently the major problem that we have in this country is that of employability. Na? So this particular app is under development, which is why the structure look like that for you, but the beta version is there. yuva.gov.in, आप कृपया वहाँ पर जाइए, देखिए, अपने सुझाव दीजिए. If we can get, currently the last survey, multi-function survey said that there are 30% youth in this country who are not in education or employment or training. If we can find some way to address their issues, then it will have served its purpose. Please write to us. Thank you. Thank you. आप अपनी इंट्रोडक्शन देके फिर यू कैन. नमस्कार सर, मैं अमित तलवार, डायरेक्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इन पंजाब सर. First of all, thanks sir for organizing this Chintan Shivar and giving us this opportunity to learn from the other states and Government of India, sir. Sir, when the Government of India presentation was happening, I jotted down the few points. One of the point was definitely the same which ma'am has mentioned, that duplication in the states are doing the same effort what Government of India is doing. So whether we can have one unified kind of a platform states can also use in plug and play model rather than having different kind of platforms, separate platforms which are not talking to each other, sir. Secondly, especially in the higher education setup and in the polytechnic and ITI setup, they say as a matter of entitlement, I want some skill, I want credit, or I want placement. And from the rural areas, we are getting demand that I want linguistic skills, mostly English language and other soft skills. And this is an entitlement base is created. And then it is the duty of the government, the duty of the private sector, through collaborations, through mentorship, we have to fill this mentorship, this gap. So that is the approach which Tamil Nadu is taking, sir. मेरा इसमें कोई सुझाव नहीं है, but I just want to say, sir, I से we होगा या nation होगा तो थोड़ा बेहतर है, because youth is talking about rights only, not the responsibility. So I mean that's your call. I'm not getting into that debate, but that is there. Sir, well, of course, sir, once this Yuva portal, because we have been also taken as one of the states where pilot is being conducted, we will certainly, this will be a good approach in the sense, our approach is limited to higher education, technical institutions, but that doesn't mean that we are representing the entire youth setup. So with this coming in, we will be making it broad-based. But I just thought I'll share one of the experience of ours. Yes. Thank you. There's one gentleman in the red shirt wanted to speak with you. अपना introduction देके then you can say. Good afternoon, sir. Sir, this is Jitendra Sonkar, Director Sports Uttarakhand. Sir, Jitendra Sonkar, Director Sports Uttarakhand. Sir, Uttarakhand sir has also designed on a same concept which is called Youth Center, Youth Hub at the level of the district center and at the level of the block center. So the basic concept was behind this कि जो हमारा youth है सर उसको एक proper गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उसको प्रॉपर एक करियर कंसल्टेशन नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या उसको स्कीम्स हैं और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, especially for the rural areas or interior areas of the part of the Uttarakhand and other part of the states and country, तो उसको वहाँ पे वो सारी चीज़ें सर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं.
सर उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक यूथ हब सेंटर बनाने की बात की थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे भी, जहां पर सिंगल पॉइंट एंट्री सिस्टम में उसको सारी इन योजनाओं के बारे में ट्रांसपेरेंट तरीके से और टाइम बाउंड तरीके से उसको वहां पर वो सारी चीजें मिल सके, जिससे वो अपने पोटेंशियल को पहचान सके और उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, किस सेक्टर में जाना है, वो सारी चीजों को वो एक साथ कोलैबोरेट कर सके। देखिए ये कि आम बात होगी कि हम भी ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक ये है कि क्या सब अलग अलग करें कि एक ही जगह पे सब कुछ, सबकी समस्याओं का हल हो, एक प्लेटफॉर्म मिल पाए। आपका कोई सुझाव इन दो प्रेजेंटेशन हुई हैं, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए तो आप वो बताइए सर स्पेसिफिक। सर उन दोनों प्रेजेंटेशन को सर देखा और अभी सर यूपी अच्छी लगी? हाँ सर बहुत अच्छा था। बस उसमें कुछ सुझाव है सर? तीनों प्रेजेंटेशन में सर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पॉइंट्स सर मिसिंग है। अगर उनको क्लब करके एक साथ अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे ही अगर उसको यूनाइट किया जाए तो वो सारी चीजें दूर हो सकती हैं सर। देखिए मैं इसको अन्यथा आप लोग लड़ ले, क्या मिसिंग है वो बताना है सर। एक तो यही मिसिंग है सर कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से सर हम ब्लॉक लेवल तक भी इसको हम लेके जाएं, ताकि इंटीरियर पार्ट्स के जो हमारे यूथ है जो सबसे ज्यादा दिशा भ्रमित है उनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकें। ठीक, थैंक यू सर। सर आई एम अभिनव कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड ओनली। जो मेरे डायरेक्टर साहब कहना चाह रहे थे सर कि ये जो हमारे वर्चुअल स्पेस में जो एफर्ट्स हैं सर, इनको रियल वर्ल्ड में भी मतलब साकार करने के लिए we need to develop some physical centers starting with the district level and then perhaps going down to the block level sir। क्योंकि अभी क्या हो रहा है सर कि हमारे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में या अच्छे स्कूल में जो यूथ पढ़ते हैं सर, उनको तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं उन इंस्टीट्यूशंस में बाय वे ऑफ करियर काउंसलिंग, जॉब फेयर्स एंड ऑल दैट। बट जो बाकी और यूथ हैं जो उन एलीट इंस्टीट्यूशन से बाहर है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फिजिकल हब भी होना जरूरी है इन वर्चुअल एफर्ट्स के साथ सर। यस प्लीज। टिंकू जी। नमस्कार। मेरे छोटा सा एक सुझाव है। ये दो प्रेजेंटेशन और बाकी लोगों ने जो बोला है, हम जैसे नॉर्थ ईस्ट में छोटा प्रदेश है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इनका पास रिसोर्स बहुत है, बहुत बड़ा प्रदेश है, तो उनका जो साइड है वहाँ पे यूथ जाके सर्च कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में सेंटर से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से इसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए है, जिसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी ढूंढ पाए जो उत्तर प्रदेश में जाके उसको ना मैं क्या कर सकता हूँ, और उत्तर प्रदेश वालों को भी पता चले, मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, एक सेम डिजाइन हो, जिसे सरकारी यूडीवी चलाते हैं या इज ऑफ डूइंग बिजनेस सारे प्रदेश में एक ही फॉर्मेट में है, ऐसे कोई एक फॉर्मेट में हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब वो सर्च करने में या हमारे ढूंढने में, या जैसे त्रिपुरा के बच्चे भी मध्य प्रदेश में कुछ जॉब ढूंढना है या कुछ वहाँ पे लिंक कर जाए तो इजी हो। मेरे ख्याल में एक कॉमन होना चाहिए, एक ही डिजाइन होना चाहिए पूरा। Anyone else? Yes, please. Farooq ji. I am Farooq Alam, Commissioner and Secretary, Sports and Youth Welfare, SAM. So it's a very good thing that this Yuva portal is coming up, but we have to popularize it immediately. So that's the first aspect. And to popularize, what will be the role of Education Department, Sports and Youth Affairs Department? So if you can have one SOP so that we can take immediate action so that it goes right down to the grassroots level, sir. Thank you, sir. Anyone else? Jigar. So with your permission, I would like to respond to few of the things, if you permit. जरूरत नहीं है जी, ये तो feedback session. If anything specific. Okay. नहीं मैम, एक्चुअली इसमें 3-4 तरीके के डाउट्स आए हैं। दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर, लाइक डैशबोर्ड्स हर लेवल पे मिलेंगे। सारे स्टेट्स जो हैं, हाँ, सारे स्टेट्स और सारे वो स्कीम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट हो जाएंगी। So the point about dashboards has been taken. It's a very valid point, and dashboards will be designed so that every district level officer, every commissioner will try to see whether block level dashboards can also be designed, because the data is already there. We only need to provide a user interface.
तो वो सब हम दे देंगे। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि उसको कैसे क्या रोल दिया जाए, कैसे पॉपुलराइज किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कंटेंट तो भाई आप ही लोगों ने जनरेट करना है। जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो तो हम लॉग ऑन करा ही देंगे, वो हमारा काम है कराना, बट जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ क्लब्स हैं, रेड क्रॉस है और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वो DYO will reach out to everyone at the district level, and my appeal to all of you is please provide support. We are here to only showcase the efforts that are made by you. So we have noted all the suggestions made. Some of them are very good and we hope to use them to build a very useful app for everyone. Thank you. So thank you all for a valuable session. One thing I would like to say, during the lunch break, I would like one Navneet ji and Deepti ji to be on my table, and couple of more officers who have some suggestions to make regard to Yuva portal, and Meeta ji will be on that table. The second table will be with the MOS Youth Affairs Nisit ji, where anyone has to give suggestions on the National Youth Festival. The ministers and the official could be present there, so that we could also compile a further any such suggestions or which you want to make, we can add on to that. उसको तब सुन लेंगे और डिटेल में. Thank you, sir. With this, we conclude our session 1. Now we move to session 2, restructuring the National Youth Festival. For this, I invite Shri Nitesh Kumar Mishra ji, Joint Secretary Youth Affairs, to moderate the session. Honorable Ministers on the dais, Honorable Ministers present in the meeting, Secretary Youth Affairs Government of India, Secretary and other senior officers from different states, dignitaries, good afternoon to all of you. In this session, we will discuss regarding restructuring the National Youth Festival. Here we will have a presentation by Department of Youth Affairs, and then there will be a presentation by 3 states. UP has already done their presentation, and then we will be having an open house discussion. Since we are already late, we will be running a very tight schedule. I will now request the team from DOYA to come and make their presentation. Thank you. In the meantime, there is a chair here. Atulya ji, you can come and sit here for the timing, because after that I think you have to make the presentation. और जब इनकी प्रेजेंटेशन चल रही हो तब महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, जब जो जाएंगे तब तक त्रिपुरा वाले आके बैठ जाएंगे ताकि समय बच जाए. You can start. Very good afternoon, Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Anurag sir, MOS sir. Okay. So myself, Devendra Vyas, Assistant Director, and I'm Abhay Shankar, Assistant Director, NYKs. So today we will be talking about restructuring of National Youth Festival. So National Youth Festival was inaugurated in 1995 by the then President of India, Dr. Rajendra Prasad. And we have completed 26 editions of National Youth Festival. 26th edition was inaugurated by Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji in twin cities of Karnataka, Hubli, Dharwad. This is an annual event organized by Department of Youth Affairs in collaboration with one of the host state of India and NYKS and NSS. And till now we have fixed a schedule of National Youth Festival, as Honorable Ministers have said, that on 12th January, on the birth anniversary of Vivekanand ji, we start the National Youth Festival, and it is a 5-day event. We celebrate. Sorry to intervene. Sir. Basics, okay, sir. Okay, so need for restructuring. So need for restructuring is, as during the inauguration, Honorable Prime Minister has outlined that youth is the youth power. Because of the youth power, we need to, So the intention is that we have had 26 years of National Youth Festival and we have done excellently. But now we need to expand our scope and we need to include the youth in a wider manner so that we
move towards the vision of India at 2047, the vision of that. In order to do that, we have suggested that we expand the competitions and expand the additional programs that we conduct in association with the National Youth Festival. Can we go to the next slides, please? Next slide, please. So this is what we are proposing, that first we have group and individual events, because right now, till now, we had like folk song and folk dance competitions in group section. We are proposing that this be expanded to individual level also, existing program, that is folk dance, folk song, folk dance and folk dance for both group and individual sections, and also add a life skill component. Because what is it to be human? To have stories, because we have a story of human civilizations. So why don't we encourage our youth to tell stories, to draw pictures, to illustrate what's on their mind, to speak out, to have elocution, photography, to capture the moments in the life that surround us, and have a just a minute, like speak about topics of their choice. So just suggested topics, and we are expecting that esteemed guest would chip in during the discussion session, and we can add on to this what all competitions we can have. Next slide, please. So these are the 5 themes which we have identified. On these themes, the competitions or workshop will be organized. So these are in line with the mission 2047 which we are talking about. The first one is youth as job creators. So as the governor sir also said कि हमें अभी मतलब youth को job seeker नहीं, job creator बनाना है. तो job creator बनाने के लिए success stories जो हैं states की, for individual की, groups की, वो success stories जो है इस National Youth Festival we can exhibit. So Honorable Minister said that it's a cooperative federalism, so we can learn from each other. तो ऐसे success models हैं जिसमें से एक स्टेट दूसरे स्टेट से सीख सकता है, एक इंडिविजुअल दूसरे स्टेट से सीख सकता है. तो फर्स्ट थीम इज यूथ एज ए जॉब क्रिएटर्स. सो एक बेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर बेस्ट एसएचजी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक टूल एसएचजीज है. तो ये ऐसे बहुत सारे एसएचजीज हैं जो बहुत केपेबल हैं. दे कैन बी एज सक्सेस मॉडल्स. जो एक स्टेट में है वो दूसरे स्टेट में रेप्लिकेट हो सकता है. बेस्ट स्टार्टअप्स इन एनी सेक्टर्स. तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं इन टेक सेक्टर, इन एग्री सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर. द लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उसको भी शोकेस हम लोग वहाँ पे एज ए इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज एक भारत श्रेष्ठ भारत. तो ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. द स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेता है जहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो ग्रुप है, जो इवेंट्स हैं, ग्रुप हैं जो ऐसे बहुत अच्छा करते हैं, वो ग्रुप को भी यहाँ पे शोकेस किया जा सकता है. और जैसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स भी एक भारत श्रेष्ठ भारत है, वो अलग अलग कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है. इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज, नेशनल इंटीग्रेशन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, नेशनल यूथ फेस्टिवल. तो उसमें जो बेस्ट कैंप मेंबर्स हैं, इन EBSB में क्या होता है, दे पीपल लर्न अबाउट ईच अदर्स कल्चर. जो यूथ है कल्चर के बारे में 10 सेंटेंस है. कोई उड़िया है, वो उड़िया जाता है साउथ में, तमिल, वो 10 सेंटेंस तमिल के सीखता है. तमिल जो समवन फ्रॉम तमिलनाडु वो जाता है कश्मीर में, तो कश्मीर में से 10 कश्मीरी लैंग्वेज सीखता है. तो वहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल में दे कैन एक्ट एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो वहाँ पे आके वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके दे कैन प्ले एज ए रोल मॉडल ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत. नेक्स्ट वन इज एज ए ब्रॉड थीम इज ए साइंस फॉर सोसाइटी, science and technology for society. As this year we are celebrating the International Year of Millets 2023. So improving millets production through science. Science models हैं, जैसे हमारे schools में भी हैं, science clubs हैं, हमारे colleges में science clubs हैं, technology clubs हैं, robotics clubs हैं, बहुत सारे clubs होते हैं. तो through those clubs हम लोग millets का production कैसे बढ़ा सकते हैं. एक जो behavioral change होता है कि हमारे डाइट में कैसे मिलेट्स को इंक्लूड किया जा सकता है. जैसे फिट इंडिया एट गुड एग्जांपल जो ऐप है, वो आपका पूरा स्पोर्ट्स का या फिटनेस का ट्रैक करता है. सो व्हाई नॉट वी कैन गिव ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमारे यूथ को भी कि आप एक मिलेट के लिए आप एक ऐप बनाइए जिसमें ऐसा हो कि वो रेगुलर डाइट में कैसे आ सकता है, मिलेट्स के फायदे क्या हैं, कितना न्यूट्रिशन है, वो सब एक ऐप में आए. तो जस्ट दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि एक ऐप में कैसे आ सकता है. उसके बाद मिलेट्स में जैसे एग्री यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जा सकता है, उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हेल्थ एंड फिटनेस. जो एडवेंचर कैंप्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, उनको पॉपुलराइज करते हैं.
तो जैसे हमारे यहाँ पे जैसे रिवर राफ्टिंग है, जॉर्बिंग है, ये मतलब बहुत बड़े स्केल पे भी होता है, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ विलेजेस में, कुछ ब्लॉक्स में ऐसे छोटे छोटे एडवेंचर गेम्स होते हैं जो इतने आइडेंटिफाइड नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है। तो जो छोटा ग्रुप जो इनको ऑर्गेनाइज करता है, वाई कैन नॉट दे कम फॉरवर्ड नेशनल यूथ फेस्टिवल में, वो अपने प्रेजेंटेशन दे, एंड इफ दैट टेरेन परमिट्स वो क्यों ना डेमोन्स्ट्रेशन दे। तो उनको आइडेंटिफाई करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। देन जो लास्ट ईयर इन 26th NYF टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर सर, फर्स्ट टाइम नेशनल यूथ फेस्टिवल में इंडिजिनियस गेम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। तो 7 to 8 teams demonstrated the indigenous games, and our commissioner sir from Karnataka is also there. He has witnessed कि मतलब बहुत सारे लोग, the local people were also मतलब वहाँ पे expose हुए उसके indigenous games कितने ज़्यादा, मतलब people were on edge of their seat throughout the जो 3-4 दिन पे demonstration हुआ. And yoga demonstration, obviously we have given the world of yoga. योगा डेमोन्स्ट्रेशन में जो बेस्ट योगा टीचर्स हैं और एनी अदर इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ योगा जो स्टेट्स ने किया है, दैट आल्सो कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड और प्रेजेंटेड देयर। जैसे सर ने बताया था, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे लाइक इट कैन आल्सो बी अ पॉजिटिव कैंपेन ऑन हाउ टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ अवॉइडिंग ड्रग्स। There is a drug menace actually affecting youth, sir. We can also have 2 minute बचते हैं आपकी presentation. Models on drugs and also on mental health is a new issue that can also be added to this. So we can present the best models. Next is on Mission Life. We are having a issue. There is no Planet B. So we need to integrate Mission Life onto the lifestyle of every citizen, especially the youth, because they are going to be the leaders of tomorrow. And next, it's about Yuva Kriti, that is the arts and craft exhibition that we have been doing every year. So the suggestion is that we expand the scope of this Yuva Kriti to include 2 more things. That is, one is textiles, and second is agro-based products. Because India is the land of textiles from Harappan era, so we have cotton, we had cotton. So now what we can do is we have more than 35 traditions of handlooms, and also we have this fusion textiles coming up. So we can have models where how we can showcase the new innovations in this sector onto this Yuva Kriti exhibition cum sales platforms. Every year we sell out in the second day itself, it doesn't go to the 5 days. So this is one thing we can do. This is a competition strategy, so every state will be allocated one theme. On that theme, on these activities, to mind these activities are only suggestive. States are free to add any more activities. So competition selection, competition strategy क्या होगी कि हर state जो theme allocate होता है from district, they'll organize one competition and district to state. The competition will culminate on the state level, so that on national level, the best of the best state का है, वो state वाले वो represent वहाँ पे national youth festival में कर सके. Next, this is a suggestive breakup of the participants. 100 participant का जो contingent होता है. So this is not a hard and fast composition. Like some states may have some more innovation, some other sector. So this is again open to, it's flexible depending upon the state's interest. But this is just an indicative breakup of 100. Next slide, please. These are the activities which are organized by host states and NYKS and NSS. So which are young artists with painting, sculpture, adventure camp में, that I have already mentioned, adventure camp में jorbing activities होती हैं, food festival and the music shows. Next, this is the proposed calendar. Today, this month, we will identify the themes and allocate activities. Yes. So identify your themes. Today we'll be identifying, we'll be allotting the themes, and by May, the states can finalize the activities, and from July to September, the district and state level competition can be held. On the final state contingent in October, November, the final state finalization of state contingent can be done. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for the presentation. And now we have a presentation from the state of Tamil Nadu. Honorable Minister, sirs, I will just initiate it and then my colleague will take it over. Sir, in 2008 we had conducted the Chennai Youth Festival, and the Youth Festival has totally changed from those days, and it has become it is on a much bigger canvas. Our main suggestions are, sir, that to make it broad-based, we have to conduct state youth festivals now so that the best of the districts can come in.
As of now, it is basically an NSS, NYKS affair. We have to bring more youth to it, sir. We also wish that there could be artist camp, photography and short film camps, and if possible, a fashion show on ethnic costumes by involving NIFT. These are base suggestions, sir, and the rest will be shown in a PPT by my colleague. Tamil Nadu PPT, please. Honorable dignitaries on and off the dais, அனைவருக்கும் வணக்கம். Next slide. Sir, we all know that the rising aspirations and dynamic expectations of youth will also have a spillover effect on the largest youth congregation, that is National Youth Festival. So it is with this understanding that we are looking at restructuring and reimagining the National Youth Festival. And we all know the present architecture and the all-encompassing nature of the present architecture. Next. When we reimagine and relook at it, we relook at it from the perspective of intergenerational cultural spaces. When we say this, the idea is, we all know that culture is an important binding factor in our country. We also, beyond that, we also look at it as a knowledge transfer tool, particularly on the platform of National Youth Festival. When we say IGCS, what we mean is that the buzzwords that we would like to highlight here is collaboration and co-creation. Basically, across the full spectrum of the design and implementation of National Youth Festival, a youth will guide the entire exercise. That's what we mean by intergenerational cultural spaces. Next. Sir, looking at the reimagine and restructuring perspective, a few ideas that we thought we will present here is: one, the increase in number of competitive events with focus on team and group events rather than individual events, because the team and group events will bring in the element of teamwork, team spirit, and will be able to bring in larger number of participants in the entire festival. And participation in non-competitive events through district and state level selection procedures, a strict selection procedure, so that the best talent would be available at National Youth Festival. Inclusive spaces, we speak a lot on Divyang empowerment and transgender rights these days, and we strongly believe that the National Youth Festival should reflect what we speak at the national level on Divyang rights and transgender rights. We all know the kind of power that our para athletes show on the world stage. So if that could be done, why not their talent across culture and other spaces with NYF as the platform. Youth exchange is something that we feel should happen in the run-up to the National Youth Festival, so that youth from various states can visit other states, probably 1 or 2 states, partner states could be created, and then they can have a feel of what will happen at the National Youth Festival. We also believe that youth parliaments, both at National Youth Festival and taking inspiration from it at district and state levels, probably one theme could be selected every year, and the teams from the states could be encouraged to speak, as part of the National Youth Parliament. Also with an idea that it will deepen the democratic process and make them understand the importance of the democracy in this country. Themes in focus we have all discussed, but we also felt Digital India could be an important theme that we should not miss on NYF platform. Startup India's, the kind of startup power that we are seeing should be made visible on the stage. Gig economy, most of the youth in our country are part of gig economy in one way or the other, and that should be presented there. Upskilling and entrepreneurship, which is the recurrent theme that we are all talking about today, should be part of our NYF platform. And NYF compendium is what another thing that we felt about. On various thematic events, there should be a compendium co-created by the youth by the end of the National Youth Festival. Next. Next, please. So, and in the existing framework, we looked at New Generation Art Box, Canvas of Collaboration, Fusion Food, Nature Walks and Heritage Walks, and Youth Summit. Next. When we say New Generation Art Box, when we bring either competitive or non-competitive events, the idea is to focus on contemporary forms and styles of expression, particularly recognition of digital art forms and non-conventional mediums, where youth spend most of their time these days, like short films, documentaries, animation art, stand-up comedies, and digital posters. Next. Canvas of collaboration, this could be basically in the non-competitive mode, basically to create a mural made from art forms of different states, to highlight the spatial and chronological expanse of art evolution of our rich country. Also, it will stand as a symbol of unity and integration, the guiding principle of Ek Bharat and Shresth Bharat. Next. Fusion food, the guiding philosophy being integration through ingredients. That's the idea. Rather than showcasing just our cuisine, we can create a concept of fusion food where people can adopt other styles and bring in a fusion food to the food festival. Last. Next.
Nature walks and heritage walks, we do have a mindfulness session in the morning, so that could be converged with the nature walks and heritage walks with the emphasis on storytelling by the youth who come over there and tell the stories from their own regions and states. Next. Youth summit of the youth, for the youth and by the youth. Rather, the critical thing here being the shift from lecture mode to a workshop model, and suggestive themes being understanding religion in all forms, since we are commemorating Swami Vivekananda, which is an extremely important thing, upskilling and entrepreneurship, voting as a democratic right, mental health matters, which should be spoken about for this day youth, and substance abuse and gender rights. Next. Thank you, sir. Thank you so much for the presentation. Now I request a representative from Maharashtra. Thank you so much, and that will be followed by a presentation by Tripura. Thank you, sir. Respected dignitaries. May I have the presentation, please? So sorry, we are just talking about an idea, ma'am, because I have see, the whole idea here we are talking about is agriculture being the backbone of this country. Youth in agriculture need to be given a special attention. Problem with agriculture in state like Maharashtra, where agriculture is basically doing so well, we are number one in most of the exports. That is and nobody wants to be in agriculture anymore. How do we attract youth in agriculture? How do you make agriculture more attractive, more fashionable, more technology driven, where the youth can take aspiration to be an agriculturist, to be a professional in agriculture business? And that is where I think the theme should see, the point of entire having this youth festival is to inspire youth, to inspire them to do something through which they can contribute to the society, to the contribution of national development. And that is where I'm coming from. Next, please. Next, please. Around 58% of the agriculture workforce is below the age of 40. 52%, two examples, UP, Bihar, Maharashtra, more than 52% youth are engaged in agriculture. 12.9% is employment. We have a best option or a best scene where we can actually promote youth to do something in agriculture, because that's what you cannot change that number in recent years, because we have a good technological ecosystem thriving. More than 50,000 startups in India in 2021. Social entrepreneurship is also increasingly, people are now interested. Literacy rate is also rising. So this is a good ecosystem where we can actually look at it in a different way. Next, please. Maharashtra, as I said, we are highest average, GDP, 30% population is within this particular range. What we have, we are number one in production, we are number one in exports in many things. And so 22% of agri-tech startups in India belongs to Maharashtra, and out of many of those startups, they belong to in the sector of agriculture. And around 47.50% of youth workers engage in agri-allied activities. So when you talk about youth festivals, when you talk about all these things, most of the time urban or peri-urban youths are normally engaged. Now what we are saying that we must encourage, we must acknowledge efforts taken by youths in agriculture sector. We must promote those youths to do something better, and which is, which can be example for the entire country. I'm just giving you a few examples, sir. These are the case studies or the case which can inspire this particular dialogue here, and we can come up with certain ideas which can be incorporated in our youth festival. Next, please. So adopting, what are they doing? What are they doing? So we are adopting new technologies and scientific methods, mechanization, IoT-based solutions, integrated pest management systems, soil testing, etc. Government initiatives, there are definite government initiatives of financial assistance, training, marketing, etc. But most importantly, we are now looking at climate resilient smart agriculture, which is very important in terms of climate resilient technologies. This is precision farming, ICT interventions, and of course agri-startups. Agri-startups are focused in the areas such as agri-tech, farm-to-fork supply chains, and sustainable agriculture. These are the areas I think we should
concentrate on in our basic themes where you must promote these young entrepreneurs, young agriculturists who are doing something in these sectors. Next, please. Next, please. I'm just giving you a few examples. Crop subsidy initiative. This is an example could be set for the entire country. Pest in agriculture is a major disaster. Now, more than 80,000 youths in agriculture youths are engaged in this, where we are giving them a platform where they basically become partners with the government. They give lot of inputs on pest incidence, pest progression, pest infestation in various crops. The entire data is collected centrally, and then agriculture advisories are issued, and then control measures are taken. The most of the important success story is the, if you understand agriculture, in cotton, the fall armyworm is the major challenge, that the entire crop is swept away in weeks' time. For this, with this crop sap, we are now, for last 10 years, there is not a single incidence of fall armyworm in cotton. We are now doing it for 22 different crops, and most of these basically farmers are youngsters. Next, please. Sahyadri is a success story. 18,000 farmers, most of them are young farmers. They are engaged in basically developing a supply chain. It started with grape. Now they are doing vegetables, then other fruits also, where the Sahyadri is again a farmer organization, gives them inputs, scientific know-how. They give them entire end-to-end blockchain technology solution and then marketing. This has revolutionized the entire agriculture supply chain. These youths, whatever they have done needs to be acknowledged, and these kind of components should be included. Next, please. I'll just give you two and then I'll stop. Kisan Connect started with 11 youths came together, started this app. Only it was a WhatsApp group. Now it has completely transformed into an IoT-based solution company. They are using technologies. They are now gathering. They have their own pack houses, their own marketing channels, and this is complete D2C, direct to customer service initiative, which was next, please. And this is the last one. COVID Veg initiative. More than 22,000 farmer groups, mostly women, mostly young women farmers, participated in this. It started as a COVID initiative where they collected vegetable and supplied to cities, but then we realized there is huge potential in peri-urban areas also. And now it has been established, these groups are now thriving. There are more than 44,000 groups which are now engaged in supply of various food items and vegetables to urban cities. Next, please. Science Food Society, again, a very good initiative, dehydration technology for food preservation and food chain. More than 800 micro-entrepreneurs, mostly women-run, are basically engaged, and they are now catering to 18,000 different other enterprises. And again, this has become a huge kind of a business initiative among youth. So, sir, my request would be, we need to acknowledge these things. And then youth in agriculture is very neglected community. And I think if we could incorporate something in this, and we will definitely, for science and technology, would be going for Maharashtra, and we will be definitely focusing on particular youth engaged in agriculture henceforth. Thank you very much. Thank you so much for your presentation, sir. And now I request a representative from Tripura. Namaskar, sir. Dignitaries on the dais and dignitaries who are available in this august house. Basically, the restructuring of National Youth Festival is derived from the lessons learned from the 26th National Youth Festival held in Karnataka. With the Prime Minister's speech there, the can-do spirit of our Yuva Shakti. Can I go to the... Yeah, next. Spirit of Yuva Shakti inspires everyone. And there were certain other themes. Then basically the theme was that Vikshit Yuva and Vikshit Bharat, the diverse cultures on a platform, single platform. So these are all the lessons we have learned from the National Youth Festival held there earlier. Tripura is a hilly state with a composite culture of, next slide please. 19 tribes, Bengalis and Manipuri,
the Youth Affairs Department has been doing the routine activities. Apart from that, we give priority for mobilizing the youth forces towards the right direction from the lessons we learned from the National Youth Festival held last. Next. The empowering the youth via various activities actually is being emphasized so that the success stories which are being built up out of this empowering the youth can be the success stories when we go to organize the next National Youth Festival. These are creating sustainable environment. We engage the youths with the Pollution Control Board against the single-use disposables, tree plantation and other activities. Enabling youth to provide youth services, we also engage the youth in leadership building exercises. We train them. We also emphasize on imparting quality education in schools and colleges, skills and vocational education, building entrepreneurship in collaboration with various departments. Then there is emphasis on adventure sports, healthy behavior and lifestyle. We go for IC activities on HIV and AIDS, and then we also go for formation of the youth clubs, youth participation for disaster management, social welfare and training for self-defense, particularly for the women volunteers. We also engage the clubs for various other activities and protection of youth from drug abuse. For that we conduct different sports activities, street drama, seminars in 22 degree colleges in Tripura. We also focus on disabilities and youth at a risk. Then we conduct awareness by the NSS on the use of social media, because there is cyber crime. With the help of the police, cyber crime department cell, we organize those type of awareness activities so that the youths are not involved in cyber crimes also. Then we want to inculcate the youth on patriotism, harmony, national integration. Next, please. Next, please. Yeah. Then we focus on gender empowerment. And we have planned for the next 4.5 years so that we can accomplish those gender empowerment through financial assistance to female students. Then Mukhya Mantri Kanna Atmanirbhar Yojana, there will be, to the meritorious students will be given scooty. Then initiating the state talent research scheme, launching mission Atmanirbhar Mahila Prakalpa, then promoting women SHGs. Then we focus on Unnato Tripura and Shrestha Yuva in the next few years. Self-employment opportunity to the interested youths, launching Tripura Sainik Abhiyan so that they can make entry in the armed forces or police recruitment, launching of the Tripura Agni Veer program, initiating Samarth Tripura Abhiyan in financial, digital literacy and soft skills, ensuring gymnasium background in every Gram Panchayat, establishing Tripura Skill University, then Skill Development Corporation for the youths. We also want to have Chief Minister's Fellowship Program to encourage the youths so that they can become professionals. Free coaching centers for the youths, then establishing the Sachindra Burman Performing Arts Academy so that we can popularize the folk dance, music, theatre and encouraging the activities associated with them. Then we have Nasha Mukt Abhijan, which is very important because the youths are nowadays indulging in various drug abuses. Campaign is going on. We want to launch the campaign with an investment of 150 crores in the state.
integrated rehabilitation center will be set up and task force will monitor the impact of the de-addiction measures. There is a suggestion for inclusion of some indigenous games and indigenous dances like Hojagiri, Shangrai, Mamita, which are very popular in the state. So the youth are engaged in this, even at the national level, youth festival. Thank you, sir. Thank you so much, representative from Tripura. Now we have, the house is open for discussion, and we are only 5 minutes late than our schedule. So we are keeping 15 minutes for this, with the permission of chair, sir. Sir, there is a request, two things. One is if you could include the subject of idea of India 2047. So you spread the idea down to the last level. And the second thing is you are suggesting the competitive stuff should start from district. No, but you please start it from block level, yeah, because it will give a lot of spread to the subjects which you have identified. And if it goes to the block level, it will not be much difference, except that if we, like UP has to do it, we have to do it at 885 places. We will do it. But the whole subject, the idea would go down to the block level, and that is the mass involvement of the youth. And the third suggestion is that please don't limit the number of participants. Last time said 100 से ज़्यादा नहीं आएगा. अब 40-50 तो उसी में हो जाता है कल्चर प्रोग्राम में, बाकियों को कैसे भेजेगा? तो 2-4 आगे पीछे ऑप्शन होना चाहिए. Thank you. नमस्कार. नमस्कार, मैं अरूप विश्वास, मैं मिनिस्टर हूँ बंगाल गवर्नमेंट से. आई एम लुकिंग आफ्टर द यूथ एंड स्पोर्ट्स एज वेल एज द पावर एंड हाउसिंग. Respected Anurag ji, Nishtish ji. Actually, we are discussing about the National Youth Festival. मैं चाहता हूँ ये National Youth Festival emphasize on the cultural side. There is the other side we are discussing about the sports and games. It should be concentrated on the cultural side. 15 to 20 events it will be there. हमारा बंगाल में हम लोग ब्लॉक लेवल से हमारा स्टूडेंट यूथ फेस्टिवल होता है. नीतीश जी को पता होगा. ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट. तो 15-20 इवेंट होने से हम लोग वैसे ही रेडी करके जाएंगे हर स्टेट से. तब एक कंपटीशन होगा जिसमें हम लोग, इट शुड बी एक टैलेंट सर्चिंग प्रोग्राम जहां से हम लोग फ्यूचर के फ्यूचर्स को ढूंढेंगे. ये अच्छा होगा. नहीं इतना कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड इतना सब्जेक्ट हो जा रहा है, मेरे ख्याल ये ऑर्गेनाइज करने में 2 महीना में हो नहीं सकता है इतना बड़ा स्टेट में. तो बहुत सारे सब्जेक्ट, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन 15 to 20 events. Then it should be हमारे पूरा कंफर्टेबल होगा स्टेट में करने के लिए, क्योंकि इतना ब्लॉक करके, डिस्ट्रिक्ट करके, स्टेट करके, फिर आपके वहाँ जाने के लिए हमको तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है. 2 महीना इनफ नहीं है, तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए. Good afternoon, everyone. नेशनल यूथ फेस्टिवल में ज़्यादातर देखते हैं कि कल्चरल सेक्टर का ज़्यादा ये होता है. थोड़ा सा उसमें गाइड करना चाहती हूँ. हो सकता है मैं भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है. इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी ओलंपिक नॉलेज कंपटीशन. ओलंपिक नॉलेज कंपटीशन चूँकि यूथ पार्टिसिपेट करते हैं, जब ओलंपिक्स गेम होती है तो हम यूथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए. दूसरा चीज़ है कि स्पोर्ट्स कंपटीशन यूज़ कर सकते हैं, बट हम उसमें 5 इंडिजिनस स्पोर्ट्स गेम्स को यूज़ कर सकते हैं. इसलिए क्योंकि अदर कंट्री जो होते हैं इसी तरह गेम, अपना लोकल गेम को यूज़ करते हैं और उसी में से इन्वेंट करते हैं. तो हम भी, हमारे लिए भी एक स्टेज बनेगा इस तरह का 5 इंडिजिनस गेम को अगर हम लोग इसमें लाएंगे, जो लोकल इवेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी होता है, फर्स्ट टाइम 5 इवेंट ला सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होगा. तीसरा इंक्लूड कर सकते हैं डिस्कशन ऑन ओलंपिक वैल्यूज. ओलंपिक वैल्यूज मीन्स रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड एक्सीलेंट, जिसका यूथ जो परफॉर्मेंस की बात करते हैं वहाँ आती है, जिसमें कि हो सकता है
gender equity and equality in sports, doping, manipulation, or bribery or corruption, like that, good governance in sports, media in sports, like that. So ये मेरा just suggestion है. Thank you. Sir, I am Ravindran Shankaran, DG Sports Authority Bihar. My simple suggestion is, these days youth are very much active with respect to crossword puzzles. So crossword puzzle should be included. And number two is, they are more now into e-sport. So if these two can be included, that will be great, sir. Thank you. And if Bihar has given these two to be conducted, we will definitely do it. Thank you. Sir, I think we have to focus more on the training programs and this seminar. This is one. And if we want to increase the magnitude, then we have to involve the foreign exchange program. This is my two suggestions, sir. So my suggestion is more in terms of the institutionalization of the youth festival and how we can take gains from it. So like everything has an alumni network. You know, most institutions have an alumni network. If we can think of an alumni of the previous youth festival participants, their awardees, and the cross-learning between them, that is a bond which remains for a long time. So if we can think of some way of institutionalizing this. Second, so the entire organization of these youth festivals, for obvious reasons, it gets very concentrated by the government. It's run by the government, and you have a couple of youth volunteers who have been working with you for a long time. आप उनको trust करते हैं, उनसे कराते हैं. So in almost all good institutions, like if you have the IITs and you have the universities, these kind of festivals are conceptualized, designed, done by the youth themselves. So if we can, like the previous youth participants, the youth festival participants, if we can involve them in the organization also of the youth festival, and they come from various states. So this entire concept of a nation as a whole, and the organization of the festival, that itself is a very good experience in terms of both learning, in terms of capacity building, in terms of leadership development, and those bonds will remain forever. So that doesn't remain a one-off exercise, it becomes something which keeps continuing and which keeps getting added over a period of time. That is my... So Deepti, that is an excellent suggestion, and what the format we have suggested is that while the theme will be allocated today by a draw of lots, how you want to conceptualize it, what activities you choose is your baby. You want to involve some student organization to conceptualize and execute it, your baby. All we have said is that you must hold competitions at district level at least to select competitors. If Sehgal wishes to hold at block level, that is the state's outlook. हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि थीम्स यहाँ से डिसाइड होके आज ड्रॉ ऑफ लॉट्स में एलोकेट होगी. उसका आपको कंसेप्ट क्या करना है आप देखिए. मैम मेरा कहना कुछ थोड़ा सा इससे भिन्न था. ये तो हम लोग जो करेंगे अपने स्टेट पे तो करेंगे. मेरा कहना था कि अगर हम इसको नेशनल यूथ फेस्टिवल का लेबल दे रहे हैं, so that the national part of it in terms of thing that can be better accentuated, better strengthened if we think of a mechanism like this. It's something which is open for suggestion and discussion. It's just a suggestion. And the second was very small thing is my feedback on the second aspect, which is regarding the life skill component. If that right now, the way it is structured in terms of the poster making and the storytelling and all that, if that can be slightly changed in terms of a little more of the contemplative and reflective experiences, which become very useful things which these children take back. Otherwise, again, it becomes a comparative exercise rather than, there's no life skill which you're actually developing through that particular module. You can't do it in 3 days or 4 days time. So if that we can have some, there are people who work on this, and we have our own organizations who work on that. So if that can be just a little bit thought about, so that actually you go back with some particular. Thank you, sir. Good afternoon. This is Mulle Mihilan from Karnataka, sir. Our suggestion is that the National Youth Festival can become a all throughout the year program, probably enabled by the portal, which can have all these events and competitions right from the block level to the top can be captured through those
portals and also discussion forums can be enabled in that portal where continuously there is discussion and everything. And we had this youth summit and Suvichar where experts or achievers from specific fields were brought to interact with youth who are participating in the NYF. If youth can select their area of interest, people who are already working in a particular area of interest and who have participated in things like that, if they are brought in, then probably they can take back a new inspiration and they can have specific interaction with those achievers in the field. And particularly for areas like Digital India and startups and entrepreneurship and all that, problem statements from public sector can be thrown out to the youth right at the beginning itself. And students and startups, they can actually find solutions and they can come there. And even you can bring in, make it as a platform where venture capitalists, startups, achievers can come and they also interact with them. The third and last point is, sir, particularly for areas like adventure sports, yoga, and indigenous games, we can go from a demo mode to a workshop mode, and the outcome could be a certificate. So it's possible, sir, for an adventure sport or this thing. So I go to a National Youth Festival with a specific purpose, and I actually come back with a skill which I learn in that particular 3 to 5 days. Thank you, sir. Sir, my suggestion is regarding organization, not about restructuring, sir. Sir, I'm Raju Basnet, Secretary Sports from Sikkim, sir. सर ये रिसेंटली कंक्लूडेड जो कर्नाटक में यूथ फेस्टिवल हुआ सर, वहाँ से एब्रप्टली TADA देना बंद कर दिया सर स्टेट्स कंटिजेंट को. एंड नेक्स्ट थिंग इज ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सर, वेन्यू लास्ट मिनट तक फिक्स नहीं होता है सर. सो फॉर अस हु कम्यूट फ्रॉम स्टेट्स लाइक सिक्किम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेंड अ कंटिजेंट. वहाँ लास्ट टाइम ऑल्सो वी हैड टू बुक एंटायर बोगी एंड देन गेट इट अटैच टू सम ट्रेन विच वॉज सो डिफिकल्ट टू गेट दैट वी ऑलमोस्ट हैड टू knock every door at the center and the ministry everywhere. So I request if the venue can be fixed at least 3 or 4 months in advance, and then the TADA could be given to the state contingents. Thank you, sir. Right. I am from Chhattisgarh. Sir, I would like to suggest, if possible, we can include different segment of bhajan gayak for youth, bhajan gayaki, and then ghazal gayaki, and then I would second, e-sports is a massive sport now. Youth are playing, and globally it is played. It is into Asian Games also introduced, and we have won medals also. So you know much about sports. These three are our suggestions, sir. Sir, we have been defining youth on the basis of age. So what I was thinking is, sir, Farooq Alam, Assam, sir. सबके आगे उनकी स्टेट का एक प्लेकार्ड रख दीजिए ताकि सिर्फ उठा के बता दें तो मुझे स्टेट का नाम पता चल जाएगा, मैं स्टेट का नाम दूंगा. So I was just thinking few minutes back, so why not define youth? We can give a tag word or a tag sentence to each of the letters of the word youth. For example, Y can be young mind, O can be open to ideas, U can be united, we stand, T is thoughtful, H is hardworking, something like that. That definition from the ministry, if it comes, that will be good, sir. And the second thing regarding the life skill thing, story writing and also we can have a compilation after the event is over, so that they get the writers, they get one recognition also. So photographs also, we can have one album also, we can send it to their schools or colleges or universities and to the concerning participant also, sir. Thank you, sir. Namaskar, sir. I'm Vikramaditya Singh from Himachal Pradesh, Minister for Youth Services and Sports. Honorable Anurag ji and all esteemed members present here. It is an honor for me to be present here and representing my state. आज जो ये National Youth Festival पे जो annual event है, a lot of things have been spoken in terms of culture, lifestyle and
thematic and Yuva Kirti, but something that I think needs to be dwelt upon is the climatic changes and the global warming that is happening, and we are a signatory to the Green Initiative as a state also and a nation also. Something in that regard should also be harped upon, which I believe will help the coming generations to make them more aware about the climatic changes that are happening in the state. So whatever different things in terms of what I was seeing in Maharashtra, short films and documentaries being done, and in natural heritage walks and different things are being done, and also the production of different seeds and millets and jowar in different areas. But what I want to harp upon, जिस पे मैं अपना emphasis देना चाहता हूँ कि it should be done in consonance with global warming. That is something that needs to be harped upon, and maybe that also can be brought in at some sphere. Thank you. Sir, as a precursor to the youth festival, and can we think of creating youth icons which can be recognized at that platform through kind of some challenges which can be precursor to the event, starting right way, like some kind of fitness challenge, some kind of a community service challenge, those kind of challenges which can be created right now, 8-10 challenges, and those 8-10 icons can be then felicitated at the final event, those who meet up those challenges or come first on those challenges, sir. Sir, secondly, sir had mentioned about the duties part rather than the rights part. So we have, for example, sir, we have so many apps on the gaming, speed breakers, and but we don't have any single app which is telling about the best scoring according to what is a good driving, what is a good law following. So can we have app, development of app on the experiential learning and following the law through experiential learning, how to drive on a street rather than doing the speed driving, whether you're meeting up the points with a good driver, with a good. So this is one example. There can be on the other side, the sustainability, on the green side, how do you do the sustainable living? So that experiential learning through the apps, but on the positive side, not on the negative side, like the speed driving or something. So this is the two suggestions, sir. नमस्कार सर, मैं सीताराम लांबा राजस्थान से हूँ। सर बहुत अच्छे सजेशन आए, और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ जो तमिलनाडु की पीपीटी है उसमें बहुत ही पावरफुल सजेशंस हैं, और स्पेशली जैसे कि शॉर्ट फिल्म मेकिंग, और इनको भी जगह दी जाए ताकि जो युवा इस समय जिस फील्ड में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं वहाँ पर उनको जगह मिल पाए। दूसरा सर, मेरा एक सजेशन है कि जो हमारा यूथ फेस्टिवल्स में यूथ अवार्डीज़ जो हम लोग देते हैं, यूथ अवार्ड्स, उनको उसके बाद कोई हम फैसिलिटी नहीं देते, तो जिस तरह से नेशनल में जो हमारे प्लेयर्स को हम लोग पैसा भी देते हैं, उनको आगे फैसिलिटेट भी करते हैं, उनको आगे बढ़ने के मौके देते हैं, वैसे ही हमें हमारे यूथ अवार्डीज़ को भी मौके देने चाहिए। और उसमें थोड़ा सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोऑर्डिनेशंस है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर सर एक कोऑर्डिनेशन ज़रूर होना चाहिए। और एक जो यूथ हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल है उसमें हम चाहते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि नीचे स्टेट में ज़िले में कंपटीशन हो, स्टेट में कंपटीशन, देन वो आए, बट स्टेट में इतने पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए फंड्स नहीं होते, तो हम ऊपर तो फंड्स लगाते हैं पर नीचे हम लोग फंड्स देते नहीं हैं। तो थोड़ा अगर स्टेट्स में इसके लिए हम देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टेट भी काम कर पाएंगे और अच्छी प्रतिभाएं निकल कर अलग अलग क्षेत्रों से आगे आएंगी। थैंक यू सर। तो दैट सर, म्यूज़िक को लेके मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ गज़ल या भजन सिंगिंग, बट इवन द मोर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक विच एंगेज द यूथ अ लॉट मोर, इंक्लूडिंग मतलब यू नो maybe more Western forms of music, they should also be included in the festival, because I definitely think that will increase the interest and participation.
Similarly, sir, the other current obsession of our youth is social media. तो सोशल मीडिया पे आधारित अगर कुछ कॉम्पिटिशन्स यूथ फेस्टिवल में रखे जाएं या कुछ इवेंट्स रखे जाएं लाइक अ टिकटॉक कॉम्पिटिशन और समथिंग लाइक दैट, परहैप्स दैट वुड आल्सो इंक्रीज द इंटरेस्ट लेवल एंड पार्टिसिपेशन इन द यूथ फेस्टिवल्स. Good afternoon, sir. This is Vasim Raja, Additional Secretary, Youth Service and Sport, J&K. I have a couple of suggestions, sir. The first one is that we must have a tagline and then go for a strong pre-event publicity of the youth festival so that it creates a level of inquisitiveness among the youth beforehand. Then we must also look at the takeaways of the event, sir. I believe that the youth in the tribal areas, they need special sessions of capacity building in these festivals so that they are able to earn their livelihood. For example, if somebody wants to set up a small adventure hire equipment shop, he must know what to do about that and what are the government schemes that would help him in that. So similarly, there are so many youth who are innovators and who have developed and who have invented a lot of gadgets. They need to be provided a platform in these youth festivals, sir. Thank you. Thank you, sir. Now there will be drawing of lots for the assignment of themes for organizing events to different states and union territories for the 27th Youth Festival to be organized in January 2024. I request the team from Department of Youth Affairs to undertake the exercise immediately. ये यूथ फेस्टिवल को लेके ड्रॉ ऑफ लॉट्स. Yes, sir. Lots. Theme थीम allocation. देने वाले. थोड़ा स्पीड पकड़ो भाई. एक ही है बस. Meanwhile, I will like to announce that we have set up a BMI center near the registration counter. All the delegates who are interested can get their BMI done and even download the Fit India app.
Now we break for lunch. I request all the delegates to join for the lunch on the ground floor in the convention center. Honorable ministers and the delegates joining them on the dining table for discussion may please proceed upstairs. We shall meet after 45 minutes at 2:45 p.m. Thank you. हर स्टेट का एक ऑफिसर को नियुक्त करो कोऑर्डिनेशन के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल उनका स्टेट का रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ऐसा है, राज्य के कम से कम 15-20 लोग ऐसे लगाओ जो अलग अलग राज्यों के साथ लगे हुए, एक व्यक्ति के जिम्मे 2-2 स्टेट तो कहाँ पे मीटिंग शुरू करनी है? ऐसी स्पीड से चलेगा तो कैसे होगा? आत्मन जरा जाके सब लोग रिक्वेस्ट करके बुलाओ सबको, ऑफिसर्स को, तो 7 बजे तक खत्म नहीं हो पाएंगे पैसे। I request all the delegates to be seated quickly, please. Sir, we may start, sir. पंजाब से कोई है? पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु? Tamil is also missing. Himachal is present, Assam is present, Bihar is there, Tripura, UP, Uttarakhand is there, West Bengal भी है, लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन भी है। चंडीगढ़ से डॉक्टर धर्मपाल जी कहाँ हैं? Kerala representatives, anyone is here? आपकी नेम प्लेट गलत लगी है। विक्रम जी आपको इधर आना पड़ेगा अगले वाले पे। Yours is next. Next is yours. नहीं, ये आपका वही है। आप नेक्स्ट सीट पे आ जाइए। ये केरला की सीट है। केरला? So we can start now, I think.
Can you close the doors? And can someone communicate outside that please move from here if they want to speak? Welcome back, everyone. Now we start our third session on overview of Khelo India and other schemes of Government of India for the boost in sports field. I invite Srimati Ekta Vishnoi, Deputy Director General, Sports Authority of India, for the presentation, please. Honorable dignitaries on the dais and off the dais, आप सभी को मेरा नमस्कार। खेलो इंडिया की इस प्रेजेंटेशन में आज हम देखेंगे कि यह स्कीम जिसका कि एम मास पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स के साथ साथ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स भी है, किस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, साथ ही प्राइवेट एकेडमीज को भी सपोर्ट करती है और उसके साथ बडिंग एंड टैलेंटेड एथलीट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एक कंपटीशन प्लेटफॉर्म देती है और उनके हाई क्वालिटी ट्रेनिंग देने का भी प्रयास करती है। As you can see, this scheme was notified on October 2017 with an outlay of 1756 crore and it was revamped and extended till 25-26 at an outlay of 3165 crores. At present, it has 5 verticals. First is creation and upgradation of sports infrastructure, in which financial support is given for sports infrastructure. Second is sports competition and talent development, जिसके तहत खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, साथ ही टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उन्हें डेवलप और नर्चर किया जाता है। थर्ड है खेलो इंडिया सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स अकेडमीज, जिसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि जो राज्यों का और प्राइवेट का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके तहत हम कैसे अपना एथलीट्स को स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे सकें। फोर्थ है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसमें हम सभी नागरिकों को एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के लिए एनकरेज करते हैं। और लास्ट है प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिवनेस थ्रू स्पोर्ट्स, जिसमें न सिर्फ रूरल और इंडिजिनस गेम्स को प्रमोट किया जाता है, बल्कि डिसेबिलिटी के लोगों के बीच, वुमेन के बीच, उन सभी को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज किया जाता है। तो फर्स्ट, क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका स्टेटस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अभी तक 293 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें से 130 प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड 163 प्रोजेक्ट्स आर अंडर प्रोग्रेस। इसके बारे में राज्यों के कोई भी सुझाव या कंसर्न है तो हम लोग ओपन सेशन में उस पर चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्टिकल है स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। खेलो इंडिया गेम्स की अगर हम बात करें तो इससे हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारे इंडियन एथलीट्स हैं, जब वो कभी भी एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पे वो जिस तरह का माहौल देखते हैं, जिस तरह का कंपटीशन एक्सपोजर देखते हैं, जिस तरह का इंटरनेशनल लेवल ऑफ टेक्निकल कंडक्ट देखते हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज और सुविधाएं उन्हें वहां मिलती हैं, वही सब सुविधाएं, वैसा माहौल हम डोमेस्टिक एक्सपोजर में अपने एथलीट्स को यहाँ इंडिया में दें। साथ ही जब इस तरह के गेम्स से इतने बड़े मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो एथलीट्स को स्पोर्ट्स से जुड़े रहने की एक एस्पिरेशन भी रहती है। इसके साथ ही हमारा ये भी इसका मकसद होता है कि हम वेरियस स्टेक होल्डर्स की एक मेगा स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। एक समय था जब कोई भी एक मेगा स्पोर्टिंग इवेंट हो, चाहे हम कॉमनवेल्थ लें या साउथ एशियन गेम्स लें, उसकी तैयारी में हमें वर्षों लग जाते थे, परंतु आज उसी तरह के एक बड़े नेशनल लेवल पे मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स को हम राज्य सरकार की मदद से साल में 2 संस्करण का खेलो इंडिया का आयोजन करते हैं। अभी तक 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स और 2 यूनिवर्सिटी गेम आयोजन हो चुके हैं, जिसमें 30,000 से ज्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जब किसी भी राज्य में खेलो इंडिया गेम्स होस्ट होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो वहां पे पूरे राज्य में एक फेस्टिव माहौल रहता है और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है राज्यों को अपने सिटीजन से एंगेज करने के लिए। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए यूथ गेम्स में हमने देखा कि कैसे उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में टॉर्च रिले किए, जगह जगह पब्लिक प्लेसेस में, टूरिस्ट प्लेसेस पे उन्होंने मैस्केट टूर किए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को एंथम के डांस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया। इस तरह से कैसे उन्होंने राज्य में पूरी अपनी पब्लिक को, सिटीजन्स को एंगेज किया।
जब कोई भी इस तरह का गेम होता है तो जो वहाँ के अन्य एथलीट और वहाँ जब स्पेक्टेटर्स उस गेम को देखते हैं, उस क्वालिटी के गेम को देखते हैं, तो उनको भी उस तरह से देख के उस पूरे राज्य में वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोशन मिलता है। इस खेलो इंडिया गेम्स में इनमें पूरे 36 राज्यों से एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। यही नहीं, सिर्फ इसमें इसका जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स पर भी आता है, साथ ही ओटीटी पर भी इसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो ये एक राज्यों के लिए अवसर होता है कि अपने आर्ट को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने इतिहास को न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इन सभी प्लेटफॉर्म्स और एथलीट्स के द्वारा हम शोकेस कर सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग की हमने जस्ट अभी बात की, और जिस भी स्टेट में खेलो इंडिया गेम्स होता है उसको वहां पे पार्टिसिपेशन के लिए अपॉर्चुनिटी उसके एथलीट्स को ज्यादा रहती है, जिससे उसकी मेडल टैली में भी इंप्रूवमेंट होता है। समर ओलंपिक्स की तरह आप सभी जानते हैं कि विंटर ओलंपिक्स का भी आयोजन किया जाता है, इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम अपने देश में विंटर स्पोर्ट्स जैसे कि आइस हॉकी, स्कीइंग आदि को भी प्रमोट करें। इसी के तहत अभी तक 3 एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स के हो चुके हैं और तीसरा एडिशन अभी जस्ट हाल ही में 10 से 14 फरवरी में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। इससे न सिर्फ हम एक नेशनल लेवल पे विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, बल्कि उन सभी हिमालयन राज्यों के लिए ये जहां पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं इस गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके लिए अपने राज्य में टूरिज्म प्रमोट करने का भी एक बहुत ही ये अच्छा अवसर होता है। इसी के तहत अगर हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें, सो खेलो इंडिया स्कीम के तहत हम लोग बडिंग एथलीट्स को जो एक लेवल नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं, जो नेशनल चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अदर चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सो वहां से टैलेंटेड और बडिंग एथलीट्स को टैलेंट स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमिटी द्वारा रिकमेंडेशन होके वो हाई पावर कमिटी के द्वारा खेलो इंडिया को एथलीट्स को करके नोटिफाई किया जाता है। जब वो कोई भी खेलो इंडिया एथलीट्स नोटिफाई कर लिए जाते हैं तो वो किसी भी खेलो इंडिया की मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेड एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसको खेलो इंडिया के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। आज की तारीख में हमारे 2550 से ज्यादा खेलो इंडिया एथलीट्स नोटिफाई हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा कि खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज का हमारा मकसद ये है कि जो हमारे खेलो इंडिया एथलीट यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें हम हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दें विद साइंटिफिक सपोर्ट एंड न्यूट्रिशनल डाइट, ताकि वो जो नेक्स्ट लेवल पे जब वो यहाँ एक नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं और उसको नेक्स्ट लेवल पे जाने का जो हम सपोर्ट दे सकते हैं वो इनके थ्रू हम उन्हें दे सकें। ये खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज स्टेट रन एकेडमीज भी हो सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, ये साई की एकेडमीज भी हैं और प्राइवेट एकेडमीज भी हैं। ये नंबर्स आप देख सकते हैं कि स्टेट रन एकेडमीज हमारे पास 15 है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी की 72 है और अदर प्राइवेट एकेडमीज जिसके कुछ एग्जांपल्स आप नीचे देख सकते हैं, जैसे उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स, JSW का इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन एकेडमी एंड टाटा आर्चरी एकेडमी। इन सभी को खेलो इंडिया एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस स्कीम के तहत फंडिंग की जाती है। क्या फाइनेंशियल सपोर्ट होता है? तो इस एकेडमीज में जितने भी खेलो इंडिया एथलीट्स ट्रेन करते हैं, पर एथलीट पर ईयर 5 लाख का सपोर्ट उस एकेडमी को दिया जाता है, जिसमें उनका लॉजिंग, बोर्डिंग, स्पोर्ट्स किट, कंपटीशन एक्सपोजर आदि सब कवर होता है। यही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग खेलो इंडिया एथलीट्स को 10,000 रुपए पर महीना पर मंथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा उनके बैंक अकाउंट में आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस की तरह से भी ट्रांसफर करते हैं। ये कुछ इसकी स्कीम की सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं। 112 खेलो इंडिया एथलीट्स ऐसे हैं जो इस खेलो इंडिया स्कीम से नेक्स्ट एलीट लेवल, उनको हाई क्वालिटी ट्रेनिंग विद साइंटिफिक सपोर्ट के साथ नेक्स्ट लेवल टारगेट पोडियम, ओलंपिक पोडियम स्कीम में प्रोग्रेस कर चुके हैं। नीतू घंगस जो कि अभी जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, उसको भी एक खेलो इंडिया एथलीट 2018 में आइडेंटिफाई किया गया था। और इसी तरह से जो शूटिंग एकेडमी मध्य प्रदेश की है, उसमें भी 11 खेलो इंडिया एथलीट्स ट्रेन कर रहे हैं और उसमें से मनीषा कीर ने अभी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो आप सभी राज्यों से ये अनुरोध है कि आपकी जो भी स्टेट रन अच्छी एकेडमीज हैं उनको यहाँ खेलो इंडिया के तहत एक्रेडिटेशन कराएं।
साथ ही अपने राज्य की प्राइवेट एकेडमीज को भी इसके लिए एनकरेज करें और आप अपने राज्य में अपनी एकेडमीज को प्रोत्साहित करने के लिए इस मॉडल के ऊपर ऐसा मॉडल आप भी ला सकते हैं। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स अकेडमीज। सो खेलो इंडिया सेंटर की अगर हम बात करें तो ये हमारे माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर जी का एक विजन है कि हम जल्दी ही पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर ओपन करें, जिसके तहत हम लोग पास चैंपियन के माध्यम से ग्रास रूट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे सकें। एज ऑन डेट हमने 946 खेलो इंडिया सेंटर्स को नोटिफाई किया गया है, जिसमें से 512 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑपरेशनल हैं और 517 पास चैंपियन एथलीट्स को रोजगार मिल चुका है। इसमें इनमें फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत 5 लाख रुपए वन टाइम ग्रांट दी जाती है और 5 लाख रुपए हर साल पास चैंपियन की सैलरी और कंज्यूमेबल्स के लिए दिया जाता है। जब किसी भी राज्य में खेलो इंडिया सेंटर्स फंक्शनल हो जाते हैं तो उससे ना सिर्फ राज्य अपने जो एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकता है, बल्कि ये एक उनके लिए एक अच्छा अवसर होता है कि जो भी उसके राज्य में स्पोर्ट्स के पास चैंपियन रह चुके हैं उनको एक रोजगार का अवसर मिले, अपने ही राज्य में उनको एक रेस्पेक्टफुल एक जीविका कमाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब वो एक कोच और मेंटर बनकर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग अपने राज्य में अपने डिस्ट्रिक्ट्स में एथलीट्स को देते हैं तो पूरे राज्य में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को डेवलप करने में उसमें मदद मिलती है। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये एक बेस्ट सेंटर होता है हर स्टेट का। जैसे खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लेकिन खेलो इंडिया सेंटर ये एक पूरे स्टेट में एक बेस्ट सेंटर को खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाता है। वन स्टेट वन गेम में सभी स्टेट्स ने 3 प्रायोरिटी डिसिप्लिन्स का चयन किया है। सो उसमें वहां उसकी ट्रेनिंग के लिए जहां पे भी जो गैप है उस सेंटर में, चाहे वो सॉफ्ट सपोर्ट हो, जिस तरह से आप स्किल्ड मैन पावर लेना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट्स साइंस की मैन पावर लेना चाह रहे हैं या फिर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस स्कीम के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। अभी तक हमारे 31 खेलो इंडिया सेंटर 30 स्टेट्स एंड यूटीज में काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा ये सबसे एक बेस्ट स्पोर्टिंग फैसिलिटी होती है स्टेट की, और इस तरह के सपोर्ट से न सिर्फ राज्य अपने उस सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जिसमें वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ला सकते हैं, बल्कि हाई परफॉर्मेंस मैनेजर्स, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स ला सकते हैं, जिससे स्पोर्ट्स साइंस के तहत आपका जो एक सेंटर है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है और वहां पे आपके राज्य में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ऑफ एथलीट्स स्टार्ट हो सकती है। 4th वर्टिकल की बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की। इसका लॉन्च हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त 2019 को किया था और उनका जो क्लैरियन कॉल है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मतलब हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना ही चाहिए। सो हम इस मैसेज को विभिन्न कार्यक्रमों और कैंपेन के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी के तहत फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि बाहर आपका BMI चेक हो रहा है, तो उसके में आप ना सिर्फ अपना एक्टिविटी चेक कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, बल्कि आप उसमें कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी पा सकते हैं, साथ साथ अपना फिटनेस स्कोर जान सकते हैं। इसी के साथ साथ फिट इंडिया का मैसेज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ फिट इंडिया आइकन्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी नियुक्त किया गया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन और फिट इंडिया साइक्लोथॉन जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन सभी राज्यों से के साथ मिलकर किया जाता है और इसमें अभी तक करोड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्कूल के बच्चों में फिटनेस की आदत शुरू से डालने के लिए ही हमने फिट इंडिया क्विज और फिट इंडिया स्कूल वीक जैसे प्रोग्राम्स आयोजन किए जाते हैं। जब किसी भी राज्य में फिट इंडिया के कार्यक्रम होते हैं, वो कैंपेन करते हैं, लोगों को जुड़ते हैं, तो उससे उस राज्य के मासेस से कनेक्शन करने का एक अवसर मिलता है, सोशल कोहिजन आता है। और जब किसी भी राज्य के जब लोग हैं जो वो स्वस्थ होंगे तो उस राज्य पे डिजीज का बर्डन कम रहेगा, उसकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ साथ जिससे उसके इकोनॉमिक ग्रोथ होने में भी उसमें मदद मिलती है। हमारा लास्ट वर्टिकल है प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिवनेस थ्रू स्पोर्ट्स, जिसमें हम बात करेंगे एम्पावरिंग वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स।
चाहे कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन लें, हमारे देश की बेटियों ने हर जगह मेडल जीत के हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। तो सिर्फ इसीलिए नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स में जब हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक विमेन एथलीट्स में जो हम जनरली देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट रहता है, तो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने से वो ड्रॉप आउट रेट काफी कम होता है। साथ ही स्पोर्ट्स जो है वो हमारी बेटियों को एक तरह की सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जो कि किसी भी उसके जिंदगी के और पहलुओं में भी सफल होने में मदद करता है। अभी हम देखें तो खेलो इंडिया की लास्ट ईयर 50 सिटीज में विमेन्स लीग्स और कंपटीशन हुए, 279 कंपटीशन हो चुके हैं, जिसमें 23,000 से ज्यादा विमेन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसी के तहत हमारा अगला अभी मार्च ही में हुआ इनिशिएटिव रहा है, जिसका नाम है 10 कदम, जिसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और जिसमें मध्य प्रदेश में 30,000 से ज्यादा विमेन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसी के साथ ये थी खेलो इंडिया की कुछ वर्टिकल्स की जानकारी, और हम अब इस प्रेजेंटेशन को इस एवी के साथ समाप्त करते हैं। एवी प्लीज। खेलो इंडिया ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है। मैं प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। First ever edition of Khelo India University Games. I declare the Khelo India University Games 2021 Bangalore open. आप लोग प्लेग्राउंड से ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचने के लिए जाएं, इसीलिए खेलो इंडिया का ये कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Now we will have 3 presentations. First of all, I will like to invite Shri Ravi Kumar Gupta ji, Director General Sports Authority, Madhya Pradesh, for the presentation. ये सारी presentations share भी कर दी जाएं सब states के साथ, बाद में कर देना। Sir, we are sharing, sir. नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। जो भी मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया उसका फील्ड में क्या हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में मेरा प्रेजेंटेशन है। स्टार्ट कर दीजिए।
सर नेक्स्ट जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 3 है और इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि सभी स्टेट को 1 दिए हैं, मध्य प्रदेश को 3 दिए हैं। हमारा जो सेंटर है ऑफ एक्सीलेंस है ये शूटिंग, हॉकी और रोइंग में है। जो ग्रांट हमें दी गई है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय समय पे टाइम से भेज रहे हैं और जो पैसे का सेंट्रल गवर्नमेंट का उपयोग है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से हम कर रहे हैं, किसी भी तरह से उसमें कहीं भी कोई दुरुपयोग की कोई हम लोग संभावना नहीं रखते हैं। इसमें जो फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैकअप है और स्टेट गवर्नमेंट का बैकअप है वो अलग अलग लिखा हुआ है और हमें एनुअली 3.5 CR 1 साल का रेकरिंग ग्रांट मिलता है। नेक्स्ट सर, इसमें जो सजेशन है कि चूंकि अब मध्य प्रदेश खेलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी आगे बढ़ गया है, मेरा इसमें ये सजेशन है कि अभी आपने 3 दिए हैं, अगर आपको लगता है कि और भी हमारे जो सेंटर हैं वो एक्सीलेंस सेंटर पे काम कर सकते हैं तो मेरा ये कहना है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का और बेटर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो हम यूसी भेजते हैं, जो पैसा आता है जनरली यूसी सेटलमेंट में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, अगर ये 1 महीना कर दिया जाए, इसमें बाकी जगह तो दिक्कत नहीं है लेकिन जो कोच की सैलरी है, कई बार हम लोगों पे चूंकि हमारे यहाँ ट्रेजरी से पेमेंट होता है तो हमारे पास बैंक में इतना पैसा होता नहीं है कि हम कोचेस की सैलरी हर महीने एडवांस में दे सकें। तो अगर कुछ पैसा हमें खासतौर से कोच की सैलरी के लिए मिल जाए या यूसी जल्दी सेटल हो जाए तो हमारा उसमें कोचेस की सैलरी हम टाइम से दे पाएंगे। तीसरा, हम लोगों को सर कोचेस और जो स्पोर्ट्स साइंस के एक्सपर्ट हैं उनको हायरिंग में दिक्कत आ रही है। पूरे हिंदुस्तान में कोचेस की बहुत कमी है और खासतौर से जो एक्सीलेंस सेंटर है उनमें तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर कोई सेंट्रल लेवल पे कोई डेटाबेस अगर इसका तैयार हो जाए, जिस डेटाबेस से हम उस पर्टिकुलर विधा के कोचेज और स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट हैं उनसे हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें और उनको ये कह सकें कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे यहाँ आके वो कोचिंग कर सकते हैं सर। चौथा, हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्योंकि कोच मिलते नहीं है, हमें बार बार एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ती है, तो चूंकि अगर डेटाबेस बन जाएगा तो हमें इसमें मदद मिल जाएगी सर। कुछ इसमें चूंकि इनोवेशन की भी बात थी तो कुछ इनोवेशन जो हम लोग कर रहे हैं और जिसमें हमें आपका मार्गदर्शन की भी जरूरत होगी सर। अगर जैसे आप देखें शूटिंग में, तो शूटिंग में अभी हमने रिसेंटली वर्ल्ड कप का आयोजन किया था सर और हम 1 मई से रसिया की जो टीम है, करीब 41 हमारे पास प्लेयर्स यहाँ पे शूटिंग के लिए आ रहे हैं सर। अब जो हमने डिसाइड किया है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके प्लेयर्स को हम लोग यहाँ बुलाएंगे और उनसे जो रेंज की फीस है उसको चार्ज करेंगे, वो हमारे कोचेस को भी ट्रेनिंग देंगे और साथ में हमारे बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलेंगे तो एक एक्सपोजर भी ज़्यादा मिल पाएगा सर। ये एक्सपेरिमेंट हम पहली बार करने जा रहे हैं सर। दूसरा, जो हमारा एक्सीलेंस सेंटर है हॉकी, इसमें हम कजाकिस्तान की टीम को मई में बुला रहे हैं और कजाकिस्तान की टीम भी हमारे साथ रहेगी, हमारे बच्चों को ट्रेन भी करेगी और हमारे बच्चों को वो करेगी। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं अगर वो हमारे साथ MOU कर लें या कोई सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बन जाए कि जिससे हम डिफरेंट कंट्रीज को अप्रोच करें, इससे हमें अर्निंग भी होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट यूटिलाइजेशन भी होगा और जो वहाँ के कोचेज और जो उनके प्लेयर्स आएंगे उनसे हमारे कोचेज और हमारे बच्चों को बहुत सीखने को मिलेगा सर। इसमें एक रिक्वेस्ट और था सर, जो अभी एक्सीलेंस सेंटर है इसमें कोचेज की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, जो आज की स्थिति में बहुत कम है सर। तो मेरा ये सुझाव है सर, इस पे थोड़ा विचार करके अगर ये सैलरी बढ़ सके। प्लस चूंकि आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो फॉरेन कोचिंग के लिए भी हम लोग कोचेस को बुलाते हैं सर, तो उसमें अगर हमें फॉरेन कोचेस के लिए कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ नहीं साल में अगर हमें 4 बार फॉरेन कोच को बुलाना हो, कुछ अगर उसमें फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे। इसमें जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग 20% मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चों को भी एडमिशन देते हैं, तो अगर ये दूसरी स्टेट भी इस चीज को अगर अपने उसमें डाल ले तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि यहाँ मणिपुर के नीलकांता, जिन्होंने ओलंपिक टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है सर, वो हमारी हॉकी एकेडमी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उससे उन्होंने ट्रेनिंग पाई थी और मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपए कैश का इनाम भी दिया था सर। तो ये और इसी तरह हमारी एकेडमी में जो 20% कोटा है, यहाँ जो मणिपुर के स्पोर्ट्स के अधिकारी होंगे, हमारे यहाँ मणिपुर के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप देखेंगे तो हमारी एकेडमीज में नॉर्थ ईस्ट का एक अलग ही माहौल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ये फायदा है कि हम दूसरी स्टेट के लोगों को भी यहाँ बुला सकते हैं। इसी तरह जो अभी मैंने देखा, जो हमारे पिछली मीटिंग हुई, जो हमारे काउंटर पार्ट्स दूसरे स्टेट से आए थे, खासतौर से बिहार, केरला,
इन्होंने अपने बच्चों को हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा, हम लोगों ने इनके बच्चों को ट्रेनिंग दी और इन बच्चों ने नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता, सभी गेमों में अच्छा परफॉर्म किया। तो जो हमारा सेटअप है, अगर हम चाहें तो डिफरेंट स्टेट उसको कैसे यूज कर सकते हैं सर, इस पे भी हम लोग फ्यूचर में बात कर सकते हैं सर। मेरा ये कहना है मिनिमम फीस दे के आ जाएं या हम उनको हॉस्टल फैसिलिटी, डॉर्मेटरीज हम सब प्रोवाइड करते हैं। अभी ये जो मुझे जानते हैं उनसे टाई अप होकर हम लोग उनके बच्चों को भेज देते हैं, वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनके बच्चों को ट्रेनिंग। अगर ये एक सेंट्रल लेवल पे अगर इसका कुछ हो जाए तो उससे क्या है, सभी स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने में और आसानी होगी सर। सर जैसा मुझे तो लग रहा है ये स्कीम आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी जो कागज है उसमें 4 साल लिखा हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा सर ये स्कीम इतनी अच्छी है, इसका एक्सटेंशन आगे भी किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है अगले साल सर ये जो स्कीम है ये 4 साल के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट 4 साल के बाद भी मिलता रहे स्टेट गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जैसा आपने पैरा में बात किया सर, हम लोग अभी मध्य प्रदेश में पैरा के लिए पॉलिसी भी बना रहे हैं और हमने एक एक्सपेरिमेंट इसमें भी किया है, जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, रोइंग में भी, शूटिंग में भी, हम लोगों ने पैरा एथलीट्स को भी एडमिशन दिया है सर। और हमारे पैरा एथलीट्स है रूबिका फ्रांसिस और प्राची ने, उन्होंने ओलंपिक में मेडल भी जीते और हम लोगों ने इन फैसिलिटीज को पैरा के हिसाब से बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया है। अभी चूंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किया है, अब हम इस साल इसको रेगुलर बेसिस पे करना चाह रहे हैं, तो जैसा आपकी मंशा है कि पैरा एथलीट्स को भी हम तैयारी करा सकें, इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम पैरा के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं, तो उसकी हम पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं, 1-2 महीने में उसको हम लॉन्च कर देंगे सर। नेक्स्ट, ये खेलो इंडिया सेंटर हमारे यहाँ 52 डिस्ट्रिक्ट्स में से 49 जगह हैं, जिसमें से 31 सेंटर ऑपरेशनल हैं और करीब 1100 एथलीट्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, इसमें भी मेरे जो खेलो इंडिया सेंटर के रनिंग में जो कुछ सुझाव हैं वो सर ये हैं सर, चूंकि अगर आपने देखा हो हमारे पास कोचेज नहीं मिल रहे हैं, हम बार बार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो कोचेज हमारे को खेलो इंडिया सेंटर रन करने के लिए नहीं है, तो उसमें 2 सजेशन है। एक तो कोचेज की सैलरी अभी 25,000 रुपए है सर, इसको 25,000 से बढ़ा के अगर 40 या जो भी आप ठीक समझे सर कर दें तो हमें कोचेज मिल पाएंगे, वरना हमें कोचेज नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, कोचेज की जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि कोचेज अब मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो अगर उसमें जैसे भी है खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल होना चाहिए, तो अगर खेलो इंडिया में पार्टिसिपेशन या ब्रॉन्ज मेडल भी कर दें तो हमें कोचेज और ज्यादा मिल पाएंगे सर। दूसरा, जो अभी इसमें बजट है वो 5 लाख का है, 5 लाख में 3 लाख हमें कोचेस को देने पड़ते हैं, 2 हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को देने पड़ते हैं सर। थोड़ा सा मेरा इसमें निवेदन है सर कि अगर ये बजट भी अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा सर। दूसरा, इसमें कोचेस का रिक्रूटमेंट और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई बजट नहीं है, क्योंकि हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स को खबर करते हैं, हमारे कोचेस सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं और टैलेंट को सर्च करते हैं सर, उसमें भी काफी पैसा हमारा लग जाता है, तो कुछ बजट अगर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और कोच के हायरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए मिल जाए तो बेहतर रहेगा। साथ में ये स्कीम भी 4 साल के लिए है सर, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये अगर हो जाए कि स्कीम 4 साल से आगे भी चलेगी तो हम थोड़ा और उसमें बेहतर काम कर सकेंगे सर। नेक्स्ट सर, ये आपकी एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें खेलो इंडिया एथलीट्स, हमारे यहाँ के मैक्सिमम जो 15 स्टेट अकेडमीज रजिस्टर्ड है उसमें से 8 स्टेट अकेडमीज मध्य प्रदेश की हैं और करीब 52 प्लेयर्स हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं सर। ये स्कीम भी अच्छी चल रही है, सिर्फ जो इसमें दिक्कत आती है कि जो यूसी है, क्योंकि इसमें क्या है पैसा पहले हम खर्च करते हैं, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है सर, तो थोड़ा सा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में अब सारी चीज ट्रेजरी से होने लगी है तो हमारे पास पैसा बैंक में रहता नहीं है। नेक्स्ट सर, जो इंफ्रा के 3 प्रोजेक्ट हमें पहले मिले थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 21 में हमने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट, जो हमारे 5 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं लगभग हम लोग समय पे कंप्लीट कर लेंगे सर, और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अच्छी है, आपकी तरफ से पैसा भी टाइम से हमें मिल रहा है। नेक्स्ट, इसमें बस एक ही सजेशन था सर मेरा, जो हमें फंड मिलता है हम लोग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को भेजते हैं और प्रोजेक्ट का वहां पे कमेटी बैठ के उसको एनालिसिस करती है, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट वाइज पैसा मिलता है सर। होता क्या है सर, हमने 15 प्रोजेक्ट भेज दिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक अप्रूव नहीं होता हम उस 15 प्रोजेक्ट पे ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट अभी पैसा क्यों लगाए, सेंट्रल से अगर आ जाता है तो अच्छा रहेगा। इसकी तरह इसकी जगह अगर हमें ईयर के स्टार्टिंग में अगर हमें कुछ पैसा दे दिया जाए कि मध्य प्रदेश को 15 करोड़ रुपए दिया जाएगा सर, तो हम उस जो प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट हैं उस पर कंसंट्रेट कर लेंगे, आपके कंसल्टेशन से करेंगे और जो संबंधित क्षेत्र के सांसद जी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे कंसल्ट करके कर सकेंगे सर।
साथ में जो आपने जैसे बात की, हमारे यहाँ सीएम कप, विधायक कप और अब हम लोगों ने सांसद खेल महोत्सव भी हमने चालू किया है सर। इसमें हम लोग चाहेंगे कि जो सांसद का जो खेल महोत्सव है सर, उसमें कुछ फंडिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना हम लोगों के पास बजट रहता नहीं है कि हम लोग इतना सपोर्ट कर सके। अभी जितने सांसद खेल महोत्सव है सब में हम सपोर्ट तो कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ फंडिंग अगर आपकी तरफ से मिल जाए। दूसरा, सभी डिपार्टमेंट्स में सर अवार्ड की एक योजना रहती है सर, कि जैसे पुलिस में देखें तो बेस्ट थाने को मिलता है, बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर को मिलता है सर, इसी तरह अगर खेल विभाग में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ योजनाएं मिल जाएं तो उससे स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, क्योंकि हर साल किसी ना किसी को इनाम मिलेगा किसी अच्छी चीज के लिए। तो अगर कुछ खेल विभाग में भी अगर ये सेंटर की तरफ से अवार्ड की योजना हो जाए सर। एक सजेशन और था सर, जैसे आपका खेलो इंडिया में ग्रांट मिलता है अलग अलग स्कीम में, तो जो आपकी यूथ स्कीम का है सर, तो अगर कुछ यूथ इंडिया स्कीम अगर बन जाए तो जिसके डिफरेंट वर्टिकल्स में अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ फंडिंग या ग्रांट मिलता रहे तो हम यूथ पे भी और फोकस कर पाएंगे सर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Now I request Shri K. Govinda Singh Ji, Minister of Youth Affairs and Sports and Public Works Department, Manipur, for the presentation. Swagatam, namaskar. Slide. Next. Next, please. Sports is deeply embedded in the culture of Manipur, and that the testimony to it is that the state is home to several popular traditional sports, and sports is also part of many traditional festivals of Manipur. And also sports is always considered as a part of life and a passion for the people of Manipur. And perhaps there is no argument that Manipur is a sports capital of India. However, we have only one multi-purpose stadium in the state built for the 5th National Games way back in 1999, which is one of the few integrated complexes in India. At the moment, this sport complex cannot meet the need of the athletes in the state, and we are grateful to the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, for sanctioning 32 Khelo India district centers in various districts of the state. Next. Transforming the sports ecosystem with Khelo India. The scenario of sports in Manipur has been growing rapidly than ever today, presenting growth opportunities to all the stakeholders of the sports ecosystem, old and new. As our Honorable Chief Minister had mentioned in his deliberation, that Manipur has produced several great sport personalities with a meager population of just 31 lakhs. Prior to Khelo India, India had produced 2 medalists in the Rio Olympic, but today, with multiple initiatives by the Ministry of Youth Affairs, like Khelo India, India had produced 7 medalists at the recent Tokyo Olympic 2020, where the state of Manipur had contributed 5 athletes, out of which 2 bagged medals, inspiring millions. Next. Khelo India and its importance in Manipur's sports. The state of Manipur has been sanctioned 2 Khelo India centers. It's in all the 16 districts. However, considering the state's achievement in sports, Manipur deserves to have more Khelo India center at the subdivisional level also, which I have already requested to the Honorable Union Minister Anuragji in Cavadia, this one conference also. There is a need to develop low-cost playground at the village level, and decentralized sports infrastructures in various district and subdivisional level is a must. Conversion of some of the present non-residential Khelo India training centers into residential training center is very much needed, as we can groom from the grassroots level of the athletes.
To further ensure that we produce more medalists from the state, there is a need to select popular disciplines in district of the state. Sports has always been a part of traditional celebration of festival in the state. We need to further ride on this to make sports part of our culture. Next. Need of our infrastructure. There is a lack of trained coaches and proper infrastructure in the state, and hence we need more initiatives like opening up more Khelo India centers in our state beyond the 32 centers we have. We need more focus in the contribution of low-cost infrastructures at subdivisional level, village, rather than big infrastructure ones located in the heart of the town or city. More playgrounds and more complexes in districts and a subdivisional level. Present system of coaching need to be converted into residential mode of coaching by conversing with the nearby educational institutions. We request the Government of India to increase the budget, as already mentioned by the previous speaker, by taking into account the cost of fooding, lodging, logistic requirements of athletes in the nook and corner of the state. Next slide. High performance academies and the centers of excellence. It is time to invest in the development of training facilities dedicated to multiple sports in Manipur. Manipur already has set up Khelo India Excellence Center at Khuman Sports Complex with focus on helping athletes in world-class equipment and the facilities to shape them into elite athletes. The state is thankful to the Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, for allotting 3 centers of excellence: archery, hockey, and weightlifting. We request for more centers of excellence in other disciplines too. Other than Khelo India Centers of Excellence, our government is planning to start the Center of Excellence in some select disciplines which will have experts in sports, psychology, nutrition, medicine, and biomechanics to help an athletes reach higher performance level. Next. Khelo India scheme and the sports equipment. So far, we have been focusing on development of the infrastructures, but it is time to give equal emphasis in the procurement of modern equipments. We should ensure that there is recurring cost for the supply of consumable sports items under the Khelo India scheme. In fact, we have also submitted a budget of 15.5 crore to the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and we are expecting that the same may be granted to us in the earliest possible time. Next. Fit India and Khelo India movement. Our Honorable Prime Minister had launched the Fit India movement in 2019 with a view to make physical fitness a way of life. However, Manipur has always had a deeply embedded healthy living culture like mentioned earlier. With Fit India movement aiming at behavioral changes, we are looking to further spread this sports culture at every nook and corner of the state and the country among the youths in line with Fit India vision of making it a people's movement. This will immensely contribute in making the state and the country healthy, thereby helping achieve great heights in the field of sports as well as making it economically sound. For a financial weak like state Manipur, we are equally strong like any other well-developed states of India when it comes to performance in sports. Therefore, I request that the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India may grant us more disciplines under Khelo India scheme. And always Manipur think Khelo India is a boon for the budding athletes in our state. Thank you. अपने हुनर
Thank you, sir. Now I request Shri Wasim Rajadar, Additional Secretary Sports, Union Territory of Jammu and Kashmir, to come here for the presentation. Please stick to the time limit. I think we are. So shall I start? Honorable Union Minister and other dignitaries on and off the dais, warm good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to express my gratitude on behalf of my department and UT of Jammu and Kashmir to the ministry for handholding and support, which has paved way for transformation and I can say a revolution in sports infrastructure and participation in the UT of Jammu and Kashmir, particularly post-August 2019. So, I have a presentation. I would like to start this presentation right now. With regard to the Khelo India centers, sir, out of the 40 approved centers, 38 champion athletes have been recruited in the 38 centers and 2 are under process and will be completed very soon, sir. And this is the achievement of our KIC's world champions, 1 Asian champion, 1 the national champions, 197, and then other state champions. This is a glimpse of some of the infrastructure that we have developed under the Khelo India scheme. This is the status of the fresh 60 KICs that have been sanctioned. Out of the 60, 54 have been accorded sanction. In fact, all the 60 have been sanctioned. Six centers have been allotted with change in game, and the process is under the process of engagement is under progress. And 150 candidates, 52 candidates have been found eligible, and the interview will be conducted in the next 1 week, and the process will be concluded. The process of all the, in fact, all the 100 centers will be made functional well before 15th August. And regarding the Khelo India centers, Center of Excellence, we have 2 centers. One is in Jammu for fencing and the other one is in Srinagar regarding rowing. And professionals have already been hired, but regarding, as was said by one of my colleagues, the process of re-advertisement had to be made because some of the coaches were not available in J&K. And this is the status of both the centers of excellence. Regarding fencing, 348 candidates have been have participated, and the selection list has been published. And regarding rowing, also the list will be published and announced very soon. And this, as we all know, ladies and gentlemen, is the glimpse of Khelo India Winter Games held in Gulmarg, which was inaugurated by the Honorable Minister himself, and we were gracious enough to have him there. And these are the glimpses of the Khelo India Winter Games. And under the infrastructure development, I would say that there has been a complete transformation and revolution since the last few years. And there is a indoor sports stadium, multi-sports indoor complex in every district of Jammu and Kashmir, which is a great achievement. And then synthetic turf in various parts of various districts of Jammu and Kashmir, skating rink at Jammu, then we have swimming pools coming up in, at various locations. Then in South Kashmir, the district of Pulwama, which is known for different reasons, synthetic hockey field coming up in Pulwama and in Anantnag, Poonch and Jammu and other places. Then, with regard to youth engagement, a lot of efforts being made by the by our department and by the UT administration. Recently, LG Rolling Trophy cricket tournament, in which more than 40,000 budding cricketers and youth participated, and it was a huge, resounding success. And similarly, other initiatives being taken by the UT administration for youth engagement. Under Azadi Ka Amrit Mahotsav, more than 48,000 youth and students participated, and activities were conducted in
to 85 blocks all across J&K. Various events including cycling, yoga and other activities were organized, and major initiatives and achievements of the UT administration. Almost all the panchayats now have a play field in Jammu and Kashmir. Under Nasha Mukt Bharat campaign, various programs are being launched all across Jammu and Kashmir and are proving very successful, and I would take this opportunity to make you all familiar that we have a sports policy in place now, which will give a big boost to sports development in Jammu and Kashmir. Then these are youth engagement activities during winter months in the Kashmir Valley. And then the Honorable Minister leading from the front and playing snow cricket in Tangmarg during his visit to Gulmarg. And the glimpse of the yoga activities being undertaken across the length and breadth of the UT. Then recently, under an initiative of the government and directions from the top, senior citizens are being involved in sporting activities all across the UT. गोविंद जी ने यहाँ बैठे बैठे सुजाता मैडम को बोलते हैं टग ऑफ वार ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के बीच में हो जाए. Definitely, sir. And in fact, officers also, and we also have to participate and play games ourselves. There has to be a facility in our offices also. नवनीत जी को पॉलिटिशियंस की ओर गिनोगे कि मैं निकल जाऊंगा. Sir, as far as women in sports is concerned, we have a lot of success stories. Sharia Gupta from Jammu is a renowned fencer. Muskan Rana from a marginal family from Jammu has come up as a top gymnast, and Sadia and Aira, Wushu champions from downtown Srinagar, are some of the success stories that have come up in the recent years. So there is a concern of narco-terrorism in Jammu and Kashmir, and the rural, tribal and sensitive areas, sensitive from the security point of view, need to be the youth need to be engaged there in various activities so that this menace, this problem is countered. And the department in this endeavor, along with the district administration, has conducted various programs and sporting activities, particularly not only in the tribal areas, but in downtown Srinagar also, which has proved to be a great success, and people in large numbers are participating in these activities and events. Then para-sports is a priority of the government, and I would like to take a few names in para-sports. Taekwondo player Chandip Singh is an international medalist, then para-archer Sheetal Devi, then wheelchair footballers Insha and Ishrat are becoming role models for people all across the UT. Then youth engagement programs are being organized. Nasha Mukt Bharat Abhiyan, as I already referred, then Jan Abhiyan during the Back to Village programs, then various other programs are being Azadi Ka Amrit, under Azadi Ka Amrit Mahotsav. A lot of programs are being conducted in all the panchayats across J&K. Then sports mobilizes masses, it mobilizes all of us, and it integrates all of us together. It's very important that these activities are conducted and intensified in all the sensitive areas of Jammu and Kashmir, and this becomes a means of peace and prosperity and development. Then this is the medal, this is the participation chart at the school activities level. You can see from 3.5 lakhs to almost 30 lakhs. The increase is immense, and from 2019 to 2022-23, I mean, the figures speak for itself. It's a huge quantum jump. And this is at the level of competitive sports. 35 lakhs is the participation, ladies and gentlemen. And this will be taken to the next level during the current year. And the medal tally, we can see a huge jump from 2015 to 2019, 2020 with regard to the National School Games. Then as far as the competitive sport is concerned, you can see a huge medal tally at national and international level. And I feel proud of all these athletes and all these sports persons. And this has been, let me
highlight that this has been possible only because of the hand-holding and the support of the ministry. And this is the target for us, 70 lakhs, and I'm sure that this participation target of 70 lakhs will be exceeded by Jammu and Kashmir, and we are hopeful that this target will be much exceeded. This is a video, ladies and gentlemen, of district Pulwama, where under Har Ghar Tiranga, and a campaign was organized by our department, and you can see this is the same Pulwama which has been, I would say, notorious for various reasons, and this is an image of the changed Jammu and Kashmir, and this is all from my side. Thank you so much. God bless you. Thank you. ये जितना आपको प्रेजेंटेशन में दिखा है, इससे ज़्यादा वाइब्रेंट वहाँ जाके दिखेगा। श्रीनगर में डाउनटाउन में अगर आप देखेंगे तो हर तरह की घटनाएं नजर आती थी। आज वहाँ फुटबॉल स्टेडियम में अगर आप रात को लाइट्स लिट करते हैं, सैकड़ों बच्चे खेलने आते हैं। आपकी उम्मीदों से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप वहाँ पे आके खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, सिक्योरिटी मिली, वहाँ के बच्चे और ज़्यादा बढ़कर आगे आए। ये अपने आप में जितने नंबर्स बताए हैं, ये बिल्कुल सही आंकड़ा है एक दृष्टि से, और वहाँ पे जो बदलाव देखने को मिला पिछले 4-5 सालों में, वो अपने आप अलग ही दुनिया है। एंड अगर उनको अच्छा ऐसे मिलता गया, यू विल सी मेनी एथलीट्स विल गोना परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल वेल। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, वेल डन, थैंक यू। Sir, now we have open house discussion of this session. I request the delegates, while speaking, they please raise the placards we have placed in front of them and introduce them briefly. Sir, whenever Khelo India or any other center is given or some assistance is given, there has to be some competition. For states performing better in Khelo India game, national games should be given some incentives. For example, Maharashtra did very well in last Khelo India national games. I mean, those, it is not, it's for the players. So I think some additional excellence centers where they have performed well, so that, you know, states can also contribute in a better way. Maharashtra is now doing very well in 7 or 8 games, and we have been consistent in last 5 years. So like there is a definite pool of talent which is performing better with limited infrastructure. So some incentivization from the center would definitely help us in performing much better at national and international level. Thank you. Sir, दो मैं ध्यान देना चाहता था। एक तो हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में हम गांव-गांव में खेल का स्टेडियम की कोशिश कर रहे हैं। स्टेडियम नहीं, अभी खेल का मैदान आइडेंटिफाई करके नरेगा से डबटेल करके उसमें खेलने लायक बना रहे हैं। सो वी हैव रीच्ड अप टू 30,000, अब टारगेट इज 59,000। तो हम लोग उसमें नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, हर ब्लॉक पे एक मिनी स्टेडियम दे रहे हैं। तो मेरा अनुरोध ये था कि अगर जब आप ये खेलो इंडिया सेंटर डिस्ट्रिक्ट पे दे रहे हैं, क्या जहाँ स्टेडियम हो या हमने मल्टीपर्पज़ हॉल ब्लॉक में भी बना दिया है, क्या वहाँ हम एक कोच की फैसिलिटी आप दे सकते हैं? हम अपने स्टेट से भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर सेंट्रल से खेलो इंडिया में ब्लॉक तक चले जाएंगे तो हमें भी, स्टेट्स को भी एक इंसेंटिव भी मिलेगा वहाँ पे एक छोटा सेंटर खोलने के लिए। दूसरा सर, जो खेलो इंडिया का जो हमारा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लेट हैं पीपीपी में कॉरपोरेट और स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की हेल्प लेने की। हम लोग इस साल हमारे बजट में भी प्रोविजन किया गया है वायबिलिटी गैप फंडिंग का। व्हाट वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कि हमको अगर थोड़ा हैंड होल्डिंग हो जाए, उसमें कोई मॉडल डॉक्यूमेंट बन जाए बिडिंग का या ऐसा कोई तब, ताकि एक कंसिस्टेंसी सब स्टेट्स में रहे, वरना कोई कहीं ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा तो डेवलपर उधर चला जाएगा, दूसरी तरफ नहीं आएगा। तो एक जैसे कई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नीति आयोग ने भी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, तो वैसा कोई हमें हैंड होल्डिंग करके मिल जाए साई से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो मोनेटाइजेशन करने में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, उसमें हमें बहुत मदद मिलेगी और बहुत अच्छे चांसेस हैं, बिकॉज बहुत सारी हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ शहरों के बीच में आ गई हैं।
तो उसका कमर्शियल एक्सप्लोरेशन के साथ साथ फैसिलिटीज़ अपग्रेड करने का भी मौका मिलेगा। हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सलेंस नहीं है, मैंने डीजी से उस दिन बात की थी, आप इतने सारे आपने दिए हुए हैं, यूपी में एक भी नहीं दिया हुआ, तो हम प्रपोजल भेजेंगे, थोड़ा सा उसको प्रोसेस जल्दी करा दीजिएगा जी। हाँ, लखनऊ में देंगे, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया सर कि वो हमें वहाँ पे दे दें। दूसरा सर थोड़ा सा साई से भी सहयोग मिल रहा है, बट लेकिन मैंने देखा है कि साई थोड़ा सा वो थोड़ा अलग अलग ही रहता है, तो उनसे कहो भैया हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा और क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करें, तो जहाँ जहाँ हमें थोड़ी कठिनाई आती वहाँ सप्लीमेंट साथ साथ करता रहे, क्योंकि हम सबका टारगेट एक ही है कि हम ग्रास रूट से हम एथलीट को उठाएं और उसको फिर आगे तक ले जाएं ताकि हमें मेडल प्रॉस्पेक्ट्स हमारे बढ़े। उतना ही मेरा सुझाव था सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर जैसे नवनीत जी ने बताया कि वो मनरेगा के थ्रू गांव में ग्राउंड बना रहे हैं, पंजाब में भी हम मनरेगा के थ्रू बना रहे हैं, और रिसेंटली हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो गैप फंडिंग है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे रहा है, तो मैं भी उसमें ऐड करना चाहता हूं कि अगर सारा नहीं ब्लॉक लेवल पे गैप फंडिंग कुछ खेलो इंडिया से दे दीजिए, कुछ हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और कुछ और किसी कंपोनेंट से ले लेंगे। और दूसरा सर जो क्योंकि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कल्चर वहाँ पर ही रिवाइव भी होगा, क्योंकि पंजाब नंबर 1 टिल 2001 नेशनल गेम्स में हम नंबर 1 थे, लेकिन उसके बाद हमें कभी भी कोई नेशनल गेम होस्ट करने का मौका नहीं मिला। अगर सर खेलो इंडिया की कोई गेम्स होस्ट करने का मौका मिले तो हमारे स्पोर्ट्स कल्चर, क्योंकि हम भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पंजाब में रिवाइव करने में हमें हेल्प है वो मिलेगी। और दूसरा सर जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है उसमें सर जैसे पंजाब में साई के 3 सेंटर चल रहे हैं कि इंजरी के लिए सर कोई जो हमारे पूरे देश में ही है कोई खास कोई प्रबंध है नहीं कि एडवांस सेंटर ऑफ फॉर स्पोर्ट्स इंजरी एंड रिहैब का सर मुझे लगता है कि पंजाब में भी और दूसरे स्टेट्स में भी, क्योंकि नीरज चोपड़ा की रिसेंट इंजरी हुई थी तो उसे भी इंग्लैंड और सिंगापुर में जाना पड़ा, तो क्योंकि इंजरी मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी है उसके करियर को पूरा ही कई बार बर्बाद कर देती है, तो मुझे लगता है कि ये भी पंजाब में भी करे, दूसरे स्टेट्स में भी करे। और दूसरा सर जो खेलो इंडिया के मेडलिस्ट हैं उनको अच्छी बात है कि आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं 10,000, पर उनको सर जो ना हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस है मुझे लगता है कि उनमें उनको ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रॉपर गाइडेंस एंड कोचिंग मुझे लगता है कि उसके जो पैसे भी दे रहे हैं उसकी भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बार मेडल आ जाता है चाहे वो यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया के गेम्स हो, और उसके बाद बहुत से बच्चे बल्कि जिसको हम ओलंपिक तक लेके जा सकते हैं, कॉमनवेल्थ तक लेके जा सकते हैं, उनका टैलेंट ऐसे ही रह जाता है। सो सर इतना ही ऐड करना। थैंक यू। थैंक यू सर। सर जैसा नवनीत सर ने सर अभी गैप फंडिंग के लिए बोला था सर ये खेलो इंडिया स्कीम में, सर उसमें सर थोड़ा सा मेरा एक सजेशन और भी है कि सर स्टेट और सेंट्रल की जो फंडिंग है सेंट्रल का मेजर पोर्शन रहता है और सर स्टेट का ये रहता है कि जो गैप फंडिंग बच जाती है वो स्टेट पूरा करेगा सर। लेकिन कई बार हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी हुआ है कि सर वो गैप फंडिंग जो है वो सेंट्रल के पोर्शन से भी ज़्यादा हो जा रही है, तो फिर वहाँ स्टेट सर अपना थोड़ा सा एक कंसर्न जो है वो अपना पीछे नहीं सर, जो हम डीपीआर जो भेजते हैं सर उसमें क्लियरली मेंशन था, बट वो हुआ इस तरीके से कि वो गैप फंडिंग बहुत ज़्यादा होगी सर, अगर इस पे विचार हो सकता है सर। तो सर दूसरा हमारा ये था कि सर खेलो इंडिया में जो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं सर उसमें रेनोवेशन के लिए हमारा कुछ भी नहीं होता है, पूरी तरीके से हमें कम्प्लीटली एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है सर। शहर के बीचों बीच जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं जिनको हमें अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम उसको डिमोलिश नहीं कर सकते, नए तरीके से नहीं बना सकते, तो सर थोड़ा सा अगर इसमें रेनोवेशन पे भी अगर सेंटर सर थोड़ा सोचे तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और बेहतर बना सकते हैं सर। सर दूसरा सर जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 खेलो सेंटर का जो खेलो इंडिया सेंटर का जो सर कंसेप्ट है, थोड़ा सा सर जैसे उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है और हमारे यहाँ जैसे पहाड़ों में सर बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं हो पाती, या एक एक ज़िले में कई कई गेम के सर टैलेंट है, तो वहाँ पर हम एक ही गेम का एक सेंटर हम ले पाते हैं
उसमें सर हमने रिक्वेस्ट भी किया था साई से कि अगर कुछ हमको थोड़ा सा एक्सेप्शनली कंसीडर करते हुए, तो जैसे एक जगह पे सर कई पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है उन गेम्स का, तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं सर, तो थोड़ा सा सर वहाँ हमारा एक रिक्वेस्ट था सर। दूसरा इसी में सर चूंकि फर्स्ट ईयर में 7 लाख सर इसमें मिलता है और नेक्स्ट ऑनवर्ड सर 5 लाख मिलता है, इसका मेजर कंपोनेंट जो है सर वो हमारा सैलरी में चला जाता है करीब 3 लाख। तो उसमें सर ये पॉइंट पहले भी आया था कि बाकी चीज़ों के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए हम वहाँ पैसा नहीं दे पाते, इक्विपमेंट्स के लिए नहीं दे पाते। कुछ गेम्स जैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं सर, जैसे हॉकी का ही है सर, उसमें बॉल्स चाहिए होती हैं, बैडमिंटन के लिए शटल्स चाहिए होती हैं, तो प्रैक्टिकली वो सर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा इक्विपमेंट पे या उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा अगर पैसा वो बढ़ जाए, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन जो है वो सैलरी पे चला जाता है सर। थैंक यू सर। एक सुझाव सबके लिए, ये रिपोर्टिंग और डिमांड जनरेशन वाली कॉन्फ्रेंस नहीं बननी चाहिए। कोई रिपोर्ट कर रहा है कि जी मैंने ये किया है, कोई ये कर रहा है कि हमें ये चाहिए। हम कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ क्या अचीव कर पाएंगे भविष्य के लिए, उस तरह से सुझाव आपके अच्छे एक्सपीरियंस सामने आए जहाँ पे आपने काम किए हैं, बाकी उससे कुछ सीख पाएंगे। मुझे लगता था तुषार कांति उड़ीसा का कुछ मॉडल बताएंगे, लेकिन ये सुबह से साइलेंट मोड पे चल रहे हैं। कल है तो इसीलिए कल के लिए बचा के रखा है। कल और भी प्रेजेंटेशंस हैं। 2 points from Tripura, sir. Only 2 issues, sir. I We'll want go to to flag, Tripura, then Tamil Nadu, and then Jharkhand, then Madhya Pradesh. sir. The Khelo India Center of Excellence, which is being run in Agartala with 100 students, so they are provided with food and lodging from the state government side. The state has a very meager amount, very low, poor budget, sir. If it can be thought that fooding and the hostel capacity of 200 can be borne by the central government, it will be, sir, I mean, good for the state, sir. Second, sir, the SAI can take up this issue, sir. Second is that Tripura has established all the 8 small centers in all the districts, Khelo India, in the disciplines of judo, athletics and swimming. But these are run under the supervision of local coaches. So they have very low proness. So my request is that if some specialized SAI coaches are given there, देखिए जो अभी इन्होंने खेल इंडिया स्मॉल सेंटर में इसलिए इंटरवीन कर रहा हूँ, ये स्कीम है उसके लिए जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको इसके ऊपर नियुक्त किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है। मैं ठीक कर रहा हूँ संदीप जी? उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है, उनके रिफ्रेशर कोर्स किए जा सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि अब वो सेंटर शुरू करके कोच भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देगा, वैसा होगा नहीं। स्कीम योजना को समझना पड़ेगा पहले हम सब लोगों को, डिपार्टमेंट के लोगों को तो कम से कम, मान लीजिए मंत्रीगण के पास इतना समय नहीं, डिपार्टमेंट के अधिकारी को तो एक एक स्कीम की गहराई में जाके समझना चाहिए। वो योजना ही इसलिए बनी है, पूर्व चैंपियन एथलीट के लिए ही बनी है। और एक इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में बीच में छोड़ दिया, ई खेल पाठशाला जो रखा था वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोचेस को देने के लिए ही हमने रखी थी। ऑनलाइन ऑफलाइन सब करवाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक बार आप नियुक्ति कर दीजिए और अच्छे खिलाड़ियों की नियुक्ति कीजिए जो पूर्व अच्छे एथलीट रहे। Usually in these disciplines we don't have coaches locally. ये जो क्लोजर टू द माइक प्लीज सर, जूडो, एथलेटिक्स और स्विमिंग में हमारे यहाँ अच्छा एक्सपर्ट कोचेस नहीं है, इसलिए साई का एक्सपर्ट कोचेस वी वांट। देखिए आप फिर उसको अलग रखिए। हाँ, ये खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्कीम ही अलग है। आपको इन गेम्स के लिए कोच चाहिए, वो आपकी अलग मांग है, वो आप मीटिंग के बाद चाय पे मिलिए, वहां पे रखिए। ठीक सर। यहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर को और बेहतर चला सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो दीजिए। मान लीजिए इनोवेटिव वे में उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने मनरेगा का इस्तेमाल किया, किसी और ने भी किया, भारत सरकार का पैसा आपने अपने लिए उपयोग किया, डबटेल करके कन्वर्जेंस करके कर लिया। ऐसे और कितने राज्य कर सकते हैं, उनको इनसे सीख लेना चाहिए। किसी ने
CSR फंड को यूज करके कुछ और बेहतर किया है, उस मॉडल को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। आपने किससे पैसा नहीं लिया, आपने कंपनी को कहा तो आप 5 कोच रख के हमें दे दीजिए, सैलरी आप देते रहिए, आपको कोचेस मिल जाएंगे। सो ये बैठक इसलिए है कि यहाँ पे आप अपने मॉडल्स की चर्चा करें, उनसे बाकी लोग सीख पाएं, और अपने अपने यहाँ पे किसी के 2 PSC होंगे, किसी के 5 कॉर्पोरेट होंगे, उनसे करवा सकते हैं। आई डेंट वांटेड टू इंटरवीन जब आप लोग अपना सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक बार फिर क्लैरिटी करूं। अल्टीमेटली कल जब हम जाएंगे तो जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, रियलाइजेशन, रिफ्लेक्शन और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन वाले के लिए, जब तक हम उस चर्चा पे ही नहीं आते तो कल तक कुछ भी निकल के नहीं जाएगा उस दिशा में। केवल रिपोर्टिंग की कॉन्फ्रेंस ना बनकर रहे, रिपोर्टिंग तो ऑनलाइन भी आ जाएगी, उसका कोई फर्क नहीं है। तमिलनाडु। So we are facing a little difficulty, sir. So we thought the eligibility norms, as I had mentioned earlier, for coaches for Khelo India centers in district level could be, the eligibility could be 45 years instead of 40, because it's very difficult to get a good coach who is less than 40. Many of them are in active sports also. So we will first advertise, sir. If 2 advertisements fail, then it can be something like that can be permitted, that we can permit up to 45 years. That is one, sir. Sir, as we have in Khelo India, there's a women Khelo India vertical. Now that India is getting urbanized and a lot of slums are coming up, if there could be a vertical on slums where the sports space is very limited, that could also be thought of, sir. And thirdly, sir, the infrastructure which we are having, as Navneet was also telling, many of them are in the city centers. There are some models like monetization as UP is following, but we are slightly keen that we can commercially use it. But we do not have the technical expertise to do it, mainly for the open stadiums. So if there, sir, if some kind of a guidance or some kind of a workshop could be conducted, where the best practices of the states of commercially exploiting these spaces could be shared, then we will use those models to work on our infrastructure also. And lastly, sir, these we send a lot of proposals for infrastructure. Many of them are approved by the central government. Many of them remain there because probably we have not given the documents properly. So one is in the mission mode, if we can clear up all the pendencies, and wherever rejection has to be done, they can be rejected, so that we can think of some other mode of, otherwise they remain pending there, sir. Our governments also, when we put the same thing for our funding, they say that you try to get it from the government of India. So your finality can be there, sir. Thank you, sir. सर, सेंटर ऑफ एक्सलेंस जब भी सिलेक्शन करते हैं तभी जो मैंने गोवा में अभी एडवर्टीजमेंट फ्लोट किया है, और उसमें 30% जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो आउट ऑफ स्टेशन होना चाहिए, सो दैट हेल्दी कंपटीशन कैन टेक प्लेस। क्योंकि बाकी राज्यों से कोई समझो गोवा का सेंटर में पार्टिसिपेट एक थोड़ा सा रह गया था सर, एक इनिशिएटिव 2 रह गए थे, बता दें। झारखंड। थैंक यू सर। मेरे पास एक ही सजेशन है सर, जो खेलो इंडिया में जो स्कीम है जिसमें कि ग्रास रूट लेवल से वर्ल्ड लेवल स्टैंडर्ड का एथलीट तैयार करना है, उसके लिए काफ़ी जोर शोर से काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। हमारे झारखंड से भी 24 डिस्ट्रिक्ट्स का प्रपोजल भेजा जा चुका है, और 3 गेम्स एथलेटिक्स,
आर्चरी एंड हॉकी का हम लोगों का स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हम लोग को भेजना है। और मेरा एक सजेशन है सर कि गेम में ज़्यादातर एथलेटिक्स मेन है, क्वीन इवेंट है, तो इसमें हमारे इंडिया में विंटर एंड रेनी सीजन में थोड़ा ट्रेनिंग में डाउन में चले जाते हैं एथलीट। तो वैसी सिचुएशन में ये हर स्टेट में मेरा जस्ट सजेशन है ये कि 200 मीटर्स का ट्रैक एंड 6 लेन का ट्रैक इंडोर स्टेडियम बनाया जा सकता है सर, जो कि हमारे पास जो खेलो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में फंड जो प्रोवाइड किया जाएगा सर, तो उसमें इंक्लूड किया जा सकता है 200 मीटर का 6 लेन सिंथेटिक ट्रैक का। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, चूँकि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है। मैं 2002-03 में मैं जब जोहानिस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में जर्मन लैंग्वेज में मैं जब स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे 9 महीना वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब में काम करने का मौका मिला। तो मुझे अभी वहाँ का याद पड़ रहा है कि इस तरह का मौका दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर विंटर सीजन में काफ़ी स्नो पूरे ट्रैक में भर जाते हैं, तो वैसे समय में उनका भी तो वो प्रॉब्लम आता है, तो इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे इंडिया में बैडमिंटन के लिए, बास्केटबॉल, ये सब के लिए इंडोर स्टेडियम तो है, पर इस तरह का एथलेटिक्स के लिए नहीं है सर। तो जस्ट मैं ये मेरा सजेशन है सर। Thank you, Anyone sir. else? Yes, ma'am. Deepti. Quick point, sir. A small request. So the ecosystem of sports to help a medalist or to do other things requires a lot of information regarding sports science, fitness and conditioning, rehabilitation, injury. But the academic environment for this is not completely up to date. In the sense, like I can speak for our experiences also, the courses which are being run in universities are not really the kind which are which have the latest information. Even the design itself is pretty faulty. So if I think some work has been done, I think Jatin was telling me the other day that they put a working group together which is coming up with an academic curriculum. So sir, fitness and conditioning people are going to Australia to get their their certifications done. So if we can pick up the kind of courses which are required to develop the proper athlete, biomechanics experts, and if that can be shared, the curriculum can be shared with the states, then we can take it up. So that way we'll have many more of these sports persons getting into sports-related occupations, which they're really interested in. That would be really useful for us. सर हमने दो फंड बनाए हैं सर, और इसमें एक में मुझे हेल्प चाहिए होगी। एक तो एकलव्य क्रीड़ा कोष बनाए जिसमें खिलाड़ियों को सीधे हम लोग ट्रेनिंग के लिए इसके लिए फंड देते हैं। लगभग स्टेट गवर्नमेंट 25 करोड़ रुपए हर साल कंट्रीब्यूट करती है। एक दूसरा, इस साल हमने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तर्ज पर स्टेट स्पोर्ट्स फंड क्रिएट किया है, जिसमें कॉरपोरेट्स और CSR की फंडिंग हम लेंगे। तो आप भी की तर्ज पे वो बना रहे हैं, हमें आपसे मदद चाहिए होगी, क्योंकि जो आपने बनाया है सेंट्रल का नेशनल स्पोर्ट्स फंड, उसमें ATG 12A और कई CSR की कई आपने कॉरपोरेट मिनिस्ट्री से वो नोटिफिकेशन कराई हुई है। तो हमें सर So career counseling and their kind of alternative skill development, all those things, like after 35-40 years, even we tell our children that education is a better bet rather than the sports. I think most of the people in this hall will agree with that we encourage our children to go to sports, because it's a long-term career. How to make a long-term career if we bring in that element also. Overall, giving career counseling after the post-sports career. So what can be, I think that will be really helpful in launching ecosystem. Thank you, sir. Latak. Sir, good afternoon, sir. Sir, in Khelo India Center, sir, winter sports also to be included, especially for the UT level or state center, sir. In winter sports, sir, we are working on ice hockey, ice skating, skiing and other sports also.
and we are developing 50 outdoor ice hockey rinks and 2 indoor ice hockey rinks, sir. But still, sir, the pace is not that we are requiring. And also we are facing a lot of problem in importing the equipment from the other countries. So there are issues of custom duty also if some country wants to donate us some equipment, and also the imparting the coaches training from the foreign coaches, sir. So that is also very difficult for us. We have done CSR with Royal Enfield Group to develop a master plan for ice hockey, and we are taking help from them and also the International Ice Hockey Federation. But sir, still a push from the ministry would help us to take the winter games to new heights, sir. चलिए सबका आंध्र प्रदेश. Sir, good morning, sir. Sir, actually, after bifurcation, all the infrastructure is left with the state of Telangana, sir, in Hyderabad. So we're parallelly looking how to create infrastructure for our state, sir, some parallel options. Two things we have done, sir, as you are aware, sir. We are capturing the CSR funds, sir, so that for that, we have mapped all the NRIs who are mostly from our place to abroad. So we prepared a database of NRIs, and wherever the projects are coming within their vicinity or within their hometown or the state, we are just floating a proposal for them. If you like to invest in the entire activity, that activity, the ground will be named after that NRI, sir. So that is the one way of how to fill up the infrastructure gap. Second thing, sir, we are also giving an annual sports calendar, just like an academic calendar, so that parallelly events are not taking place between different departments. Manla sir, abhi sports department, education department conducts sports on its own, tribal department conducts sports on its own, Sarv Shiksha Abhiyan, there is a budget for the sports. What we have done, sir, we are following a convergent model, where the sports department is the only nodal agency to conduct all the games in all the institutions, so that the meager resources from all the departments flows to the SAP, that is the Sports Authority of Andhra Pradesh, and we are having a uniform calendar for the entire state. These are the two policies we are following from this year, sir. Thank you. सर अभी क्योंकि चाय की ब्रेक है, मेरा निवेदन सुजाता जी से, दीप्ति जी से और पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव ये है, एक किसी अधिकारी को और साथ में जोड़ लीजिए. अभी जितनी चर्चा यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके हुई है, उसको लेके निष्कर्ष क्या निकले, उसमें क्या ऐड ऑन हो सके अभी तक के लिए. रात के जो हमारे टीम्स बैठेंगे आपको उसमें ग्रुप्स बनाने हैं और उनके लिए एक टॉपिक देना है कि भोजन पे जब वो टेबल पे बैठेंगे उस पर चर्चा होगी और उस ग्रुप का कोई एक व्यक्ति कल उस पर प्रेजेंटेशन देगा 5-7 मिनट में सम अप करके टेक अवेज क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या करनी चाहिए, ताकि कल कंक्लूजन के टाइम पे हम लोगों के पास कुछ बन के आएगा, उसके ऊपर फिर आपकी चर्चा करके फाइनल कर लेंगे क्या क्या करना चाहिए. खिलाड़ी, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कोचेस की ट्रेनिंग, कोचेस की अवेलेबिलिटी, इस तरह के जो बाकी विषय हैं, इवेंट्स, कंपटीशंस, हम इसको अलग अलग सेक्टरल उसको कैसे बांट सकते हैं या वर्टिकल्स में कैसे बांटोगे, वो एक बार बन जाए, फिर उसको चर्चा, ताकि थोड़ा फोकस चर्चा हो जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ निकलेगा. अब जिम्मेदारी भी आप लगा देंगे तो लोग ध्यान से सुन के फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू करेंगे. मान लीजिए जितेंद्र जी एक ग्रुप को हेड करते हैं तो उनको कल तक पता होना चाहिए कि मैंने किसकी रिपोर्टिंग क्या करनी बिहार ने, उनके साथ कौन है. गुरमीत जी अगर एक को करते हैं पंजाब से तो उनके टीम के जो 7-8 लोग हैं वो आपस में चर्चा करके अब तक जो चर्चा हुई है उसका कल फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन 5 मिनट में करेंगे. तो कल आधा घंटा 6 लोगों की प्रेजेंटेशन इसी काम पे जाएगी. वो आप आज कर दीजिए ताकि रात को बैठ जाएं, सुबह के ब्रेकफास्ट पे बैठ जाएं. 2 टाइम पे आपको बैठना है, आज भी बैठ लिए, कल कुछ ऐड ऑन करना है, बाकियों से बातचीत करके कल फिर कर लीजिए. और कल दोपहर को आपको प्रेजेंटेशन करनी है. उस पर प्रेजेंटेशन मीन्स कि अपने 3-4 मिनट में सम. सर उत्तराखंड ने सर एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया सर. एक Sir, 20 minutes break. I request all the guests to be back here in 20 minutes strictly. And we may proceed for tea as per the lunch scheme. Thank you. Jatin, just announce the time when they should come. 4:30, huh? Sir, 4:30. It will be 4:30 p.m.
Sir, 4:35, sir. Welcome back, everyone. I request all the guests to be seated, please. Please be seated. Sir, I request the Honorable Minister from Assam to please come on the dais, and Honorable Minister from Bihar. And Honorable Minister from Tripura. Now we move towards our fourth and final session for the day, Innovation in Sports Sector.
Here we have 4 states' presentations where they will be presenting their innovation and new initiatives in the sports sector. First, I invite the team from Rajasthan to make the presentation. Jai Hind, honorable dignitaries on the dais and off the dais. I am GL Sharma, Secretary Rajasthan State Sports Council. My presentation is on Churu model. The model received PM Award for Excellence in Public Administration in Khelo India 2021-22, the nursery of sports in Rajasthan. On this pattern, we have just conducted Grameen Olympic at the large scale. और उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर नाम मिला। 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और उसी पैटर्न पर हम लोग ग्रामीण और शहरी ओलंपिक एक साथ कराने का प्लान कर रहे हैं और मई जून जुलाई में वो डेट तय होने वाली है। इसका जो बैकग्राउंड है वो सर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। राजस्थान में शेखावाटी ऐसा क्षेत्र है जहां से सेना में, आर्मी में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग भर्ती होते हैं और हम देखते हैं कि गांवों में, सड़कों पर, खेतों में भी वो दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। तो कैरियर को और स्पोर्ट्स को दोनों को इंक्लूजन करते हुए, दोनों को एक तरह से हैंड होल्डिंग करते हुए, इनका कन्वर्जेंस करते हुए कोशिश की गई चूरू में, जो शेखावाटी का पार्ट है, जहां उसको नर्सरी ऑफ स्पोर्ट्स इन राजस्थान कहा गया है। वहां स्टैंडर्ड, स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्किल और स्पिरिट ऑफ गेम, इन सबको मिलाते हुए फिट राजस्थान, हिट राजस्थान के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए और फिट इंडिया, हिट इंडिया को आगे बढ़ाया और इस मॉडल को कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिला है, जिसके आधार पर और भी बहुत सारे इनोवेशंस राजस्थान में हुए हैं। प्लीज कैन आई हैव माय पीपीटी? सर, देयर आर सर्टेन स्ट्रेटेजीज ऑफ दिस इनोवेशन। सबसे पहले कोई भी चीज होती है उसको लोकप्रिय करना बहुत जरूरी होता है, आईईसी एक्टिविटीज के माध्यम से। तो बहुत सारे रन किए गए। शेखावाटी में एक कहावत है कि वहां ऊंट, फूंट और रूट बहुत फेमस है। ऊंट वहां का रेगिस्तान का जहाज है, फूट एक फ्रूट है जिसको काचरा, एक बड़ा काचरा होता है, उसको कहते हैं, और रूट वहां के जो सैनिक लोग हैं, जो आर्मी में हैं, जो फौज में हैं, उनको रंगरूट कहा भी जाता है कई बार। तो रेडियो वार्ता के माध्यम से चूरू जिले में 4 डिग्निटरीज हैं जो पद्मश्री अवार्डी, कृष्णा पूनिया हैं, देवेंद्र झाझड़िया है, वीरेंद्र पुरिया, अनूप कुमार, ये सब द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। इन सब लोगों ने हैंड होल्डिंग की युवाओं की और उनको चैनलाइज किया, उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया। सर, 300 से ज्यादा गांवों में वहां स्टेडियम है, सभी ग्राम पंचायत को करीब 292 के करीब ग्राम पंचायत वहां पर हैं, सबको कवर किया हुआ है और वेरियस जो स्कीम्स हैं, जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, लाइक नरेगा और एक हमारे यहाँ डीएमएफटी, एक मिनरल फंड होता है, वो एसएफसी, एफएफसी, एमएलए लेड और एमपी लेड, इन सबको कन्वर्जेंस के माध्यम से कोशिश की गई है कि जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पर डेवलप किया गया। इसी तरह से पे एंड रिजाइड एक फैसिलिटी वहां पर की गई, जो नॉमिनल बहुत कम फीस के माध्यम से बच्चों जो खेलना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, चाहे वो 1 महीने रुकें, चाहे वो 3 महीने रुकें, चाहे वो 6 महीने रुकें, उनको सारी फैसिलिटी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ जेंडर सेंसिटाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट को शामिल किया गया है। जितने भी पार्टिसिपेशंस हैं और मेडल विनर्स हैं उसमें 50% से ज्यादा रेशो वीमेन का होता है। आधी दुनिया का पूरा इन्वॉल्वमेंट इस मॉडल में है। इसी तरह से हमने खेलो इंडिया गेम्स में 2020 में अच्छे मेडल अचीव किए और चूरू ने, जो राजस्थान में 33 जिले हैं, 19 अब नए अनाउंस हुए हैं, उसमें से चूरू ने 1/10 मेडल विनर चूरू रहा है। 51-52 मेडल्स में से 10 मेडल चूरू ने जीते हैं। जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में चूरू राजस्थान का अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजस्थान भी देश में कोशिश कर रहा है अच्छा प्रतिनिधित्व करे, हमारा देश भी विश्व में अच्छा प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जैसे चूरू में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके मायने में चूरू बहुत पिछड़ा है, एवरेज से बिलो है, उसके बावजूद भी जो इंस्पिरेशन है, जो हॉप है, वो बिल्कुल बनी हुई है और उस आशा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक विशेष बात इस मॉडल में यह है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन की ओर
पलायन होते हैं, जो एल्कोहलिज्म की ओर या अब्यूजिंग की ओर चले जाते हैं, उनका जो चैनलाइजेशन है वो किया गया है। और यहाँ कन्वर्जेंस है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, खासतौर से स्पोर्ट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो सब चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में जाकर के इनकलकेट करते हैं, चैनलाइज करते हैं बच्चों की एनर्जी को। सर, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के राज्य, समाज और भामाशाह की मदद से पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट, पंचायत एंड द पीपल्स पार्टिसिपेशन, इन सबको लेकर के साथ लेकर के कोशिश की गई है कि वहां पंचायत लेवल पर मल्टी डिसिप्लिन के साथ में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हों और एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स की फैसिलिटी वहां पर हो। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड्स जो हैं, ये चूरू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ग्राउंड्स हैं। ट्रेडिशनल गेम्स के साथ जो इंटरनेशनल गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनको साथ साथ बढ़ावा देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है इन फैसिलिटीज में। रूरल गेम्स आयोजित हुए थे, पूरी शेखावाटी में हुए थे, चूरू में हुए थे, जहां टैलेंट रिसर्च इनिशिएटिव हुआ। 18 लोग चूरू जिले से 18 लोग नेशनल लेवल पर खेले। इसी तरह से मैं पहले बता चुका हूं कि खेलो इंडिया में 2020 में अच्छा पार्टिसिपेशन रहा और बहुत अच्छे मेडल्स चूरू डिस्ट्रिक्ट ने जीते, ट्रेडिशनल गेम्स में भी और जो इंटरनेशनल गेम्स हैं उनमें भी। प्ले ग्राउंड जो ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा था, 292 स्कूल्स में और उससे अलावा 20-25 अलग जगहों पर जहां स्कूल के अलावा भी प्ले ग्राउंड्स हैं, उनमें इस तरह के डेवलपमेंट्स वहां पर किए गए हैं। और विशेष जो बात है, सर पहले सेशन में बता रहे थे कि कन्वर्जेंस किया गया है, जहां पर भी पॉसिबिलिटी है, जहां पर भी कोई गुंजाइश होती है, जहां ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती है, वो चाहे वो मिनरल फंड है, चाहे वो MP MLA फंड है, उन सबका कन्वर्जेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की फैसिलिटीज को डेवलप करने में लगाने की कोशिश की जाती है। ब्लॉक लेवल पर राजस्थान सरकार की मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम है, जिसमें हमारे 352 ब्लॉक्स हैं, सभी में स्टेडियम बनाने का पूरा प्लान है, जो पिछले वर्ष से चल रही है। और सो फार 50 to 60 करीब 60 जगहों पर यहाँ काम शुरू हो गया है, जहाँ ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम बनाने का काम चल रहा है। और कई जगह पर तो जो ग्राम पंचायत लेवल है, वहां पर भी स्टेडियम भामाशाहों की मदद से, CSR की मदद से डेवलप किए जा रहे हैं। चूरू में कई सेंटर्स जो हैं वो खेलो इंडिया के सेंटर्स हैं, कुछ प्राइवेट एकेडमीज जहां पर रन हो रही हैं उनके सेंटर्स हैं, और 10 डिफरेंट प्रकार के सेंटर्स जो हैं उन पर कोचेज अपनी सेवाएं देकर के बच्चों को बहुत अच्छे से ग्रूम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। जो अप्रोच है इस मॉडल की, वो मेडल विनिंग अप्रोच है, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पर है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जहां पर भी जैसे जैसे जिन सेंटर्स में जहां कोचिंग हो रही है उनका रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रेगुलर रिव्यूज किए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, उसके बाद दूसरे आए, वो भी उस मॉडल को लगातार आगे उसको बढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ ना केवल NIS ट्रेंड जो कोचेज हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि जो लोकल मेडल विनर्स हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, वो बिल्कुल निःशुल्क तौर पर, ऑनरेरी तौर पर वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिस इज ऑल implementation with the help of the PPP model, public, private, panchayat and pupils participation. You can see here, sir, the grounds at the village level also. Sorry. ये स्कूल्स जहां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वहां नरेगा से कन्वर्जेंस करके इनका निर्माण किया गया है और इनके माध्यम से नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर चूरू डिस्ट्रिक्ट ने अचीवमेंट किए हैं। ये आप मेडल एक कंपैरिजन देख सकते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ चूरू जो इंक्रीज हुआ है 2019 से 2020 में, और नेशनल गेम्स में जो पार्टिसिपेशन है चूरू का, वो भी बहुत ट्रेमेंडसली राइज हुआ है। गोल्ड मेडल खेलो इंडिया में गुवाहाटी में चूरू डिस्ट्रिक्ट ने प्राप्त किया। ये सर राजस्थान में चूरू का प्रतिनिधित्व है, 51 मेडल्स में से 10 मेडल चूरू जिले ने जीते उस समय, और इसलिए चूरू मॉडल एक चर्चा का विषय रहा, जिसमें न केवल मेडल और खिलाड़ियों ने अपना एक मुकाम पाया है नेशनल लेवल पर, बल्कि फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है और हमने आधी दुनिया को इसके साथ जोड़ा है, इनका समावेशन किया है और जेंडर यस सर। मैं जो बताना चाह रहा था कि जो प्रधानमंत्री परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, उसमें विष्णुपुर मणिपुर का जिला है, बहुत खूबसूरत जिला, उसके साथ चूरू को, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर मिला है। और ये इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट
I want to say just Gramin Olympic. We have got the world record and we have got the Scotch Award also for this Gramin Olympic. And it was the kind of the sports festival over there. खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। जैसे बड़े स्तर पर जिस तरह से खेलों का माहौल एक बनता है, 30 लाख लोग एक साथ खेले, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक माहौल बना जहां पर 3-3 जनरेशन एक साथ खेलते हुए दिखाई दी। बाबा खेल रहा है, उसका पिता खेल रहा है, उसके पोते खेल रहे हैं और तीनों जनरेशन के लोग, महिलाएं अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेज हैं उनमें महिलाएं इस गेम को वहां पर खेल रही हैं। ये सब लोगों ने देखा और अब मैं कहता हूं कि राजस्थान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है और एक चिनकारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, क्योंकि अब इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है, अब इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। Thank you. Now I invite the team from Gujarat to make the presentation. Hello. Respected dignitaries on the dais and in front of the dais, मुझे यानी गुजरात टीम को होस्टिंग मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स एक्सपीरियंसेस फ्रॉम नेशनल गेम्स 2022 के ऊपर बात करने के लिए कहा गया है। मैं यहाँ पे ये याद करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर ये कॉन्फ्रेंस जैसे यहाँ हो रही है वैसी कॉन्फ्रेंस गुजरात के केवड़िया में ऑर्गेनाइज हुई थी। हम होस्ट थे और उसी वक्त ये डिसाइड किया गया था कि 7 साल से नेशनल गेम्स का आयोजन नहीं हुआ है, तो इस बार गुजरात इसको होस्ट करे और जो 7 साल में नहीं हुआ है वो गुजरात 100 दिनों से भी कम के समय में करके दिखाए। इट वॉज अ चैलेंज and Gujarat accepted it. Next. 36th National Game was the largest multi-sports event held in India. एशियन गेम्स दिल्ली की बात करें तो उसमें 23 खेल थे, कॉमनवेल्थ में 21 थे और नेशनल गेम्स जो प्रीवियसली हुए थे आसाम, झारखंड और केरला में, उसमें 32, 33 और 31 खेलों का आयोजन किया गया था। जो 36th नेशनल गेम्स हुए उसमें ये 36 का फिगर तीनों जगह पे लागू हो रहा है। वो 36th नेशनल गेम्स थे, उसमें 36 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स को इंक्लूड किया गया और उसके साथ साथ पूरे देश के 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट। मैं जल्दी से बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे को ज्यादा फोकस करना है जो लर्निंग्स है, कैसे ये हमने किया वो बताना है। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कुछ टाइम नहीं था, इसलिए हमने कुछ नए सिरे से सोचा और ये जो पूरी गेम्स हैं उनको 7 सिटीज में उनका आयोजन किया गया, जिसमें से गुजरात के 6 शहर थे और दिल्ली में सिर्फ गुजरात में एक जो साइकिलिंग की इवेंट होती है जिसमें वेलोड्राम का यूज होता है, उसका वहां पे वेलोड्राम अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसका आयोजन दिल्ली में किया गया। उसके सिवा सभी गेम्स हमारे 6 शहरों में आयोजित किए गए, जिसमें अहमदाबाद और गांधीनगर प्रमुख शहर थे। उसके अलावा राजकोट, भावनगर, वडोदरा और सूरत में सब खेलों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसमें जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का यूज करके, उसी को ऑगमेंट करके, उसी में ओवरलेज लगा के हमने ये गेम्स का आयोजन किया। अहमदाबाद के जो सबसे बड़ा, अहमदाबाद जहां क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम,
वो स्टेडियम ने इसका भव्यातिभव्य शुभारंभ किया और सूरत में इंडोर कॉम्प्लेक्स में ये गेमों का समापन किया गया। जो की नंबर्स है, नेक्स्ट प्लीज, की नंबर्स हैं, उसमें 37 पार्टिसिपेंट्स थे, 36 स्टेट्स एंड यूटीज प्लस सर्विसेज। नंबर ऑफ एथलीट्स भी रिकॉर्ड 7,500 के आसपास थे, टेक्निकल ऑफिशियल्स ऑलमोस्ट 2,000, टीम ऑफिशियल्स, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वॉलंटियर्स वो भी 1,000 के आसपास थे, और जनरल वॉलंटियर्स हमने लगभग 2,000 के आसपास डिप्लॉय किए थे। नेक्स्ट, जनरली इतना बड़ा, जैसे मैंने बताया, इतने बड़े खेलों का आयोजन करने में बहुत ज्यादा समय जाता है। जैसे पेरिस ओलंपिक्स के लिए 7 साल से ज्यादा का समय मिला, कॉमनवेल्थ गोल्ड कोस्ट 7 साल से ज्यादा, एशियन गेम्स जकार्ता में हुए वो 3.5 साल से ज्यादा हुए, नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो जापान में हुआ वो 2 साल से ज्यादा, और केरला नेशनल गेम्स जो प्रीवियसली हुआ था, मतलब 2022 में हमने किया, उससे पहले 2015 में केरला ने किया था। जी सर, हाँ, वहीं पे जा रहे हैं सर। तो वो 36वां जो खेल का आयोजन हुआ वो लेस देन 100 डेज में हुआ। नेक्स्ट, जो सेलिएंट फीचर्स है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एवर ऑर्गेनाइज्ड, एक्टिवेशन कैंपेन जो हमने किया वो 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को 35,000 से ज्यादा स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस गुजरात, इन सबको इंक्लूड करके किया गया। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया नहीं बनाया गया। स्पोर्ट्स कार्निवल, हर जो सिटी जिसने गेम्स में का आयोजन देखा वहां पे स्पोर्ट्स कार्निवल का भी आयोजन किया गया। और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू डिलीवर गेम्स, क्योंकि ये बहुत कम समय में इसका आयोजन करना था, इसलिए पूरी गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, हेडेड बाय सीनियर सेक्रेटरी रैंक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक IAS ऑफिसर्स, टू सी टू इट दैट the games are delivered and delivered in time and in the best manner. Next, जो की चैलेंजेस हमारे सामने थे वो वर्ल्ड क्लास कंपटीशन एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एथलीट्स को अवेलेबल कराना, एकोमोडेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, इंटरनेशनल क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल कराना, प्रोक्योरमेंट करना था बहुत सारा क्योंकि उसमें TSR भी लगा था, और 6 सिटीज में 18 जगह पे हमको ये सब पहुंचाना था। उसके लिए हमको इतने कम समय में 30 से ज्यादा RFPs करने पड़े और वेंडर्स को ऑन बोर्ड लेके ये सब डिलीवर करना पड़ा। और साथ में गुजरात में ये सीजन में रेन होने का चांसेस रहता है, और सितंबर में जो फर्स्ट हाफ था उसमें बहुत हैवी रेन्स हुए भी थे। फॉर्चुनेटली it was organized in the later part of the month, and so we did not get any hindrance from rains. And next, जो इनोवेटिव प्रोसेस जो हमारा मतलब जो की जो डिलीवरेबल्स है वो जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो था रीडिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन। जो पहला था, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और नॉन स्पोर्टिंग वेन्यूज जैसे IIT गांधीनगर, संस्कार धाम और महात्मा मंदिर जैसे जो नॉन स्पोर्टिंग वेन्यूज है उसका यूज हमने स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए किया। जिन्होंने गांधीनगर देखा है और वहां पे महात्मा मंदिर की मुलाकात की है, वो एक कन्वेंशन सेंटर है। वो कन्वेंशन सेंटर में गेम्स कराना किसी ने सोचा नहीं होगा, वो हमने करके दिखाया, और वहां पे हमने 6 स्पोर्ट्स वहां पे हमने आयोजित किए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पूरा जो हमारा गेम्स थे वो गेम्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर GMS के थ्रू उनका आयोजन किया गया। सभी एथलीट्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स, वॉलंटियर्स जो भी इन्वॉल्व थे गेम्स में, वो सभी का ऑनलाइन डेटाबेस बना और उसी के थ्रू पूरा गेम्स कंडक्ट हुआ। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, हमने रिसाइकलिंग, प्लास्टिक वेस्ट को कम रखना, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करना, बायोडिग्रेडेबल्स का यूज करना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी जैसी चीजों का भी बहुत अच्छे से उपयोग किया। रोबस्ट फ्लीट मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी था उसी का यूज करके करना था, तो उसमें ट्रेनिंग वेन्यूज अलग रहते थे
और कंपटीशन वेन्यू अलग रहते थे। बच्चों को हमने वहां पे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जो हमारे प्लेयर्स थे, उन सबको हमने होटल में ठहराया था। वो होटल से कंपटीशन वेन्यू ले जाना, वो होटल से ट्रेनिंग वेन्यू ले जाना, ये सब हमने अच्छी तरह से ये फ्लीट मैनेजमेंट करके किया। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, उसमें हमने जैसे ट्रांस स्टेडिया है, उसने पूरा एक इका एरेना उसमें है, वहां पे इंडोर फैसिलिटी और आउटडोर फुटबॉल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। राइफल क्लब और क्राउन शूटिंग एकेडमी जैसी प्राइवेट एंटिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोलैबोरेट करके वो वेन्यूज का भी यूज करके हमने अच्छे से गेम को करवाया। एकोमोडेशन के लिए जैसे मैंने बताया, माइक्रो प्लानिंग हमको करना पड़ा। 6 सिटीज में लगभग 150 होटल्स में हमने 3800 से ज्यादा रूम को बुक करके वहां पे एकोमोडेशन की फैसिलिटी हमने दी। ऑलमोस्ट सभी को 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार उनकी जो जैसी रैंक थी उसके मुताबिक उनको ये सब उपलब्ध करवाया गया। एंगेजमेंट, फेस्टिव एटमॉस्फेयर भी हमने वेन्यूज पे क्रिएट किया, और साथ साथ पब्लिक एंगेजमेंट सबसे ज्यादा हो उसका भी हमने खास क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में जो बच्चे थे उनको भी ये बहुत बड़ी चीज हो रही है उसका अंदाजा आए, उसकी वजह से उसके लिए हमने सब जगह पे स्कूल एंगेजमेंट, कॉलेज एंगेजमेंट और कार्निवल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, और बच्चे वहां पे जाके देखे ये भी हमने इंश्योर किया। ऑलमोस्ट 80% जो गेम्स हुए वहां पे 80% जितना ऑक्यूपेशन रहा सीट्स का। और रोबस्ट मेडिकल मैनेजमेंट भी हमने किए थे। डेडिकेटेड मेडिकल एंड एंटी डोपिंग कमिटीज फॉर्म की गई थी, और टीम के साथ 10 फिजियो और पैरामेडिक्स के साथ 2 ALS एम्बुलेंसेस भी डिप्लॉय की गई थी। नेक्स्ट, ये कुछ बहुत अच्छे हमको फीडबैक भी यहां पे मिले थे। नेक्स्ट ये दृश्य, ये तस्वीर, ये माहौल, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। So in order to win we must play, and to play we must get on the field first. ना सोना ना चांदी ना पीतल से, खेल तो बनता है जोश से। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, दहाड़ेंगे हम जोर से। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। मैं आज गुजरात के लोगों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस भव्य आयोजन के लिए सारी व्यवस्थाएं की। ये गुजरात का सामर्थ्य है, यहां के लोगों का सामर्थ्य है। शेरों को प्रदर्शित करता शुभांकर सावक भारत के युवाओं के मिजाज को दिखाता है। नीडर होकर मैदान में उतरने के जुनून को दिखाता है। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। ग्लिम्स थे जो ओपनिंग सेरेमनी मोटेरा में हुई थी उसकी, और हमने ये गेम्स रिपोर्ट भी तैयार की है, वो आप सबके साथ शेयर भी की है। थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू शेयर आवर एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you for the experience sharing. Next, I invite team from Bihar to make the presentation, please.
बिहार का स्लाइड्स, थैंक यू। बिहार का खिलाड़ियों की ओर से मैं यहाँ मंचासीन केंद्रीय खेल मंत्री महोदय और मंचासीन सेक्रेटरी महोदया और अन्य यहाँ उपस्थित खेल प्रेमीगण और खेल मंत्रीगण और सेक्रेटरीगण सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि पहली बार बिहार को मौका मिला है इस कॉन्फ्रेंस में इस चिंतन शिविर में अपने बात रखने का। आप लोग जरूर सुने होंगे कि बिहार बहुत नामी है, चंपारण सत्याग्रह वहीं से शुरू हुआ, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, और उसके बाद जेपी मूवमेंट जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ वो भी बिहार से शुरू हुआ। लेकिन आप लोगों को ये जरूर पता नहीं होगा, ये सुन के आपको हैरान भी हो सकता है, इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट भी शुरू हुआ अपना बिहार में, एंड दैट इज बाय JRD टाटा एंड मोइनुल हक। एंड शिवनाथ सिंह जी जो बीच में जो फोटो है, उनकी जो मैराथन के रिकॉर्ड आज तक कोई एथलीट तोड़ नहीं पाए, एंड ही इज फ्रॉम बिहार। सो ये हमारा स्पोर्ट्स लेगेसी है। बिहार झारखंड बंटवारा के बाद सारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम झारखंड की ओर चले गया है, तो हम थोड़ा नीचे पड़ गए हैं और थोड़ा सा हमारा ग्राफ स्पोर्ट्स में नीचे चला गया। लेकिन अब पिछले एक साल से हम अपना स्पोर्ट्स मूवमेंट को एक खेल आंदोलन के रूप में रिवाइव कर रहे हैं। उसके एक एग्जाम्पल यह है, हमारा बिहार का माननीय मंत्री, खेल मंत्री स्वयं उपस्थित आज हुए हैं। कितना मंत्री लोग आज पूरा देश से आए हैं, हमारा बिहार से आज खेल मंत्री यहां उपस्थित है। यह एक नमूना है कि बिहार खेल रहा, बिहार अब खिलेगा बिहार। सर, जब हम लोग पिछले साल शुरू किए थे, हम लोगों ने एक रिसर्च टीम फॉर्म किए थे, और रिसर्च टीम हर जगह पूरा बिहार का खेत कल्याण और गांव देहात सब घूम के देखे थे। तो उसमें हम लोग देखे थारू ट्राइब बगा जंगल में, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर है, बिहार नेपाल बॉर्डर है, वहां थारू लोग एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब वहां 16 ब्लॉक में सर 46 फुटबॉल क्लब्स है, और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग मिलके एक फेस्टिवल जैसे वहां मनाते हैं। लेकिन वहां से एक नेशनल फुटबॉलर या इंटरनेशनल फुटबॉलर पैदा नहीं हुए हैं। दूसरा, आप बेगूसराय, भागलपुर, छपरा बेल्ट में आइएगा, दिन भर 24 घंटा इंटू 7 इंटू 365 वॉलीबॉल खेलते हैं, बिकॉज दे आर जेनेटिकली टॉल पर्सन्स। लेकिन वहां से भी वॉलीबॉल का कोई नेशनल या इंटरनेशनल एथलीट पैदा नहीं हुए हैं। सिमिलरली कैमूर में एथलीट्स हैं, और हमारा रूरल पटना में अखाड़ा, जो रेसलिंग का अखाड़ा है सर, वो 1927 से 6 अखाड़ा से आज भी वहां दंगल होता है। लेकिन वहां से भी हम कोई नेशनल एथलीट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। सो बाद में हम लोगों ने फिर अपना स्ट्रेंथ वीकनेस स्वॉट एनालिसिस किए हैं, तो हम लोगों को पता चला कि अनटैप्ड रॉ टैलेंट बिहार में भरी पड़ी है। लेकिन कमी कहां है? रिसोर्सेस की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, और फंडिंग का कमी है, और अपॉर्चुनिटीज हम लोग ढूंढ निकाले हैं। हम लोग ये निश्चिंत कर लिए थे, हमें पॉपुलर गेम्स में मेडल नहीं जीतना है, हम चाणक्य देश से आए हैं, बिहार इज लैंड ऑफ चाणक्य। तो स्ट्रैटेजिकली वी मूव्ड दैट हमको बाकी आप लोगों का स्टेट जो आगे बढ़ गए हैं रेसलिंग में और कबड्डी में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, आप लोगों से मेरे को नहीं लड़ना है। जिस स्केल में हमको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, कंपटीशन कम है, उसमें हम लड़ेंगे और मेडल जीतेंगे। मेडल तो मेडल ही है आखिर, चाहे कबड्डी हो या सेपक टकरा हो। और थ्रेट हमको समझ में आया कि एसोसिएशन सेंट्रिक था, ये तो हर स्टेट में होगा, एसोसिएशन सेंट्रिक था, लेकिन टैलेंट सेंट्रिक नहीं था। तो एसोसिएशन को हम साथ में एक परिवार की हिसाब से हम जोड़ रखे हैं। और दूसरा सर, रैम्पेंट एज फ्रॉड, ये हर स्टेट में होता है, और मैं इसके बारे में बाद में बताएंगे। सो ये हम एनालिसिस किए। हाँ, जब रॉ टैलेंट हमारे पास आ गया है, जैसे हम बताएं सर आपको कि फुटबॉल प्लेयर्स इतना है, हमारा रेसलर्स इतना है, अखाड़ा इतना है, हम कुछ कर नहीं पाए। हम एक छोटा सा उदाहरण लिए ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से और एक और देश से। मैं 2-3 किताब पढ़ा था। वी ट्रांसफर्ड देम, मतलब वो जो स्किल को, ट्रांसफरेबल स्किल्स को हम एकदम ट्रांसफर किए हैं। क्या किए हम? फुटबॉल प्लेयर्स को एथलेटिक्स में लेके आए, कुछ फुटबॉल प्लेयर्स को रग्बी में लेके आए, और जो वॉलीबॉल प्लेयर्स टॉल था उनको सेपक टाकरा में लेके आए, और रेसलर्स को लेके आए जिट्सू में। आप देखिए कितना मेडल हम जीते हैं। अब इसमें आपको हम लिए ही हुए सर, रग्बी सेवेंस, जिट्सू, सेपक टाकरा, फेंसिंग एंड पैरा स्पोर्ट्स। फिर साइंटिफिक स्टडी हम 3 गेम में किए थे,
आर्चरी, शूटिंग एंड एथलेटिक्स। अब चैलेंज मिटिगेशन थ्रू इनोवेशन, चैलेंज पता चल गया मेरे को क्या प्रॉब्लम है बिहार में, तो हमको क्या करना चाहिए। सर पिछले साल इसी आसपास की तारीख में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें 12 द्रोणाचार्य, ओलंपियंस और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर सबको बुला करके कॉन्क्लेव किए, और उन्हीं लोगों को हाथ में हम सौंप दिए थे, भैया बिहार को 2028 ओलंपिक्स जब लॉस एंजल्स में होगा, कम से कम बिहार का एक बच्ची या एक बच्चे इंडियन टीम में होना चाहिए, उसके लिए हमको रोड मैप बना के दीजिए। तो वो लोग रोड मैप मुझे बना के दिए हैं, और उस रोड मैप के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं सर। और उसके बाद हम लोग जितना भी पुराने द्रोणाचार्य कोचेस है जिनको आप लोग भूल गए, जैसे कि बहादुर सिंह साहब जो पुराने शॉट पुटर थे पंजाब के, जिनको आप लोग भूल गए, उनको हम हायर कर लिए हैं हमारा थ्रोयर्स को ट्रेन करने के लिए। वैसे श्रीधरन को वॉलीबॉल के लिए, पुलेला गोपीचंद तो नहीं भूले हैं, अभी तो वो एक्टिव है, पुलेला गोपीचंद, फिर द्रोणाचार्य रमेश, फिर अनीता फॉर फेंसिंग, फिर कियानो इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उनको हम लोग मतलब बुलाए हैं साउथ अफ्रीका से फॉर रग्बी। फिर सर पहले बिहार में क्या होता था, अब मान लीजिए खेलो इंडिया गेम्स या नेशनल गेम्स, बस कल जाना है, आज टीम एसोसिएशन ने फॉर्म किया, अपना भाई भतीजा गोतिया भाई गांव जो भी है सब इकट्ठा किया, ट्रेन में बटा दिया, भेज दिया, वहां जाके दूसरा का मेडल देते हुए ताली बजाया, वापस आया, ट्रैक सूट लिया, पहन लिया, वापस आ गया। लेकिन हम इस बार निश्चित तौर से बता दिए हैं कि कोई भी टीम नेशनल खेलने के लिए जाएगा, मिनिमम 2 महीना कैंप करने के बाद ही वो हम नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैंप को हम मैंडेटरी कर दिए हैं, बिना कैंप में किसी को भेजता नहीं हूं बाहर। तो देन हम लोगों ने एक कंसल्टिंग फर्म एम्पैनल किए सर, बहुत स्टेट्स ने एम्पैनल किए कंसल्टिंग फर्म्स को, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सब स्टेट्स स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के लिए लिए हैं, लेकिन हम लिए हैं स्पोर्ट्स स्काउटिंग के लिए। सर आप अपने की नोट एड्रेस में सुबह बताएं टैलेंट स्काउटिंग हमको कैसे करना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। सर आपकी जो सोच है उस पर हम ऑलरेडी अमल कर चुके हैं। हम एक कंसल्टिंग फर्म को अडॉप्ट करके पिछले 6 महीना से टैलेंट स्काउटिंग में पूरा जोर दिए हुए ताकि टैलेंट स्काउटिंग हो और उनको हम नर्चर करें। और सर जैसे रवि गुप्ता सर सुबह बताए थे मध्य प्रदेश का, अब मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोचेस नहीं था सर, लेकिन मेरे को मदद किए मध्य प्रदेश, मेरे को मदद किए ओडिशा, मेरे को मदद किए कलकत्ता, मेरे को मदद किए पंजाब, हैदराबाद। मेरे सारे एथलीट्स को हर जगह पर मैं भेज करके ट्रेन किया हूं। और उसके बाद हम लोग क्या किए सर, ब्लॉक लेवल पर तरंग और दक्ष एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पर भी इंप्लीमेंट किए हैं। और आप देखिए सर, हम बता देंगे जैसे जैसे मेडल आने लगा, हमारे बिहार सरकार अपना स्पोर्ट्स बजट बढ़ा दिए हैं 172%। 2022 में हम मात्र 50 करोड़ पर थे, लेकिन इस साल हम 136 करोड़ पर हैं। दिस इज एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज ओनली फॉर ट्रेनिंग, talent scouting, talent nurturing and talent retention. This is only for us, excluding sports infrastructure. Sir, this is also an innovation I would say. हमारा बिहार स्टेट में इतना PSUs है, तो हम लोगों ने क्या किया, PSUs में CSR के नाम पर बर्तन बांटा जाता है, कंबल बांटा जाता है या कुछ ऐसे ही फ्री बीस दिया जाता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन इश्यू कराए हैं, कैबिनेट में पास कराए हैं, हर PSU एक गेम अडॉप्ट किए हैं और हर PSU अपना CSR का फंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी को देते हैं और उस पैसा से हम अपना फंडिंग का प्रॉब्लम जो था, जो स्वाट एनालिसिस हम किए हैं उसमें लैक ऑफ फंडिंग का प्रॉब्लम था, उसको हम भरपूर किए हैं। अब ये सारा PSUs हमको पैसा देते हैं, अब हमको पैसा का कोई कमी नहीं है सर। यस सर, 36। उसके अलावा CSR का अलग से। यस सर, यस सर। और ये कितना कंपोनेंट होगा CSR? सर ये एज पर द गेम वाइज सर। अब मान लीजिए सर फुटबॉल में आज हमको इस साल, पिछले साल फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग में सर हम छोटा छोटा बच्चे से लेके किड्स से लेके बड़े लोगों तक कैंप करवाए हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा बिकॉज आई एम स्टैंडिंग इन द लैंड ऑफ मणिपुर, हमारा कोच फॉर वेट लिफ्टिंग सर मैडम कुंजीरानी देवी, we have requested her and she came and for 4 months she stayed with us and she conducted the camp and मैं रिजल्ट्स बाद में बताऊंगा सर आउटकम। सो वेट लिफ्टिंग में सर पिछले साल इस PSU ने हमको दिया करीब 45 लाख सर। सो इस 45 लाख से हम टैलेंट स्काउटिंग, नर्चरिंग, कोचिंग कैंप, जो भी डाइट वेट देना है वो सब दिए हैं सर। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ सर।
भैया पहली बार बिहार को चांस मिला है, घंटी मत बजाइए, थोड़ा सा समय दे दीजिए। अभी तो हम आउटकम पर आ रहे हैं। सर, गुजरात बहुत बढ़िया से प्रेजेंटेशन किया, हमने नेशनल गेम्स किए हैं। भैया गुजरात हम किसी से कम नहीं है, बिहार किसी से कम नहीं है। निटजैम नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट, द ग्लोबल्स लार्जेस्ट टैलेंट सिलेक्शन इवेंट इन एथलेटिक्स, जिसमें 600 जिला भाग लिए हैं और 5000 प्लस एथलीट्स, 2000 टेक्निकल ऑफिशियल्स 5 दिन वहां रहे हैं, and everybody had a good time, and we conducted this, and Bihar, by conducting this, has proved itself that Bihar is capable and has all the capacity to conduct any national level event. So now the outcomes, इतना देर में जो भी बताया हम लोगों ने इनोवेशन किया, उसमें देखिए सर, रग्बी, ओडिशा के मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। सर, ओडिशा इज फेमस फॉर रग्बी। हम आपको 2022 में नेशनल चैंपियनशिप में सब जूनियर बॉयज गर्ल्स, जूनियर बॉयज गर्ल्स, सीनियर वुमेन, सब में आपको हरा दिए सर हम। और महाराष्ट्र वॉज द नेक्स्ट चैंपियन, दिल्ली वॉज द नेक्स्ट चैंपियन। वो लोग बाहुबली थे रग्बी में, लेकिन रग्बी में हम साउथ अफ्रीका से कोच बुलाए हैं और 6 महीना हमारे बच्चियों को ट्रेनिंग किए हैं। वी हैव डन इट एंड आज की तारीख में इंडियन टीम जब एशियन रग्बी चैंपियनशिप में खेलने गए, उसमें 8 लोग बिहार के बच्चियां हैं। और the fastest rugby player in Asia is Sweetie Kumari from Bihar, from Nalanda, Bihar, the fastest rugby player. And again sir, सेपक टाकरा, ये नाम बहुत लोगों को मुंह में आता ही नहीं है। सेपक टाकरा ये कौन सा गेम है सर, आप लोगों को पता है, लेकिन बिहार में जब हम बोले सेपक टाकरा में आगे बढ़ना चाहता हूं, nobody didn't knew, but as I said earlier sir, वॉलीबॉल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां तमिलनाडु है, जहां केरला है, इतना आगे बढ़ चुका, हम कहां लड़ेंगे उनसे सर। इसलिए हम सारा वॉलीबॉल प्लेयर्स को शिफ्ट कर दिए सेपक टाकरा में। अब हमारे बच्चे देखिए सर, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स में नेशनल चैंपियन है, हमको मेडल मिल गया, खुश है, मेरा सरकार भी खुश है, इसलिए तो बजट बढ़ा दिए सर। और देन जिजित्सु सर, जिजित्सु में जैसे अखाड़ा में मैम मड में खेलते हैं सब खिलाड़ी, दंगल खेलते हैं पैसा के लिए। अब जहां से माननीय मंत्री जी हमारा जितेंद्र राय साहब आ रहे हैं, वो खानदानी पेशा है कुश्ती लड़ना, दंगल लड़ना, तो उस बच्चे को मेडल नहीं मिल रहा था। तो बट जित्सु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसलिंग एंड जूडो। तो इसमें हम ट्रेनिंग किए हैं। लास्ट मंथ नेशनल चैंपियनशिप में सीनियर बॉयज गर्ल्स, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स में 53 मेडल्स। एंड रेसलिंग में सर एक बच्ची निर्जला कुमारी, अभी रिसेंटली जो हुआ है अंडर 17 चैंपियनशिप, इसमें सिल्वर मेडल प्राप्त की है। शी इज द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम बिहार इन 50 years टू गेट ए मेडल इन रेसलिंग। हम सबसे खुश इस बात के लिए है, वो सिल्वर मेडल जीती उसके लेके नहीं है, हम सेमीफाइनल में हरियाणा का बच्ची को हराए हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और फेंसिंग में सर हम 3 बच्चे को पेरिस भेजे हुए हैं फॉर ट्रेनिंग, और वो बच्चे पिछले 3 महीने से पेरिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उसमें 2 बच्चे आकाश और हर्ष, एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट है और एक नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है। एंड निटजैम जो हुआ है उसमें टैलेंट हंट में सर बिहार का 63 लोग सेलेक्ट हुए हैं फॉर द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस। दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखिए सर 2020-21 में हम मात्र 2 मेडल में हैं, लेकिन 22 में हम 7 मेडल्स लाए हैं। और वेट करिए 6 साल में हम सब को दबा देंगे। जस्ट गिव मी 6 years। एंड सर एथलेटिक्स में अब देखिएगा, हम ईस्ट जोन एथलेट, ईस्ट जोन में तो सिर्फ 12 स्टेट है सर। ईस्ट जोन में कभी मेडल टैली में बिहार था ही नहीं, लेकिन इस बार मेरा थ्रोयर्स को ट्रेन किए बहादुर सिंह साहब, स्प्रिंट को ट्रेन किए द्रोणाचार्य रमेश जी, और लॉन्ग जंप्स के लिए साई कलकत्ता वाले ट्रेन किए हैं। तो इस तरह का सब लोग मिलकर हमको मदद किए, और इस बार we topped, we are in the 2nd place in the medal tally, and we won 73 medals in East Zone Athletic Championship. And Youth Nationals Athletics में 9 medals, thanks to Madhya Pradesh and other states who helped us in training my own children. Where talent meets opportunity, I am just giving you 4 examples, that's all. घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बंद करने जा रहा हूँ। तो सर Bola Singh has been trained by Padma Shri Kunjarani Devi for 4 months. And look sir what he has done. He has broke 3 national record at national championship, and that is where when talent meets the opportunity. This boy had a talent. He met Madam Kunjarani Devi. He broke 3 national records. And second, this boy, Deaf Olympics, Ritik Anand,
I had sent him to Chetananand Badminton Academy, Hyderabad. He won the gold medal in Deaf Olympics. निर्जला कुमारी के बारे में बात कर लिया हूँ. And Rayan Mohammed, he is getting trained under international master Praveen Tipse, and he has won the Asian School Champion. He is now the Asian School Champion. Similarly, Bhopal NCOE में भेजे थे shooting. Abhishek Kumar, he won medal in Deaf Olympics, and Khelo India gold medal winner है. Athletics I have already told. And Manisha Kumari, cycling, normal cycle चलाती थी सर वो बच्ची, आज अच्छा बाइक दे हैं, तो she won gold, and as a team we won 4 silver and 1 bronze. And rugby I have already told you, we have beaten everybody in rugby. The way forward, that is the last slide for me. सर करंट इनिशिएटिव स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पॉलिसी, इसमें 3 पॉलिसी हम लोग लागू करने जा रहे हैं. एक प्रेरणा फॉर ग्रास रूट लेवल, जिसमें 5 लाख रुपया बच्चे लोगों को मिलेगी per year for their sports development. And second is Saksham, that is for the national level athletes. For them, we will be giving them 10 lakhs per athlete per year for their sports development. And for the international level athletes, the name of the policy is UDAN. So for them, we will be giving 15 lakhs per year. This is the policy which is in the pipeline. Second, sports recruitment policy which we have come up with. Cabinet approval हो गया सर. इसमें simple चीज़ है, medal लाओ, नौकरी पाओ. No trial, nothing. National में आप medalist है, international में participant है. आप जैसे वापस आएंगे, आपको हम recruitment appointment letter थमा देंगे. बस medal लाओ, नौकरी पाओ. No trial, no business, no bureaucracy, no advertisement, nothing. So this is the policy which we have come with. And we have introduced in block level high cash incentives in all the competitions. And the सबसे best thing हम लोग ये किए सर, पिछले 10 साल से स्पोर्ट्स कोटा में जितना भी स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूट हुए हैं, जो बीडीओ ऑफिस में, सीईओ ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में फाइल खींच रहा था, तो सबको बुला करके डेप्यूटेशन करवा दिए स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी में. अभी मेरे पास 200 स्पोर्ट्समैन पर्सन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी में, एंड दे आर डूइंग द scouting and they are giving the coaching. That is why we are able to do it, sir. And future initiatives, modernization and improvisation of एकलव्य schools, and बस आप खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमें दे दीजिए. ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस सर, आई नो आप मुझे दे देंगी बिहार को. और वी आर कमिंग अप विथ लो कॉस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. वी आर नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एनी स्टेडियम्स. कौन मेंटेन करेगा बाद में? मेंटेनेंस के लिए खर्चा करने के लिए पैसा किसके पास है? वी विल कम अप विथ मेनी ट्रेनिंग एरियाज, स्पोर्ट्स एरिनाज. बच्चे को खेलने का मैदान चाहिए, बच्चे को स्टेडियम नहीं चाहिए. तो हम स्टेडियम नहीं बनने वाले हैं सर, हम ट्रेनिंग ग्राउंड्स बनने वाले हैं. और दूसरा, वी आर ऑलरेडी कमिंग अप विद स्पोर्ट्स सिटी इन बिहार एंड ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन राजगीर. नेक्स्ट ईयर वी विल बी इनवाइटिंग यू सर पर्सनली. माय गवर्नमेंट विल बी इनवाइटिंग यू फॉर द इनॉग्रेशन सर. And my last request, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डीजी साहब, प्रधान सर, आप हमारे बाप हैं, हम आपके बेटे हैं. आप हमारे हाथ पकड़ के ले जाइए ताकि हम ओलंपिक्स तक पहुंच पाएंगे. आपसे ये मेरा नम्र निवेदन है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सर. देखो बिहार की एक इनोवेशन ने भी पुलिस वाले को क्या बना दिया. रवि जी भी हैं भाई. And lastly, I invite the team from Mizoram for the presentation. Good evening, sirs. Good evening, madam, and esteemed members. Now I will give a small presentation. Before that, I would like to say my minister was supposed to stand here and give the presentations from his thoughts and ideas. But at the last minute, he had to cancel his program. So today we managed to give a fresh, reoriented presentation. It will be in 2 parts. One will be a video. To start with, it will be a video of the recent achievement by the state in sports. The reason being, you know, Mizoram is a very small state. Actually, it has only 10 lakhs population. 10 lakhs population,
And you know, it is situated at the extreme south of the northeastern region, bordering the Myanmar in the east and Bangladesh on the west. The only channel we have is through Assam, a small corridor to Assam only. You know, geographically also it is very, very tough. It is a hill area, mountainous. Road conditions and telecommunication is very, very poor. Actually, we could not contribute much in our ideas regarding digital impact on the sports also because of the telecommunication problems we have up there. And we know we do not have any minerals or resources, no big industries there. As I said, very small populations. And with that, in fact, we do not have a need to offer to the sports persons in the form of incentives also. The only job opportunity we have in Mizoram is in the government job only. No PSU, no other organizations which could absorb the sports persons, excellent sports persons. So this video of the recent achievement which I'm going to show is to challenge the better off states, bigger states, better located states, developed states, so that you can have the, I would say, introspection, and so that you can take it as a challenge. So after this, I will confine my presentation within the allotted time. So may I request for the video? A young man who started training with bamboo sticks and water connection pipes at a very early age is now a Commonwealth Games gold medalist. Jeremy Nunga, India's first Youth Olympics gold medalist, has brought Indian weightlifting a new hope. A tiny Mizo girl who grew up in a humble village made it to the national team and went on to represent the country at the Senior Asian Cup, Asian Games, Youth Olympic Games, Commonwealth Games and the Olympics in Tokyo. After going through a profound valley of despair, she does not give up, but kept fighting. She eventually played a great role in India becoming the Olympic semi-finalist in Tokyo in women's hockey. The Mizos have always loved the game of football, which they played with sapim, animal bladder and serchok, pomelo fruit, a real football being unaffordable. During a very short period when the modern game of football was introduced to the youths, Aizawl FC, a professional football club from Mizoram, rose from scratch to become champions of the Indian Top Flight Football League in the year 2016-17 season. The same team, because of their hard-earned victory, represented the country in Asian Football Confederation's Champions League. The Mizoram state team also became champions of the Santosh Trophy in 2013-14 season, which is a top-tier interstate football tournament in India. A 25-years-old young Mizo lad, Mumbai City FC striker Lalianzwala Changte is India's most prolific scorer and beloved footballer at the moment. Mizo Flash, as known in the footballing fraternity, is leading his team to the top of the table in the ongoing Indian Super League, which is the top league in the country, where the tiny state of Mizoram contributes as many as 34 players this season. WBC Youth World Super Featherweight champion Marin Sangatlau hails from a small village of Korulian. Another boxer, Nalbuat Sayi, also won the silver medal at Asian Boxing Championships in 2021 and won gold medal at the recently concluded first Khelo India National Open Boxing Championship in the elite women's 70 kgs category. Our very own judoka Lalhum Hime won gold at the National Games in 2022. Lalri Narinthe from Aizawl is becoming the new sensation in Indian basketball. Jeho Himna Kulpui Neta and many other table tennis players are on the path of becoming the best in the country. Throughout the course of Mizoram sports history, there has been many sports athletes who have been inspirational and hero worshipped by the people.
Despite having minimal sports infrastructure and scarcity of funds from the state government for sports infrastructure development, these athletes have proved that there are a lot of untapped talents to nurture in the state. If given proper guidance and much needed facilities, it is apparent that the athletes of the state can excel at the highest level of sports. The enchanting hills, deep gorges and valleys and gently flowing rivers of Mizoram are natural advantages for development of adventure sports in the state. These advantages with minimal financial investments can be transformed into a source of income and gainful employment while turning Mizoram into a hotspot for adventure sports. In recognition of the sporting spirit of the youths and availability of natural advantages in the state, construction of a motorsports racetrack has been initiated in the outskirts of Aizawl at a project cost of Rs 18 crores to be shared between the state government and REC Limited, a public sector company. This project is the first of its kind in Eastern India and is being watched with keen interest by motorsports enthusiasts all over the world. Again, an international paragliding event was organized recently at Searts Heap near Aizawl, which drew participants from more than 10 countries. This was the first international event organized in the state in the field of adventure sports with huge success. There are many ambitious and high-potential sports persons despite the absence of infrastructure and state-of-the-art training facilities. The state government is open and reaching out to people who could enhance their capacity the most. Mizoram is the first state in India to accord industry status to sports. This will bolster ease of doing business in sports development and will facilitate sports as a source of gainful employment, private investment and development on an industrial scale. With the formulation of the Mizoram sports policy and granting industrial status to sports and the government's vision to make the state an international sporting hub, there is an ample chance for sports persons and investors to make the sports ecosystem better in the state. With investment in infrastructure for sports and tourism in a sustainable manner, integrated by complementing urban infrastructures and thereby promoting participation of all stakeholders and investors in sports and sports tourism, it is evident that success at the national and international levels will be achieved by our athletes in the near future, which will in turn generate ample opportunities for gainful employment in a state which has no raw materials for setting up manufacturing industries. Excellence in the global sports arena depends heavily on the well-developed sports infrastructure. Cultivating a culture of sports not only aids in the production of athletes of international renown, but also inspires young people in a nation to attain better physical and mental health. Come, dream the impossible dream and let us attain together the unattainable. Thank you. Let me stress again that, yes, the youth of the states have great potentials in sport and other activities with very limited support from the government through its budgetary allocation. Actually, all infrastructures and activities are more or less funded by various ministries under the government of India. The sports in Mizoram moves forwards, I would say, due to sheer determinations of all the stakeholders. Can I have the next presentation? Yes. I had gone through, ministerially I had gone through, this is the profile of Mizoram. It's on the tip of the southernmost part of the northeastern region. Next, please. As I said, it is a very difficult mountainous and hilly regions, but due to the sheer determinations and the talent of the young people, we move forward. Next, please. Mizoram being a poor state, as I said, the budgetary allocations is around 2,537 lakhs only annually. That too is mainly for maintenance and the salaries and HR management, and not much is there for the infrastructure development. But in 2019, Mizoram have a sports policy which is taken forward vehemently. Next slide, please. Attempt is being made
to develop sports infrastructure in the state in a phased manner so that necessary infrastructure is built over a period of time. District stadiums will be created in the remaining districts, and also the state will upgrade and develop existing sports academies, continue to open more academies for excellence in priority area in sports. Next, please. The existing sports infrastructure in schools, colleges, and universities are very much inadequate. Therefore, the state endeavors to support upgradation of this existing infrastructure, providing play fields and game facilities to all schools and colleges and universities. Next, please. In this regard, I would say sports facilities in schools and colleges will be accessible to all persons for sports and health-related, sports-related activities during post-school or college hours. A step is to be taken to evolve low-cost, functional and eco-friendly designs of rural sports infrastructures. We are encouraging public-private partnership model, and also a model, this model can offer opportunities to the private sectors to involve more in the sports tourism, adventure sports, to their relevant opportunities which they offer in the form of social responsibilities. Next. These are the pictures. You can go to next. Altogether, I will club together all these infrastructures which is coming up. The project cost is written there. The funding agencies, if we look at it, some are NEC, most of them are NECs. And next, please. Funding agencies from the Government of India, some are from CSR. We are utilizing the SASK scheme also, and some are from the Minority Affairs Department through their PMJVK scheme. Next. So these are the pictures of our achievement. Next. Yeah. Thank you so much. Yes. Thank you to the team from Mizoram for the presentation. Before we move to the open house discussion of this session, I would like to request Srimati Sujata Chaturvedi ji, Secretary Sports, to make few announcements, please. Namaste. Just as the Honorable Minister desires, we have formed 4 groups with specific themes. From now until tomorrow, there is a session in the end of the conference tomorrow, which is listed in the schedule that is available, where we will all be meeting and discussing these very 4 important issues. And the first name in the list will be the state which will present the findings of the group. So जैसा कि Honorable Minister साहब ने अभी कहा था कि अब से लेके डिनर के समय या आप लोगों को जब भी सुविधा लगे, इन विषय पे जो यहाँ पे लिस्टेड है उन पे आप सबसे अनुरोध है कि अपना अपना ग्रुप पहचान लें. इसका हम प्रिंट भी सर्कुलेट कर देंगे. अपने ग्रुप में बैठकर इस थीम पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड सुझाव, जैसा कि ऑनरेबल पीएम साहब की इच्छा थी कि हम लोग इस पूरे कॉन्फ्रेंस को कुछ इफेक्टिव बनाएं, कुछ इम्प्लीमेंटेबल काम करें, तो ये इस विषय पर इस ग्रुप के सदस्यों को विचार करके कल ओपन हाउस सेशन में एक प्रेजेंटेशन के रूप में अपने कॉन्क्रीट सुझाव देने होंगे. और आपको जो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है या उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करना है, उसमें हम लोग आपकी मदद कर देंगे. आपको केवल अपना एक खाका बनाकर हमारे यहाँ बताना होगा. मेरे जो सहयोगी इस कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटेरिएट हैंडल कर रहे हैं, वो आपके प्रत्येक ग्रुप को एक एक असिस्टेंट अवेलेबल करा देंगे. तो ये जो राजस्थान से जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उनके लिए ये प्रेजेंट करने की जिम्मेवारी होगी. नेक्स्ट, दूसरे ग्रुप का हेडिंग है कंपटीशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट. इसमें गुजरात, मिजोरम, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और गोवा है. गुजरात के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसका आपको एक इम्प्लीमेंटेबल रूप कल तक बना लेना होगा. बहुत सिंपल और 5-7 स्लाइड से अधिक हमारे पास समय नहीं होगा, नहीं तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट.
जी, तो उसको देख लेते हैं सर, फिर चेंज। जी जी, ठीक ठीक। फिर तीसरा ग्रुप है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोचेस डेवलपमेंट। इसमें ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। ओडिशा से अनुरोध होगा कि इसमें लीड लें। नेक्स्ट आखिरी ग्रुप है पार्टनरशिप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें भी लद्दाख, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसमें माननीय मंत्री जिस ग्रुप में होंगे उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में चेंज करके सब दे देंगे, परंतु आइडिया ये है कि एक टैंजिबल सी रिपोर्ट बन जाए और कल दोपहर के सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करके फिर उसके आगे कार्यान्वयन करने के लिए अपने यहाँ से वापस जाएं। तो यही आज के हमारे आगे के कार्यक्रम के लिए इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को मिले थे, तो वो मैंने कन्वे किए हैं। आपको प्रिंट करके व्यवस्थित रूप से हम अवेलेबल करा देंगे। धन्यवाद। सेक्रेटरी मैडम, बंगाल को ग्रुप 3 में दीजिए। ग्रुप 3 जी, बंगाल को ग्रुप 3 में दीजिए। ठीक है, कर देंगे। Now we begin the open house discussion. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वापस आपको नाम बता देंगे, तो शायद गोवा, हिमाचल, उड़ीसा और एक स्टेट और किसी जिनको हेड करके रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ध्यान होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा आप शाम के टाइम पे बता दें। Now I request the delegates to put up their suggestions during the open house discussion. 10 मिनट का ओपन हाउस है मैक्सिमम। अगर किसी का कोई सुझाव बचा है तो। It's a question tha, sir, if they can answer, because I think every state is trying to converge Manrega for building of playgrounds. So we did the same in Madhya Pradesh, but I think what we ran into trouble was the maintenance issues. So if there are models or any suggestions of what people have done, because 80 लाख लगभग लगता है वो प्लेग्राउंड को बनाने में, पर उसका जो मेंटेनेंस एंड रिकरिंग कॉस्ट है, that works out to be a huge amount, almost 110-120 crores for a state like Madhya Pradesh. तो बाकी states ने अगर कुछ इसमें कुछ सर अभी रिसेंटली हमने पीछे लगभग 5 सालों में 350 करोड़ से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया। तो सर उसका जो सबसे मेजर जो हमारे लिए जो फैक्टर था कि इसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा, तो सर हम एक स्कीम लेके आए। जो शौकिया हमारे खेलने वाले लोग हैं उनके लिए पे एंड प्ले स्कीम हम लेके आए। उसके अलावा सर जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनके लिए हम ऑफ टाइम में कॉमर्शियल रेट्स के साथ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमने उनके लिए ओपन किया, ताकि हमारे पास उसके मेंटेनेंस, कोचेज और इन सारी चीज़ों की हम व्यवस्था कर सकें। तो वो सर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा सर हमने 1 रुपये पर बॉटल लिकर सेस भी हमने अप्लाई किया है, ताकि हम इसको एक लार्जर स्केल पे हम इसको मेंटेन कर पाएँ। ये किया सर हमने रिसेंटली। नमस्कार सर, हमने इस पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को हमने एक पीपीपी मॉडल के ऊपर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल नियर अबाउट 1200 गवर्नमेंट स्कूल हैं हमारी दिल्ली में, और स्पोर्ट्स जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिंक्ड है हमारे यहाँ। हमने जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के प्लेग्राउंड है, एवरी गवर्नमेंट स्कूल हैज़ अ प्लेग्राउंड, उसके अंदर हमने पीपीपी मॉडल पे सारी एकेडमीज, क्लब्स और इंडिविजुअल जो चैंपियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है। एट प्रेजेंट वी आर रनिंग 100 सच काइंड ऑफ एकेडमीज एंड क्लब्स ऑन दोज प्लेग्राउंड्स। उसके अंदर हमने ये एक क्लॉज रखा हुआ है कि whatever the number of trainees they will be training in those academies on those grounds, 50% will be from the government schools only. They will not charge anything from them, and 50% of the trainee they will monetize on them, so that they can improve the infrastructure of that playground. Maintenance and everything will be looked after by that academy or a club. So at present there are 100 such kind of club and academies are running in Delhi on those government schools. Further, all these academies are being reviewed every year after 2 years, and we keep on extending their contract. Second thing that Delhi is doing, 3 major cash incentive schemes Delhi is carrying on. A cash incentive scheme in which 3 crore rupees, the highest amount, is being given to a Olympian or to a world champion. Another scheme is Mission Excellence. On the basis of performance, 16 lakh rupees per year we are giving to all the sports person.
and these being accredited by the expert committee of those sports person. And there is another scheme like Play and Progress scheme. Below 17 years, all the students who are achieving at national and international level, we are giving for their nutrition, for their sports equipments and other things for further training, 3 lakh rupees per year. So these are the few things that Delhi government is doing on this. Thank you. Sir, from Assam, sir. Sir, I'm very pleased to inform honorable members here that Honorable CM Assam, he has signed one MOU with Abhinav Bindra Foundation Trust to set up 2 high-performance sports training and rehabilitation center, one at Guwahati, another at Jorhat. The salient feature of Jorhat Center is that it is funded entirely by Oil India Limited and Numaligarh Research Refinery Limited. So each center will cost around 25.5 crores, and for the sports person, someone was mentioning in the forenoon session that for early rehabilitation of the injured sports person, it's a must. So that international level, this center is coming up. Secondly, Honorable CM has also given us an idea to hold Khel Maharan on 5 sports. So basically volleyball, athletics, kabaddi, football, and now recently another 5th sport, Kho-Kho, has been added. So 2 other traditional games which will be promoted through this event, and it will be covered, it will cover 22,000 villages of Assam. And it will start right from village, will go up to block level, then to district level, then to state level. Another important initiative which was floated by the earlier Honorable Governor, Professor Jagdish Mukhi, that with a very low cost idea on holding volleyball tournament for girls. So on convergence basis with Panchayat and Rural Development Department, we have developed around 5,000 plus volleyball courts, and then we had this thing, selection of the team right from the school level, then to the block level, then to the district level, then to the zonal level, and then to the state level, where in the indoor stadium, where our directorate at Nehru Stadium, we had the final between Sonitpur district and Borpeta district. So what I want to emphasize, sir and madam, is that the quality of the volleyball players was excellent in the final. I was also present there personally. So this is a third kind of idea with little bit of application of mind, with less investment, we can promote inclusive sports also for the women or girls. That was the third thing we had. And then I will also request the use of artificial intelligence, as Honorable Chief Minister of Manipur was referring to. So I am preparing one perspective plan for the next 25 years using artificial intelligence apps available on the net. So many months of work I have completed in 3 days only. So I'm just rearranging everything now, and slowly in 3-4 parts of that. So I'll request Ministry also to have a perspective plan, and for 5 years we can have integrated sports policy also. So next 25 we will be in 2047 as we were talking about. So use of artificial intelligence will boost sports promotion in India. Thank you. थैंक यू सर. सर मुझे ये लगता है कि हमारी आज के टाइम सबसे बड़ी दिक्कत ये है
कि हम टैलेंट हंट कैसे करें। बेसिकली जो बिहार ने किया वो यही किया कि टैलेंट को आइडेंटिफाई किया और उसे प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए आज मतलब कि बिहार अच्छा कर रहा है। मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि सर रिसेंटली पंजाब का एक लड़का अक्षदीप, उसने ओलंपिक में क्वालिफाई किया, और जिस दिन वो कोच के पास गया, वो इसलिए गया था क्योंकि वो आर्मी में भर्ती होना चाहता था। उसने देखा कोच ने कि तुम तो तुम्हारी जो बॉडी की फिजिक है, अच्छे वॉकर बन सकते हो। उसने उसको पटियाला भेजा, उसने वहाँ से प्रैक्टिस शुरू की, और उसने इस साल नेशनल गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड था जो, उसको ब्रेक किया, और 1 hour 18 minutes में उसने अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर किया, और जिसका लास्ट ओलंपिक में मेडल था उसका 1 घंटा 19 मिनट था, और उस लड़के ने क्वालिफाई किया। ये तो एक अक्षय है, क्योंकि आज भारत सबसे यंग नेशन है। पता नहीं ऐसा कितना टैलेंट होगा पंजाब में भी, बिहार में भी, पूरे देश में। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी, आप देखिए वहां रेसलिंग में टेसी पंजाबी, उसका मेडल आया लेकिन कनेडा की तरफ से। कूनर वो भी पंजाबी, उसका मेडल आया इंग्लैंड की तरफ से। जेड़ा लैंदा पंजाब है उसमें से भी पाकिस्तान का मेडल आया, वो भी पुराना पंजाब। मतलब कि पंजाब में टैलेंट की कमी नहीं है, ये है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। जो हमारा PIS है, आपको तो पता है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें भी 1-2 दिन में ट्रायल होते हैं, और मुझे लगता नहीं कि 1-2 दिन में कैसे वो टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाते होंगे, कैसे सिलेक्शन होती है। रिसेंटली हमने कोशिश भी की है कि 1 महीना तक ट्रायल चले। सो मुझे लगता है कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि कौन से स्टेट कैसे कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि हम उसे पंजाब में भी इम्प्लीमेंट कर सकें, और जो हम पंजाब में इस टाइम हमने ट्राई किया वो पूरा देश कर सके। सो मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर हमें गाइड भी करें और क्लैरिटी भी करें। और दूसरा सम, क्योंकि नए इनिशिएटिव जो स्टेट्स ले रही है उस पर बात हो रही है। सर पंजाब में जैसे आप खेलो इंडिया में आप 10,000 दे रहे हो, पंजाब ने भी रिसेंटली एक बलवीर सिंह सीनियर स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है। उसमें हम जितने भी नेशनल मेडलिस्ट हैं उनको 16,000 पर मंथ दे रहे हैं 1 साल के लिए। अगर मेडल नेक्स्ट ईयर आ गया तो कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा। उससे मुझे लगता है कि जो हमारा यूथ है जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनको काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, और ये बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। थैंक यू सर। धन्यवाद। क्योंकि मैं चाहूँगा गोविंद जी शाम के लिए जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दें। आप लोग सोचिए कल तक ये जो पंजाब ने विषय उठाया कि टैलेंट जो है गांव में हो सकता है, शहरों में हो सकता है, आपके सामने हो सकता है, लेकिन टैलेंट स्काउटिंग में कहीं ना कहीं हम लोग उतना नहीं कर पा रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं उसके बारे में पता करना चाहिए। खेल संघों की जो जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं। अगर सांसद खेल स्पर्धा हो रही है तो वहाँ पे अगर हो तो रही है, वहाँ पे हमारे क्या लोग जाकर देख भी पा रहे हैं, उसका हिस्सा भी बन रहे हैं, उसकी भूमिका क्या है। तो जो अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी, क्या हम उनकी ही जिम्मेदारी नहीं लगा पा रहे जिनको टैलेंट स्काउट करना है। खेल संघ जो उस जिम्मेदारी में बैठे क्या वो नहीं कर रहे। और तीसरा, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग हम नहीं कर रहे। अगर डेटा ही अवेलेबल हो कि मान लीजिए 100 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड इतने का है, और अगर आप मिनिमम इतने पे रन करते हो तो आप ट्रायल देने आइए। आपकी संभावना है कि आपको तराश कर, निखार कर आपको और बेहतर किया जा सकता है। तो हर किसी को पता हो सकता है कि मैं इसके आसपास भी हूं कि नहीं, कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। एक तरीका वो हो सकता है, इफ यू मेड दैट अवेलेबल थ्रो चैलेंज, कि अगर आपके 400 मीटर में आप इतनी समय में दौड़ते हो तो उसका क्या है। कोई और गेम है उसके भी कई पैरामीटर्स ऐसे बन सकते हैं। टीम गेम में जरूर मुश्किल आएगी, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में जहाँ पे टाइमिंग का खेल है वहाँ जरूर पता चल सकता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बिहार ने भी जो किया वो देश भर के लोगों ने, एथलेटिक फेडरेशन ने किया, वो देश भर के 600 जिलों के बच्चे वहां पर आए जो वहां पे हुआ। फिर उसमें से 63 इनके चुने गए। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट, ऐसा ही है ना। लेकिन इन्होंने अपने लिए एक स्पेस बनाई कि जिन गेम्स में आपकी प्राथमिकता नहीं, इन्होंने अपनी प्राथमिकता वहां पर रखी है। और हमने यही बात पिछले साल कही थी कि अपने राज्य की दृष्टि से हम किन खेलों में आगे बढ़ सकते हैं, हमें उनको चुनना है। और 36 राज्य
अगर 2-2, 3-3 गेम्स चुनते हैं तो 108 गेम बनती है, जिनमें कुछ की डुप्लीकेसी होगी, बाकी बहुत सारी सिंगल गेम्स भी होंगी, तो संभावनाएं ज़्यादा हैं उसमें। कल इसलिए उस पर एक बार चर्चा करेंगे। शाम को भोजन के समय भी आपको एक दूसरे को जानने का अवसर मिलेगा। अब तक जितने लोगों ने चर्चा में भाग लिया, तो अधिकारी और मंत्री कौन, कितनी किसकी अपने डिपार्टमेंट में पकड़ है, वो भी आपको पता चल गया होगा। तो आपका अपने आप ही रुझान उस दिशा में बनेगा, शाम को किसके समय कितना लगाना है। तो आप शाम का फायदा भी उठाइए, और शाम कहाँ पे है वो गोविंद जी आपको बता देंगे। Thank you. I'd like to request all the honorable delegates to make it convenient to present in the cultural program, followed by a state dinner organized by our Honorable Chief Minister in honor of our visiting Honorable Union Minister and all the delegates. Please make it convenient to present here. Timing at 7 p.m. Our Chief Minister will be very happy. Venue? Venue is Hotel IMPHAL. Hotel IMPHAL. We have prepared there. Kindly. Please, कार्ड भी सबको दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। Thank you so much. Thank you, sir. Sir, we have shared the link to download all the presentations, which we'll be sharing through the email also. And tomorrow we shall meet here at 8:45 a.m. for the second day. AM, sir, sorry. At 8:45 a.m. for the second day session of the Chintan Shivir. अब किसी को वॉलीबॉल खेलने का शौक है तो एक बार आइए, वॉलीबॉल खेलने के लिए जाइए सब। हमारे पास भी एक पुलिस अधिकारी अच्छा है भाई। चले। Sa ba tum na ba tawon? Ha, sa ba tum na ba?